हेलो, क्या हाल है अभिनव भाई? तो ये भौसमी का एक ईयरफोन चार्ज ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। देखो 2 लाइक हो गए, 3 जन नहीं देख रहे हैं। रुको भाई, अपन देखेंगे। मेजर MGGR मेजर। अरे मेरी आवाज नहीं सुननी मेरे को भाई। बिकम अ मेंबर फॉर दिस चैनल। इस लड़के मेरे को छोड़ के कि सबको दिखाया करना, ये मेरे को ही दिखा रहा है यूट्यूब। चलाते हैं गेम भाई यार। फोर्जा हार की कतेड़ी उम्मीद। गेमर लीजेंड से तो चीजें थी, उनका बेस्ट शॉट था, बेस्ट। इससे तो क्या है? ओ माय बैड। चेंज अकाउंट का कहाँ था भाई? मेरे को लग ही रहता मैं ये चीज ना करूं और वही चीज कर दी मैंने। अबे ये कनेक्टेड भी नहीं है इससे। आज क्यों नहीं आ रही भाई? हेलो गाइस, आज अपन देखेंगे मेजर। बस थोड़ा सा 19-20 रहेगा क्योंकि है ना, मेरे को गो टीवी पे देखना पड़ेगा। वरना ये लोग है ना कॉपीराइट मार देंगे मेरे को, और वो मैं चाहता नहीं हूँ। 7 दिन फिर से लाइव स्ट्रीम बंद हो। Boros could just sell this. Boros still floating out in the open. Did he get भाई बोरस खेलता बंदा भाई। इसका POV दिखाता था। way too ready? Smoke creates a question. Someone has to keep eyes on it. 𝙎𝙃𝘼𝙈 been given nothing. No longer is 𝘾𝙈𝙈𝙈𝙀 challenging from the bridge. Oh, and they were going to think about squeezing for Colin. अरे यार, मैं अपने ना कैमरे की पोजीशन नीचे करने वाला तो मैं तुम्हें दिखाता कि मिनी मैप पे क्या चल रहा है। रुको नीचे कर देता हूँ मैं, इस राउंड के बाद करता हूँ। They go deep long, double deep long. Smoke to get into the A site. ऑब्जर्वर के मुंह से बहनचो क्राउड की आवाज आ रही। Just the SMG as well, so nothing there. And a second one from गई ए साइड। What the fuck? ओह एंटी यार, मैं दिखाता हूँ। मैं क्या दिखाया था यार? मेरे को अपने कैम की पोजीशन याद नहीं रहेगी यार। लेफ्ट में चिपका हुआ है और कॉपी कर लेता हूँ ना। कॉपी पेस्ट 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 क्या हुआ वो उसमें का? कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, 1 नंबर। ग्रुप टुगेदर का ग्रुप सेलेक्टेड कैम 2। ठीक है, ये बंद करता हूँ, ये चालू होगा ना। अरे 1 नंबर हो गया, इससे डायरेक्ट मार है। ओके परफेक्ट, बिग ब्रेन। इधर सही रहेगा, इधर सही रहेगा, इधर सही रहेगा, इसके ऊपर सही रहेगा, यहाँ सही रहेगा, यहाँ सही रहेगा आई थिंक। नहीं, यहाँ पे इकोनॉमी आती है, यहाँ पे किल फीड आता है, यहाँ पे डोनेशन गोल, डोनेशन गोल हटा दो, हट जा। यहाँ सही रहेगा आई थिंक। ठीक है, यहाँ परफेक्ट रहेगा। अब दिखाता हूँ।
ठीक है, While that's contained, देख रहे हैं ना, so they're gonna try to but the offer in 𝙎𝙃 holds the line. ये देख रहे थे, मैं वहीं से दे रहा हूँ। चलो बढ़िया Yeah, jobs not finished. भाई। मैं चाह रहा हूँ This early. अनम्यूट कैसे करूँ इसको। बुलडॉग कौन है? 𝙎𝙃𝙆𝙈 और 2 के डैम QQ। ये कौन है But यार? नाम याद होना चाहिए यार मेरे को। on their holds. The What full is this behavior? look great here from Pain. The defaults look great here for Pain. मैं बताता हूँ कौन है। Pain are another team coming out of challengers that are looking to collect some new fans. And you know what? It's about time they started seeing. भाई ये बहुत अच्छा मैप है। शॉट भाई। Okay, come on. We've seen 𝘾𝙊𝙈𝙈𝙀 do so much from dark. Look at this boost, but his teammate wasn't. Boros gets caught off for it. Just as भाई बोरोस का खेलता है। ओ रे पे 𝙎𝙃𝙆𝙈𝙀𝙗 not missing. कैप्सूल ओपनिंग 50 लाइक तो He says to himself as he leads by example, 27 on this first map in the series, and the most consistently highest rated player for Pain so far. Challengers, not so challenging for him. था इनकी टीम में एक बंदा और। Finds this clip off now. Round is still live in the 2v3. Pain have decided not to complete their push into B because they left the bomb back in their default. Things will get cleared रुक इसके बाद करते हैं, मैप खत्म होने वाला। But now, won't be asking any more questions. Rotate over towards the A site. SDY, first man in. Does he want to? क्लोज सुनाई कैसे नहीं दिया भाई? His face. He wants अरे it. Got it all. 𝙎𝙃𝙆𝙈𝙀𝙗 with a headshot to close it. GG। Nubis, the way of Pain. The first step in this best of 3 series to the legend stage. 2 matches left. Mr. Bulldog, who are you? Day 4 of Paris. बोरो 2 के तो ऑलरेडी अनम्यूटेड है। मेरे को साइट सेलेक्ट करने का आया था। अरे डिस्कनेक्ट रे। लेकिन फेल हुआ बाय फोर्स बार हो गया। लिक्विड और मोंटी शुड विन। यस ब्रो, यही तो चाहिए अपन को भी। सेम टू सेम ब्रो। भाई 4G के पास बेस्ट, अरे कहाँ गया वैन तो दूसरे 4G के पास बेस्ट चांस था। मेरे को अभी चाहिए दोनों जीते, मोंटे जीते और लिक्विड जीते, जो बीच की 2 टीमें। खैर लिक्विड को तो जीत जाना चाहिए, इससे भी लिक्विड हार गई तो लानत है भाई, लानत। फिर तो डिसबैंड ही हो जाओ भाई। मैं क्या कर रहा था? इनकी टीम का दूसरा प्लेयर कौन है? बेंच क्रसनाल। ओके ओके फिर ठीक है। वही तभी याद नहीं आ रहा था मेरे को। बेंच बिल्कुल ही ऐसा प्लेयर है। क्योंकि मेरे को SDY वॉर 2 के और डैम QQ बोरिस चारों के नाम याद थे मेरे को, इसी का ही नींद था नाम याद। तभी मैं सोचू लोमड़ी का है कौन। और फिल्टर की भी एक कमांड होती है ना जिससे हट जाता है। google.com रिमूव नहीं, म्यूटेड प्लेयर CSGO डेमो। टेक्निकली यू कैन अनम्यूट। चल चूतिए कर सकते हैं। CL sanitize muted player 0 sanitize। yes that was the command। ये एक नंबर। चैट नहीं दिखाई देगी उसकी, पर ठीक है। अभी कौन सा पिक आ रहा है नेक्स्ट देखें। HLTV। अब इसमें 2 वो सेट करने के होने चाहिए थे। यहाँ बुक मार्क्स लगा दो, HLBT खुल जाए। HLTV.org। बिग जीरो शाइन्स वाई ब्रो। और भाई मैंने सुना 4J को भी बहुत बुरी तरीके से बाहर निकाला गेमर लीजन ने। नेक्स्ट मैप इज न्यूक। ये मॉन्टे का पिक था। हुडी हुडी बाबा।
बोरुस भी कहाँ चला भाई? ये बोरुस भाई है ना, आज ही नहीं चल रहा भाई। क्या पी रहे हो? रसना, ऑरेंज वाला रसना। मेरे पास बहुत सारे रसना पड़े हैं भाई। 9 लाइक हो गए, चलो बढ़िया। यूट्यूब अभी उसने डाला था ना, जेरी ब्रोक द टेबल आफ्टर इससे। चलो ये देख, अभी यहाँ प्लेयर कैम आता है यार, मैं भी चूतिया हूँ। अच्छा वो थोड़ी आएगा इसमें। And so he's going to farm up another two. His teammates move in to take the line. The AWP is set up over at Ruins. They find themselves in a post plant to 𝙄𝙆𝙈 Legion. They get that bomb down. If 𝘆𝑒𝑐𝑜 can even get one here, that's fantastic. But he dies 1v3. What the what the height? to find his footing. He is on for the ace. 1 kill away from it. भाई ये वाला एंगल देखो तुम, इतना कीड़ा एंगल है ये। इंसेन यार, इंसेन। एस क्लच किया भाई ने भाई। To the man that will be remembered if 𝙄𝙆𝙈 Legion end up winning this. He doesn't just win the round, he doesn't just ace and do it all भाई to find 15 for 𝙄𝙆𝙈 Legion, but more इसकी भी इसकी फेंक ही दी उसने इसने तो फेंक दी इसकी, इसकी हटा रहे हटा। ये देख भाई यार, शिट यार, ऐसे नहीं चलेगा फोर्स भी भाई। मैं इतना अच्छा फ्लेक्स करता। इन्हीं का ही पिक था ना सेम, इनने ही सेम चीज गलती कल ओवर पास में भी की थी। 𝙄𝙆𝙈 लीजर ने लास्ट टाइम G2 को बार किया था, तो सो दे कैन बी डेंजरस। पिछली बार तो दूसरी टीम थी ना इनकी। आठ मंथ पहले तो आए ये लोग। वेयर इज 8 मंथ मैचेस स्टेट। पिछला मेजर कब हुआ था? रियो। सेम ही टीम थी यार। पर पिछली बार तो बहुत शुक्ला खेल रही थी ये G2। लिटरली भाई ये मैच देखा होगा तुमने तो बहुत ही गंदी। शिट, अपन क्या करें, नया मैच स्टार्ट होने से पहले अपन करते हैं एक और चीज मेरे को ध्यान आई। blast.tv भाई, इस पे इतनी अच्छा है ना ये भाई। ट्विच पे अगर कोई भी देख रहा है ना तो मत देखो, इस पे देखो। पता है क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, इसको म्यूट करता हूँ। अब क्या है, ये चैट को अपन हटा दो साइड में। 140% को करो कि भोसड़ी की तो 140% पे क्यों है, 70-100 पे हो गया। ठीक है, अब इंसान की तरह दिख रहा है ना। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यह मैचेस भी दिखाता है। ठीक है, ये छोटा करो ना, यहाँ पे साइड में मैचेस दिखाता है। अभी कोई मैचेस नहीं तो नहीं दिखा रहा। प्लस क्या है, यहाँ पे सब एक का स्टैट्स दिखाएगा। ठीक है, सेम इधर नीचे भी है, देखो नीचे देख रहे हो, प्लस है ना, ये देख रहे हो ये नीचे। ये जैसे 𝙄𝙆𝙈 लीजन वर्सेस 4J का चल रहा था, तो जैसे वो एस क्लच देखना है ना, ये देखिए इनफर्नो पे यहाँ आ गया है ना, ये रहा। ये क्विक राउंड ऐसे बता दिया इसने, ये देखिए क्विक राउंड ऐसे निकला। ये फिर एस क्लच उस बंदे का, ईसा का है ना, क्या नाम है उसका, इसाक जो भी है। ये देखिए डायरेक्ट बता दिया। फिर इसको मिनिमाइज कर दो, पेन वर्सेस मॉन्टे खोल लो। एस लिया किसी ने, एस देखें किसके एस है, वॉरो 2 के एस है। 1v3
He thinks there's somebody close, and the mid play is about to come at him. A second fake. What? He goes twice. A chance at the frag, but cover. That rock cover down to the second. He's got to squeeze it out. And if that shot had landed, what a fantastic ace. This is still tons of economic. देख रहे हो यार, खेलो कार्बन भाई यार, हम वॉच पार्टी कर रहे हैं, है ना। अब ऐसे यहाँ पे लाइव पे क्लिक कर दो, ये लाइव पे क्लिक आ गया। इतना बढ़िया है इसका यूआई, काफी अच्छा लगा, है ना। और प्लस इसमें जाएंगे अपन प्ले पे, जाके काउंटर स्ट्राइक खेलेंगे, ठीक है। आज है ना, इन्होंने एक मिस्ट्री प्लेयर का नाम रखा है, देखते हैं कौन है वो। अपन स्टार्ट करते हैं। मिस्ट्री प्लेयर जो वो लोग खेलते रहते हैं ना, तुमने देखा होगा इसके बीच में, क्या नाम है, इसके बीच में आता रहता है वो, उसका नाम है। अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे मीडियम प्लेयर कौन सा? 𝘾𝙊𝙈 स्टार्ट करते हैं, 𝘾𝙊𝙈, ठीक है। 𝘾𝙊𝙈 AK-47 वाला प्लेयर है, मेजर 10 से कम है, टीम 0 और टीम और कुछ नहीं, मतलब यूरोप का प्लेयर है, एज ज्यादा है। पोलैंड का गैस करें, पोलैंड का एक है 42 नहीं यार, 42 की एज। टैज गैस करते हैं, टैज के मेजर ज्यादा है, प्रो नन टीम है, और यूरोप का है, एज 36 से कम है, मेजर 12 से कम है, तो मतलब पोलिश तो नहीं हुआ कोई भी। यूरोप और जितने भी गेट रेट वगैरह उनके मेजर ज्यादा हैं। आरपीके 33 से भी कम है, 9 से भी कम मेजर है। भाई तो यूरोप में इतनी कंट्री आती है यार, कौन बचा? और भाई बताओ नाम, प्लेयरों के नाम बताओ जो रिटायर हो चुके हैं, यूरोप पे हैं, 33 की एज है, मेजर कम है साला के पास। ओलोफ, एनबीके की मेजर अपीयरेंस ज्यादा है शायद, और वो टीम से खेलता है, फैल्कन से खेलता है। आरजी पे कितने आईपीएल है? सर्च करो, 0। सर्च क्या करना था? बताओ भाई। डेविल वॉक तो उसने दिया नहीं। डेविल वॉक का तो प्लेयर भी नहीं मानता। बताओ यार। स्वीडिश में कोई देखें? एग्जिस्टेंस ने भी तो बहुत मेजर खेले हैं, और उसी में फ्लिपलेरन, क्या नाम था उसको, फ्लिप दिखा रहा है। और बंदे बताओ। होने में कर देता हूँ। हैप्पी ये फ्रांस का नहीं है ना ब्रो? इस फ्रांस मतलब फ्रांस का है हैप्पी, तो ये फ्रांस में ये दिखा रहा है ना कि फ्रांस का नहीं है वो। ऑरेंज मीन्स ये आप सेम कॉन्टिनेंट में हो। भाई ऐसा कुछ लंड प्लेयर देते हैं ना कभी कभी, तो इन्होंने दिया था चाइना का कोई ऐसा प्लेयर जिसका किसी ने कभी नाम ही नहीं सुना हो। ब्लेम एफ इज इन ऑस्ट्रेलिस। नन टीम इज नन, कोई टीम में नहीं है, रिटायर्ड प्लेयर है, रिटायर्ड CSGO प्लेयर। एक सेकंड, अभी किसी की वो भी तो आई थी खबर कि मैंने छोड़ दिया है गेम। यहाँ पे शायद हैप्पी की आई थी, या जाने किसकी आई थी। नो न्यूज। ब्राजील का फॉलन के साथ था।
इंपीरियल का था। नहीं हिरन भाई, पोलैंड के साथ जो था, ब्राजील का भी तो नहीं है। ब्राजील भी देख लेना, कोल्ड जेरा लगा के देख लेना अपन ने शुरू शुरू में। और 30 की एज है भाई, 30 की एज। हम्म। एक बार स्वीडिश का डाल के तो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट डाल के देखता हूँ। स्वीडिश भी नहीं है भाई, 9 से भी कम मेजर अपीयरेंस है भाई। फ्लेमी, फ्लेमी इज नॉट यूरोप, सीआईएस रीजन। प्लस फ्लेमी, फ्लेमी की एज ज्यादा है आई थिंक, 32 से ज्यादा है फ्लेमी एज। 26, 26 है भाई ये तो। FNX इज ब्राजीलियन ब्रो, ही इज नॉट ब्राजीलियन। जो बंदा है उसकी नेशनैलिटी है यूरोप, ठीक है। एज है 30, टीम है नन, खेलता है राइफल, मेजर अपीयरेंस 9 से भी कम है, ठीक है। बानू गेट लगाए, घंटे की आवाज जाएगी। ओए बानू, गेट लगा, घंटे की आवाज जाएगी। ये लगाया तूने? हार्ड है भैंचो, ये दिखने में इजी लग रहा था, और साले उनको तो इजी इजी मिला था। वो मोनेसी वगैरह को मेरे को क्यों हार्ड देते रहते ये लोग। और बताओ यार। पोलैंड का भी नहीं है, फ्रांस का भी नहीं है, स्वीडन का भी नहीं है, डेनमार्क का देखते हैं। डेनमार्क का कोई नन टीम वाला, ऑस्कर देखते हैं। ऑस्कर, ऑस्कर इज ऑपर। मिक्सवेल, मिक्सवेल कहाँ का, मिक्सवेल कहाँ का है? मिक्सवेल CSGO एज 1995। कौन से मिक्सवेल है? हाँ तो यही स्पेनिश है, 27 साल के मिक्सवेल। क्रिस जे, क्रिस जे इज अ गुड ऑप्शन। ऑपर है ना यार वो, मैं क्या कर रहा हूँ ब्रो, ऑपर है। हेलो डाक भाई, क्या हाल है? वे तो इनका food- और इस कंट्री का भी नहीं है, जो भी कंट्री है। कौन सी कंट्री है? 31-32 एज है उसकी। भाई कोई चूतिया प्लेट निकला ना, मैं बहुत गाली बकने वाला हूँ। रुकना, HLBT खोल देता हूँ, सीधा लिख देता हूँ। CSGO प्लेयर रिटायर एज 30 लिस्ट। क्या गूगल दे पाएगा ये चीज? ChatGPT से पूछते हैं ना, ChatGPT देखते हैं कुछ करता है क्या झोपड़ी का। बोलते कैसे हैं इसको? ट्राई चैट। क्या लॉगिन करने को बोला? गेट राइट, नो गेट राइट इज स्वीडिश, गेट राइट इज स्वीडिश, एंड गेट राइट हैज मेजर अपीयरेंस ऑफ 12 और मोर। ये 12, 10 तो हैं एटलीस्ट, 10 11 10 तो हैं मेजर अपीयरेंस, 8 9 10 प्लस। गेट राइट की एज भी ज्यादा है, इज नॉट स्वीडिश। कौन सी कंट्री बची इसमें? डेनमार्क बची। डेनमार्क का एक कोई प्लेयर बताओ, बड़ा प्लेयर। पिंप, पिंप।
6 से भी कम मेजर अपीयरेंस है, 5 मेजर अपीयरेंस डेनमार्क का भी नहीं है। वी हैव 2 ट्राइज लेफ्ट गाइस, थोड़ा सा फोकस करो यार बदतमीज लोगों। एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस तो स्वीडिश का, बेल्जियम का। दिस इज गुड। 33 साल का नहीं भाई, थोड़ा सा छोटा चाहिए हमें, थोड़ा छोटा चाहिए भाई। यहाँ पे एक और चीज लिख देना, लेस देन 6 मेजर, लेस देन 6 मेजर। डेनमार्क भी नहीं, द फक, वही तो। एक सेकेंड, CSGO यूरोप कंट्रीज, स्पेलिंग देखो कंट्रीज की। कं कं भूल गया मैं यार। और कौन सी कंट्री बची भाई? कंट्री दिखा दो यार। Okay. ठीक है, भाई बताओ यार, कुछ तो बताओ। 2 ट्राइज बचे अपने पास। 30 से बड़ा है छोरा, 6 से भी कम मेजर है भाई उसके पास। 6 से कम मेजर, क्या मेजर अपीरियंस? 5 तो है, मतलब थोड़ी ठीक ठाक टीम से था। मतलब माउस स्पोर्ट्स की पुरानी टीम देखें, HLTV माउस, ठीक है। माउस स्पोर्ट्स का रोस्टर देखते हैं, ठीक है। एक्सर्शन, JDC इज ऑपर, ये ऑल्सो 30 ईयर ओल्ड नहीं है। नहीं, इनकी टीम में सारे यंग थे, ऑल टाइम कर देते हैं। अबे टीजियन 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 नहीं, टीजियन ज्यादा छोटा है ना। गॉबी, टीजियन 26 साल का। टीम्स बिग, ये बची ना रोस्टर। ऑल टाइम कहाँ गया? ऑल टाइम रोस्टर। नेक्स्ट इज 30 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट भी नहीं है। नेक्स्ट के पास 10 मेजर अपीयरेंस है, होली शिट। और जर्मनी का भी नहीं है। ब्रिटेन का एलेक्स, यस एलेक्स, गुड ऑप्शन। इसको खेलने का मजा नहीं आता। इसे सूगले पे सुना कभी नाम? रूबिनो का मैंने सुना है 1-2 बार ही। हीरोइक से खेलता था। बताओ भाई बताओ। बिल्कुल भाई, यही तो गैस पर कर पाता मैं। यार इसे पिकिम का क्या हुआ? लिक्विड या उसमें से एक जना चाहिए मेरे को। लिक्विड और कौन सी टीम है जो भी खेल रहे? मोंटी, वो भी मोंटी हारती भी दिख रही है। कहाँ गया वो? पेरिस मेजर, पेरिस। अगर कैसे पेरिस मेजर रिट्राई कर देता ना, आ रहा रिट्राई। अरे भाई टू वॉच, गो टीवी।
प्ले कास्ट गो टीवी। मैं किसी मैप पे जाके बाहर आ जाता हूँ ना, डेथ मैच में जाके अभी आ जाएगा। मेरा G2 फेज एंड्स एनआईपी फ्लक्सस सही गया, लिक्विड प्रोबेबली हो जाएगा। मेरा गया है G2 एंड्स, मेरा 3-0 में सही था। G2 सही है मेरा, फेज सही है, एनआईपी सही है मेरा भी 4 ही सही है एक्चुअली, सेम तुम्हारे वाले जैसे सही है। तेरे तो 5 सही है ना, 5 सही होगा ना ब्रो तेरा। मैंने फ्लक्सो नहीं डाला था, फ्लक्सो नहीं डाला का था। कॉइन पे जाके व्यू चैलेंजेस। अच्छा, मैंने कॉइन नहीं खरीद रखा ना यहाँ पे, इस वाली आईडी में, दूसरी आईडी में खरीद रखा। मैच स्टार्ट हो गया क्या बताना, मैच स्टार्ट हो जाए तो बताना, मैं डायरेक्ट ही है ना डिस्कनेक्ट करूँ ना। तो है आजकल अच्छा खेल रहा हूँ। मेरे को फ्लक्सो ने बचा लिया। हाँ यार, मेरी ग्राउंड गेमिंग ने 12 बजा दी। खैर अब ग्राउंड गेमिंग के पास चांस है मेरा पिकिंग करवाने का लिक्विड से हार के। हमेशा अच्छी करता नहीं यार, मतलब मैं फेसेट की बात कर रहा हूँ, जैसे एमएम से तो कुछ उम्मीद रखते नहीं। ओए सिंगल स्कोप वाले पड़ते नहीं भाई। मैं कल उसका देख रहा था, ऑस्कर का गेम प्ले देख रहा था भाई, वो लाइव स्ट्रीम करता है वो, सऊदी अरेबिया का है एक ऑस्कर नाम का बंदा, 5000 रीलो है ना, और 32 एवरेज किलो उसके फेसेट पे। ठीक है भाई, क्या मारता है, 400 एवरेज। हाँ भाई अच्छी तो लगती है, पैसा भी उतना ही लगा ना ब्रो मेरा। कौन है रे, छोटी बच्ची। कौन मार रहा है, मैच स्टार्ट हो। नाइस नाइस, थैंक यू डार्क भाई, होप आपके पास भी हो एक दिन। आपको गिफ्ट करूंगा डार्क भाई, ये नाइफ, ये आपको गिफ्ट करूंगा नाइफ। मैच स्टार्ट हो गया, मैच स्टार्ट हो गया, रुको डिस्कनेक्ट करते हैं। अरे वो आग क्यों नहीं रही आगे, गो टीवी गलत बटन दबा दिया, आई थिंक नहीं दबाना था। Goes down when it's holds his spray on this MP9. 5-1, अबे भाई 5-1 हो गया ये तो, भाई तुम्हें जल्दी बताना था भाई। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग शुभादीप ब्रो। अबे ये क्या हुआ, व्हाट द हेक जी। That Molly could make things interesting. Boros, he could run through, but the bomb will be respected. He's waiting. The fact he's found a pocket in between, ओ भाई but he's stuck. And so shots to the gut of Zevi. 1v3 क्लच है। Skulls to the 1v3. Now the bomb is planted right side. Boros going to be exposed, but also gonna keep भाई ये बीस्ट खेलता भाई बोरोस भाई। give Monty 6 and continue this trend of both. ये बंदा यूएई का है शायद, यूएई या दुबई का है, यूएई का है शायद। One of them is चलो वहाँ की कंट्री का फ्लैग्स भी सेम टू सेम है, पता भी नहीं पड़ता मेरे को। when both of them start hitting shots. अगर पेन गेमिंग 6 या 7 राउंड लेगी तो प्रोबेबली जीत जाएगी वेन कंडीशन। गाना को अब मैं जाता हूँ, एग्जाम चल रहा है, एग्जाम चल रहा है। अरे चलो बहुत बढ़िया भाई, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। यूएई का है भाई, बहुत भयंकर खेल रहा भाई ये। in the much stronger region. So, you know, some of the better wins from
Pain, unfortunately, here are actually versus teams like Liquid, who have only recently adopted Nuke or have been trying to. They do also have a win in overtime versus Big. Reasonably close game versus FaZe in the challenger stage where they got 12 rounds. But outside of that, there aren't many teams here that I think Monty would be afraid of to try to take a win over on Nuke. So maybe we do have makings. Okay, they try all right, but नाइस ओ शॉट है coming out of pain. भाई ज़ैवी क्या शॉट मारता है An instant अरे लाइव है हाँ भाई squeaky and it Iron just Man. gets completely stopped. पेन से बिगो जीरो पागल की तरह मारता है हाँ ज़ैवी भी अच्छा खेलता है Some 𝙤𝙆𝙆𝙀 just clips skulls between the ears, and Zevi has 6 HP to try and do anything with. क्लीन So मारते हैं भाई ये लोग Boros will work, but his time हाँ कि is 5 limited. पिंग है ना तो जो प्री फायर वाला जो शॉट होते हैं वो मजे आ जाते हैं देखने में Growing ever faster. Investment on this round. So I think the only Nice. time we saw something that hyper aggressive was going back to भाई Anubis when we see the CT कॉम्बोज देखने को मिलेंगे इन गेम तो बहुत अच्छा लगते हैं भाई कॉम्बोज 5v3 that comes with it. That was the most convincing round from Monty in the series so far. Yeah. Now they're going to get one similarly हो गई तेरी पिक्स 4 हो गई यार एक इसको चाहिए मेरे को मॉन्टी चाहिए या फिर लिक्विड चाहिए टीम लिक्विड दोनों में से एक चाहिए Basically every choke point here available on Nuke. दोनों में से एक भी सही हो जाए तो आई थिंक ए एग्जैक्ट कर रहे हैं लोग नहीं आउटर फेक कर रहे हैं आउटर फेक कर रहे हैं एक बंदा रोटेट हो गया सीक्रेट सिटी से आउटर फेक करके ए रैम ब्रश नेवर माइंड उसको साइलो पे पकड़ लिया आउटर फ्लैश करके ए रैम ब्रश नहीं ए रैम भी ए भी फेक करके रैम चले गए भाई ए रैम अच्छा ए रैम भी तो बोल रहा था मैं ए साइड बोलना चाह रहा था पहले अब ए रैम बोल रहा हूँ शायद लिक्विड हो जाएगी हाँ ये भी हो जाएगी माउंट ऐसा लग रहा है मेरे को Some 𝙇𝙄𝙆𝙈 on the side. Either a secret player or control side, and they don't have either of those things. So unless they can frag their way in, it should be a very बहुत good shot. out of it. 𝙎𝙆 goes out. SDY makes up for it. He's stuck. But it's also भाई यार ये राउंड तो मत हारो शर्म कर नाइस शॉट क्रैसनल's close as the smoke has yet to pop. He jumps on it. Zevi, he hears those. Hold on. Both sets of footsteps have been heard towards control. 1v2 प्लस में भाई ओह ऑलमोस्ट यार ट्राई नाइस ट्राई भाई मेरे को वो वाला गामा डॉपलर बहुत अच्छा लग रहा है यार बेयोनेट गामा डॉपलर फेस 2 प्लस जेड नाइफ इंसेन कॉम्बिनेशन यार CS2 में तो और भी ज़्यादा इंसेन है वो चीज़ wasting no time once he switches into AK. Yeah, he's hit some nice shots, ironically, or not ironically, but coincidentally with the AK, which he gets an AK clip here and there, of course. Things go from bad to worse. मैं लगा लेता हूँ कैमरा मैं तो गो टीवी पे स्ट्रीम कर रहा हूँ ना गो टीवी पे तो बीच में लगा ये ऊपर कैसे हो जाता है बार बार पता नहीं कैसे हो जाता है दूसरे टाइम ले लिए इनने इनके पास इकोनॉमी कैसी है अगर एक राउंड 2 राउंड हराने पड़ेंगे टी साइड वालों ने 2 राउंड हरा दिए तो एक और राउंड फ्री आएगा उनके पास लेकिन 2 लगातार राउंड चाहिए टी साइड वालों को इनकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय करने के लिए Make no mistake though, some of these rounds we are showing really good dry run executes, explosions. The spacing is still very good. Monty just keeping up. और टॉप हट नेट कर रहे हैं डबल नेट Absolutely for Monty if they're not. क्या शॉट मिस करा बचा लिया उसने That's amazing. I mean, क्रूज़र so easy to do that. You know, if this was StarCraft, control other units from a distance, this would make sense. You instantly say, okay, now push. लॉबी कंट्रोल ले लिया तो अब टी साइड वाले आउटर पुश कर रहे हैं Majority, literally majority on the roof, guaranteed.
उनको पता है इनने लॉबी ले लिया तो कुछ स्पेस चाहिए इनको, चैन आउटर स्मोक डाल रखे थे, डीप आउटर स्मोक्स, डीप आउटर भी नहीं बोलते इनको, डीप आउटर वाले तो सिर्फ गैराज के बाहर और उस पे रहते हैं। क्या एंगल है भाई, रीजनल जंप स्पॉटिंग फ्रॉम सिंगल डोर को देख लिया। Insane, yeah. 9-1 14-1 हो जाए मजा आ जाएगा भाई। Yeah, seriously. No, I mean, अब इनको एक दो even with full information into अभी भी 2 राउंड हरा के ये लोग इको ला सकते हैं इनका, full exacts, different एक राउंड और हार के पेन गेमिंग तो फिर ये लोग मॉन्टी हर राउंड बाय करेंगे लिटरली बचे हुए राउंड्स में, be a little underutilized. तो उनके लिए और हार्ड हो जाएगा Ramp by threatening hell is something that they could try to do. They did on पेन गेमिंग वालों के लिए। that's one of the few, full-on normal tactics that we haven't seen utilized. अच्छा आउटर स्मोक डाल रखा तो सीक्रेट चला गया। Individuals right now for the defenders. ए स्प्लिट बहुत अच्छा चांस है इनके पास राउंड लेने के लिए। Getting ambitious, but not able to capitalize. Yeah, but they cleared out important spots. Opposite end is already falling. He's flustered. Stairs as well, stuck there. दोनों ने एक मारी। They'll kill a piece. And he's got the No. answer. Skull is right there with him. And 2v1 Demka's still holding on to the backside. Now, वेंट्स में था ना, वेंट से घूम के क्या आउटर से आ रहा है, वेंट्स में ही अभी भी। he's got a minute to make this happen, but he's got Woro locking him into this corner. ओह भाई साहब Open him up. Demka comes through with the headshot. Monty yet again in ये अच्छा था भाई, Truly impeccable. The fact ये that काफी these अच्छा are था। some hard-bodied citizens that are playing CS right now because this upper hold comes down to these two अरे तुम्हें spots. पता है कि इस टूर्नामेंट्स में भी एजेंट्स अलाउड है मेजर में, On the drop from Big Uzera, एजेंट है ना एजेंट, more information and लेकिन more टीम towards the वालों ने scope डिसाइड करा है, point in the round than Payne had सारी right टीम there. वालों ने कि Still हम able to लोग find एजेंट्स Truly. यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कल है ना कौन यूज कर रहा था, कौन सी टीम है वो, एपेक्स में से कोई यूज कर रहा था परसों G2 के अगेंस्ट में शायद। crumbling under pressure. वाह यार क्या नेट था भाई, Pressured situation. The Anubis win thought यूटिल maybe कॉम्बो they देख रहे हो, अगर वो मॉली के थ्रू भी रेस्ट करना चाहेंगे तो भी नेट पड़ेगा उनको 50 डैमेज पहले दो बंदों को। with a map advantage and only a single round to their T side. सीक्रेट कौन गया नीचे, Heals are there, the utility is there, ये रैंप पे है, but on an individual level. एक जना है 3 बंदा कौन है, HDYS सीक्रेट में, Demka locking down bomb sites. Sumdai Young getting his early on. Krasnal when he's needed in those vent rotates is और दो ये साइड पे हैं। and Boros and 4 Woro कौन है, डैम क्यू क्यू बैक साइड खेलता है, consistent in these और I mean, 1 कौन है, बोरुस, अरे मिस कर दिया, मिनी स्मोक मिस कर दिया। and an important one at that. Tag. That's the only smoke they have to play off of in this round. They're going to try to challenge Woro down ramp. He can fall back into the safety net of his teammates. B- even continue B to कर just रहे हैं rise लोग। towards ramp. There's no B panic. split। There's no problem. Monty leaning back comfortably in this hammock of a B site. अब वो शायद जाके वापस A करे, Panic. Yeah. Now there is an opportunity. लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं है, 0 यूटिल है They'll start to work their way पेन के back up. पास। Can't honestly say things have gotten sketchy. These back CT positions have worked out very well for the CT side, but SDY will be splitting the difference on either side of this box. So ठीक है SDY, it looks like Big Uzera is going to find it. Oh, beautiful headshot. SDY. Back. This gives a ओह रोज They have बहन such little health. I mean, Boros instant 2K, a bullet apiece for those ones. But they've what the fuck, Big Uzera. Oh, double up from heaven. Shoots down to 8 seconds and Skull time with नहीं, another wall bang. Big Uzera tries to grab bomb in time but can't. Woro गोटी में ऐसे ही होता है साले, एंड वाली क्लिप दिखती नहीं, swings his cape. He's out of एंड वाली जैसे शॉट ली वो दिखा ही नहीं साला। Boros comfortable within the site. They had the extra player upstairs. भाई सबके किल देखो, 11 13 14 10, Working out up until the point of execution. Once they सामने भी एक के 2 किल है out the individuals. हार्ड जाओ की, बाकी निकेश जेवी स्कल्स और भी कुछ के 5 4 6 सबके बराबर। Playing in this way, but नहीं नहीं गलत देख लिया मैंने। again, if Payne can still close out the 4 rounds of this half, they're looking forward to CT. No doubt about it. भाई Dead. Oh, the molly behind.
सही है भाई, एक और मारा भाई। with another wall bang. Spent his bread and butter so far this series. That's such a cool element to his gameplay, is right? Just this visualization. Doesn't need to see you. It was very obvious in the 1v4 clutch versus Mongols when he spammed the smoke for the second kill to get that one rolling. पोजीशंस देखो भाई, मैप कंट्रोल देखो टी साइड वालों के पास, आउटर में भी रेड बॉक्स का कुछ नहीं है, सिर्फ लॉबी है इनके पास। यूटिल कितनी टी साइड वाले के पास 2 स्मोक है और चंद नेट्स हैं, ये एग्जीक्यूट तो कर ही सकते हैं फिर भी इससे। ये लर्क स्मोक डाला उसने वेंट्स के आगे, लेकिन उनके काउंटर स्मोक आ गया ब्लॉक करने के लिए स्क्वी की डोर पे। बोले नाइफ लेके खड़ा है वेंट, बट चिकन बनाने के लिए खड़ा हुआ है। हाँ ये स्प्लिट ही कर रहे हैं, बेस्ट ऑप्शन इनका ये था। मैं तो कह रहा हूँ बेस्ट ऑप्शन ही ये था, ये स्प्लिट कर। उनके पास अभी भी इतना पैसा नहीं है कि फुल यूटिल के साथ फुल बाय कर सकें टी साइड वाले। मेरे ख्याल से हाफ बाय करके रैम्प रश आएगा, आउटर से बी रश आएगा, आउट ए स्प्लिट आएगा, सारी तो कॉल दे दी मैंने, या डायरेक्ट ए एग्जैक आएगा। स्लो नहीं खेलेंगे मेरे ख्याल से वाला राउंड। वो लोग वो फोर्स बाय कर रहे हैं लोग, नहीं फोर्स बाय नहीं कर रहे, हाफ बाय हाफ बाय। 3400 लॉस बोनस है ना, तो बिगू जीरा के पास अगले राउंड में पैसा आ ही जाएगा। वो लोग भी लॉबी कंट्रोल कर ले, लॉबी कंट्रोल ले लिया, बॉम्ब आ गया, ए स्प्लिट कर रहे थे, लॉल हो गया, आउटर ए स्प्लिट कर रहे थे। इस बार मैप कंट्रोल है, मैन पावर नहीं है, ना गन है। नहीं हो सकता था राउंड अगर लॉबी कंट्रोल नहीं लेते तो मॉन्टी वाले 10 गेमिंग निकाल सकती थी। Did it come through? Do it. Oh my god, the clipping. Yeah. The op on his back clipped. आप देख रही है उसको, Of course, he knows the play in this direction. So लाल किस्मत भाई। so unfair. होपफुली CS2 में ना हो ये। Woro's gonna be like, why are you pre-firing? You know, why are you pre-aiming this? What is going on? All right, well, that's the अभी भी निकाल सकते भाई, बोरस को किल निकालने पड़ेंगे। बोरोस ही मर गया, क्रेजनाल ने किल निकाल लिया, लेकिन हाँ किस्मत। ओह अभी भी निकाल सकते, लास्ट रैम था, हेवन आएगा। अबे व्हाट द हेल, There are very few situations where there's only one option. That's one. Yeah. Of them. Zebby, come on. भाई ये है मेजर का प्रेशर भाई। इतना अच्छा राउंड इनने कन्वर्ट करा था, हक दिया भाई। हाँ किसी ने ऐसे भी सकते, किसी ने कॉल दिया हो। अरे लॉबी भाई, लॉबी देखो, लॉबी ले जी हो गया, 14-1 हो गया। 14-1 की मनुष्यत लगा रहा था मैं। आपको कब देखूंगा सिंपल के अगेंस्ट खेलते हुए, सिंपल के साथ खेलूंगा भाई मैं। ना अभी से ऑफर पड़ा हुआ है मेरे पास। कौन बोल रहा है ये, किसकी आवाज है ये? के अंदर की क्या? हाँ ये के अंदर की आवाज है।
And you mentioned 𝙎𝙀, and that match against them went down to the wire, almost, sending you guys back home. Considering the fact that Greyhound ये are किंदर likely किया just as big underdogs देखो as मैंने 𝙎𝙀, ऐसे गैस कर लेता हूँ मैं to इंस्टेंट ensure that it won't happen today. भाई 2 मिनट का टाइम होता है भाई इसकी I देख just feel that after the game, ब्लॉग देख after these two games, two specific, अरे बहुत सड़ी के and complexity, I feel that we gained back more confidence than we had विकी साले ने against 𝙎𝙀. देख रहे हो अब दिखने लग गया ना किरनाल का नाम पहले वो दिखा रहा था ना इसका क्या बोलते हैं They were doing really good, and we नाम नहीं दिखा रहा था ना more individual mistakes. Game yesterday against complexity showed that those individual mistakes slowly start disappearing, and we can play good if we are trying and if we don't make mistakes. And वी आर ट्राइंग ये कैसा आंसर है बोस में कि ट्राई नहीं करते तुम लोग we are ready to play them. ये बोरुस तो करी हुई भाई Looking at Team Liquid and yourself, neither you nor नहीं the बोरुस team नहीं है तो has been किरनाल है knocked out before the legend stage in the current major format. Does that add any pressure to you guys, or how do you feel? about it? never mind When it was 0-2, I think everybody felt pressure. Phase 3 है I think ये Being 0-2 is not Phase necessarily 3 easy, but when you start winning games back and you बोरुस understand your own FACEIT strengths, दिखा भाई बोरुस का the FACEIT देख pressure suddenly nullifies. Obviously, there's gonna be pressure. It's a 2-2 match. Oh. Loser goes home. Winner advances. But हैकिंग क्या everything is हैकिंग in your head, and if you're able to control it, then that team is gonna win. तो इस वाले नाइफ से खेलते हैं तो Looking back at these two best of हाँ रे बोरुस because this is the last one that you have to win to get into the legends. You had a shaky one against 𝙎𝙀. Complexity looked much more solid. What should we expect from Team Liquid in this one against Greyhound? I'm not necessarily sure, because every day there could be a different game from us. We'll just try our best. someone inventory some dying some dig bike inventory Major winner लिखा हुआ है क्या quarter final just see how it goes. Thank you so much. some dig bike inventory देखो What's up, Mike? Dead Fixes. There you are. We're united, man. I'm buying too. Like the shirt, mate. Thank you. I appreciate that. Wait, I'm just gonna. उसके स्टिकर कौन स्टॉप करता है Sorry. You good? Yeah, I had a beer yesterday, so. So did we. I'm just Well, it could be a quick one here on Nuke. Just when it seemed like Yes, Pain yes. was end to the Monty run, including that win streak on Anubis, we get a masterclass of a Nuke CT side. कहाँ से आवाज आ रही है From top to bottom, Insane. looked unstoppable, and that's the kind of half where भाई ये even दो आवाजें कहाँ से आ रही है barring the 𝙎𝙆 mistake, it just feels like इन लोगों के पास कितना पैसा होता है भाई ज्यादा पैसा नहीं है एक्चुअली से बताऊं तो ये लोग पहले नाइफ लिया है इन लोगों ने तो मानो कि अभी से 5 से 10,000 डॉलर कम पैसे लगाए इनने प्लस भाई इन लोगों की 25,000 डॉलर सैलरी है जैसे समडा यांग की मान लो सिर्फ उसकी थी पहले और समडिक वेपन भी 4 2 kills come on समडिक भाई अरे डिंग दिया शाबाश शाबाश अरे 1v1 शाबाश ओ भाई 1v4 भाई इंसेन ही हो गया भाई attempt to run this back, if not, we go Mirage. And when I say Mirage, Pain, and भाई ये दो जनों की आवाज एक साथ क्यों आ रही है better get excited. Yeah, that's going to be an absolute movie. I mean, Mirage is going to be incredible. Now, this is a 1v4 from SDY. This is not what Pain needed. Man, I was really hoping to see any. इन लोगों की एक साथ दो जने एक साथ ओवरलैप क्यों बोल रहे हैं And you're The IGL and Monty. previously, and now with the Greyhound, we have already actually spoken about it back in The the recently Mongols elected rematch interview. in-game lead Will your experience of help you Monty guys here? still set. Every single player brought something to the table this map for Monty. Yeah, that was every part of the map tested, and it shows that how ये के अंदर वाली कॉल भी आ रही है अरे भैंस 25 के comeback in major history. यस ब्रो वॉल्यूम कास्टर वॉल्यूम कैसे हटाते हैं भाई Where were you when Pain? वॉइस स्केल 0 कर देता हूँ खत्म वॉइस अनेबल 0 चुप हो जा चुप किया सारे
वो टीवी में माचू द्वारा अपनी 4 जनों की आवाज एक साथ आ रही है उसमें, उसके ये के अंदर वाले इंटरव्यू की और वो जो कमेंटेटर बोल रहे हैं वो। नेक्स्ट मैप में ऑन करता हूँ भड़वू को। 4v5 है इनके पास। क्या क्या है? मैप कंट्रोल इनके पास सीक्रेट है, लेकिन बॉम्ब ड्रॉप है रेड पे। बॉम्ब ले लिया वापिस। आउटर पे स्मोक्स तो दिख ही नहीं रहे मेरे को। जंप स्पॉट नहीं कर रहा हूँ नीचे से। HTY की थी पहले, अब नहीं होगी। तब $5-7 होगी। शॉट है। बोरस भाई बहुत इजी था वो एंगल क्लियर करने लिए। जीजी हो गया। जीजी क्लोज गेम हो गया। जीजी क्लोज गेम। लिखने दो मेरे को, लिखने नहीं दे रहे। प्लीज वेट एटलीस्ट 3 मिनट बिफोर नेक्स्ट मैच। अच्छा यहाँ से होती है TT और CT। ये तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया मैप। तो भाई ये तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया। ये भी ठीक है। तब तक मैं तुम्हें थोड़ी सी ओपनिंग दिखाता हूँ प्राइवेट सर्वर पे, मतलब ये वाले पे। बस इसमें जाने दे यार, इसमें जाने ही नहीं देता यार। UIDI recommends updating proof of identity and Aadhaar please। क्या है ये? सॉरी फॉर डिसकनेक्शन, 65 रुपये पर मंथ। और यार अभी इतना पैसा नहीं मेरे पास, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दूसरे में सर्वर पे खेल लूंगा। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। न्यू वेपन्स। अच्छा ये हेडशॉट ओनली सर्वर है क्या? ओह मेरा लेवल 10 दिखा रहा है। लेवल 10 नहीं भाई, लेवल 9 ओनली। लेवल 6 ओनली। Fuck you। ऐसा तो बंदे ही नहीं है। दुबई पीक में है क्या कोई? रिफ्रेश। मेरा ना सिंगापुर वाले में, डस्ट 2 वाले में खेलेंगे। ऑपिंग दिखाता हूँ तुम्हें, बस ऑफ लेने थे यार। ये लोग ऑफ नहीं लेने देते यार सिंगापुर सर्वर में। ऑफ लेने तो भाई बस में। एक तो चैट हट जाती है यार इसमें से। ठीक है भाई, ये क्या बाय होगी? ऑफ ओनली VIP पर। कोई नहीं, बैठेगा बैठेगा, धीरे धीरे हम बैठेगा। 1 किल। शाबाश शाबाश। स्टार्टिंग हो रही है, स्टार्टिंग लोगों क्या मैं भाई। मैच स्टार्ट होता है तो बताना मेरे को। छी यार, मैच स्टार्ट होते हैं बताना मेरे को।
एक टाइम में खोल के रखो तो। वाह ब्रो, पीछे से मार ब्रो। चलो किल तो हुआ। कहाँ मार रहा हूँ? ये वाला बंदा कभी दिखता ही नहीं। दिख तो जाओ भाई। ब्रो नहीं रही। अटक रहा हूँ मैं, अटक रहा हूँ, लैग हुआ। गंदा खिलता तो हूँ। शॉट यार, सारे पढ़ने चाहिए शॉट। और स्प्रे डाउन। ऐसे भी बंदे आ जाते हैं इसमें। ऊपर पे मार। और ओनली भी आएगा 22 से 19 मिनट में। शिट 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 2 शिट 3। भाई कराम्बिट नाइफ है तो तगड़ा भाई, मेरे क्रॉस हेयर के साथ बहुत तगड़ा जमता है भाई। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है भाई कराम्बिट नाइफ। पहले बहुत गंदा लगता था सेव होता था। सेम गोज विद अरे बहुत सड़ी आइयो आई गया। दो बंदे बुला के ला भाई, वो चीटिंग। यार मैं ना इधर घूमता हूँ और उधर बंदा आ जाता है। या तो मैं नूब हूँ या फिर मैं ही नूब हूँ। सामने भी तो था तब भी नहीं मार पाया। हट भाई भाई भाई, शॉट यार, नाइस शॉट। ऐसे शॉट मारूंगा। एकदम इंस्टेंट पड़नी चाहिए सर पे, ना काहे के फेसिट लेवल 10 ऐसे। भोपुरा इसलिए क्या आ गया। बहुत सारी के दिखो तो सही। छी ब्रो, ठीक ब्रो।
भाई मैं बताऊं, डेथ मैच में लोगों को होता है कि उल्टा होता है लोगों का, कि डेथ मैच में हमारे शॉट पड़ते हैं लेकिन मैच में पता नहीं क्या हो जाता है। मेरे मैच में पता नहीं क्या हो जाता है और शॉट पड़ जाते हैं, डेथ मैच में नहीं पड़ते भाई। छी छी टू नहीं भाई, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। अभी देखो वन टैप दिखाता हूँ तुम्हें, वन टैप, वन टैप। देख अब उधर घूमते ही बंदा आ गया ना साला, शॉट यार, शॉट यार। पिकिम कैसे गया? एक 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 बचा है मेरा, लिक्विड और मोंटी में से कोई भी सही हो जाएगा तो, कोई भी चला जाएगा तो आ जाएगी मेरी। कौन मारा बोशी के? हेड पड़ना चाहिए यार ये। डायमंड का तो अभी कैसे बताएंगे भाई, अभी पहले ये तो हो जाए। लिक्विड पे भरोसा है, लिक्विड और मोंटी पे। मैच स्टार्ट हुआ गया अगला वाला। मतलब ये सही हो जाएगा तभी डायमंड लगेगा। यस यस यस, वो तो है, वो तो है। लेकिन मेरे को लग नहीं रहा डायमंड अपन कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी जीत सकता है तो। नहीं ब्रो, नहीं नहीं नहीं, वॉच पार्टी करने का कोई प्लान अभी इसके बाद? वही तो कर रहा हूँ भाई, मैच के बीच का चल रहा है ना, इसलिए बीच में बैठा है अपन, डेथ मैच कर रहे हैं। मैच तो स्टार्ट हुए। बहुत बुरा स्प्रे करता हूँ भाई मैं। ओ शॉट बेबी, शॉट हेडशॉट कहाँ से? वे मैच बता दे भाई देव, स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? 5-10 मिनट से तो मैं कर ही रहा हूँ। रुक मैं देख लेता हूँ ना खुद ही, कैसे देखूं। एच क्लिक हो जाया कर यार एक बार में, एक तो HLTV.org 16 ही दिखा रहे अभी, आए नहीं है चोरी सर्वर पे। ऐप कौन सा है? मिराज, ओ माय गॉड। 10 सेकंड में स्टार्ट होगा, ठीक है। डिस्कनेक्ट कर लेते अपन यहाँ से, आएगा ना यहाँ पे। एक मिनट हो गया, OTP।
Looking at Lord third party पे do not मैं तो official CSGO install सही है भाई गलत बात है भाई चलो चलो वार्म अप चल रहा है भाई One map left between Monty and Payne. Mirage is where this one ends. It's been high hopes and feelings for both these teams. Starting as the Unicorn favorites at the beginning of this series, when their 15 map streak was alive and well on Anubis. But preparation out of Payne painted a picture for their success. Boros started आगे every single individual. come on भाई मॉन्टी भाई जीता ये देख बुलडॉग फिर आगे बुलडॉग CL सैनिटाइज प्लेयर 0 आगे क्रिजाल नाम ठीक है आ गया भाई क्रिजनाल आ गया मैं ट्विच में देख रहा मैच स्टार्ट हो गया भाई इसमें थोड़ी पीछे चलता है अगर मैं ट्विच वाला लगाने लग गया ना तो मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी ब्रो तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी दे भाई इसलिए मेरे को इन गेम वाली वॉच पार्टी करनी पड़ेगी ओनली समझ रहे हो पेन जीता फर्स्ट मैप बैट हुए देख लिया मैंने सेकंड मैप मॉन्टी जीत के वो भी देखा हैव फन नाइस तरीका यार हैव फन HF figuring him out and stopping him were the steps on Anubis that took Payne to an early victory. But thinking about सिटी साइड कौन स्टार्ट कर रहा है पेन गेमिंग is a whole other beast. Monty, here we go. A T side with a legend spot on the line. We saw the individuals keep up with Monty on Anubis. Jungle smoke. You know, this could have been a 2-0 situation for Monty. Just a 16th map. उस पोजीशन से दोनों स्टॉप इसमें 16-1 victory on Nuke, but that's not the case. They definitely I mean first pistol round वाला चच्चा And here are Monty already. भाई तो ऐसे स्पॉइलर अलर्ट मत दो ना सालो ओह शॉट यार Pops 𝙇𝙄𝙆𝙀. On ramp. Coming out from connector. That is not what you need if you're Monty. 𝙎𝙃𝑗𝙆𝙀 is going to claim another life. एमएन वाला बंदा मर जाता है तो बहुत दिक्कत आती है Attempting to challenge his market. Nekis chucks out the nade, comes back with a headshot, and 𝙤𝙃𝑗𝙆𝙀 2 with 3 put up on Nuke. शॉट यार Versus 4 to clutch on that one, and a 2v2 is where we're left. As Boro clears out skulls. 𝙎𝙃𝑗𝙆𝙀 chance again, stops the bomb, and with 45 seconds and 3 HP, Boro's got a tough task ahead of him. And we're talking about keeping up. And this is a good display of it. They create the most amount of chaos possible, and Payne are there every step of the way to get a trade. Play Nekis to nade the window and peek back into the hallway. इसके पास चांस था फर्स्ट बुलेट मार दो Good trades overall. 𝙎𝙃𝑗𝙆𝙀 leading from the front once again. Pistol round 1. Good start for Payne. And they're trying to put Nuke as far away in their rear view as possible. Forget about it. It's a reset. And that's a map where if we saw their CT side, they might have been able to grab some more confidence out of a slight comeback. But instead, they'll have to live without it. A true test of their mental in a way they've never लेकिन experienced it, and the same can be said for अगर पेन इसमें 8-9 राउंड ले गई तो भी चांस है भाई पेन का जीतने का nothing's guaranteed. जो कि नहीं ले जाने चाहिए Payne with more experience at majors. No achievement beyond this point. Top 16 has eluded them. मोहल्ले के आगे खड़ा हुआ फ्लैश आया और डिंक दिया नाइस They took a major off. और डिंक वाला डेड Now they're back नाइस with their eyes set on the new goal. एक राउंड है इजीली मार देंगे वैसे तो With it. MP9 बॉम्ब कहाँ पड़ा हुआ है Monty dealing with the pressure out. बॉम्ब बेस पे पड़ा हुआ है Spawn, so really Monty have nothing to offer in this one. Payne are going to convert it. साले बॉम्ब भी ले आते पैरिस वाले And you can see that you've just got to be ready
इनके प्लान होगा जिसने मारा, जैसे ए पे मारा तुमने तो हम लोग ए पे बॉम्ब लेंगे, बी पे मारा तुमने तो हम लोग बी बॉम्ब लेंगे। Mohan, that you enjoyed watching Monty on Mirage. You loved watching those demos. Why is I it? actually forgot that I was trying to learn from the demos because I've never pogged so many times watching a player like Boros play on the map. I was alone in my room and it felt like there was casters, it felt like there was a crowd. Like the kills that he gets are so insane. I'm just Lord. like, whoa, no way. Like, no, whoa, no way. Over and over again. And again, I left the demo thinking like, man, that was awesome. I can't do that, even though I know exactly what he did. That's just because his speed is just as smooth as movement. No wasted space on his flicks. Always locking down the headshots, but बोरस भाई सही में बहुत खेड़ा मारता है। everybody knows what to expect from these ये guys. मेन स्मोक से वॉक इन करा, Stopping it is sometimes a whole वापस different चला ball. गया। Boros walking out of the A ramp smoke, but not going too far. Little the skulls realize. He clears this though. Once. तुरंत उसके में पहुंच भी गया था भाई उस पे। Biguzera, double kill. Massive rifling. नहीं यार, एक राउंड तो स्टार्ट करो, अर्ली स्टार्ट करो। Individual level was so good. Paired with the deep molly on B, full control of the map once again. Even keeping tabs here on window. Monty leaning into this. Smoke grenade at the end of the apartments. Krasnal. दो स्पॉट हो गए क्रैशनाल को। Definitely inbound. They know it. Of course, on Payne's तीसरा बंदा किधर है? player. मिड पे। Confirmed. They don't know what's really behind that. And they also have no information. जंगल कंट्रोल लेना मिड वाले बंदे। Advantage. Sure, Biguzera's deep खैर उनके powers पास ये मैन है। have a picture put together. Hit. But mid, that could be the pain point. And Biguzera caught in the open. He's Lol. exposed, but still clean with it. लॉल भाई। 4K out of Biguzera, and that is with the Boros entry inside of that A site. He decided enough's enough and puts an end to Monty early in round 3. Waro deep through jungle, but with no bomb control, therefore no time. यही से no भाई chance. उसका बिको जाएगा। Try to survive if you can. Try to topple another player from Pain, but there's no win here for Monty. There's no chance at a clutch. Oh, and he actually made some noise. So now Zevi knows that he's not worried about the A ramp. Zevi will be able to take him out. Man, Biguzera, what a Nice node. absolutely massive plays. And भाई अगर ये लोग where they अर्ली बोर्ड पे नहीं आए मोंटे, any of these trades come down because Monty फिर has रखना स्टार्ट कर देंगे ये लोग, जैसे फर्स्ट मैप में करे इनने। Mirage when they attack. I talked about Boros, but that's with Krasnal hitting B. That's with Waro behind Boros inside of mid, looking for opportunities to trade, and they're ready to hit both sites and be comfortable with whatever they get out of it. But in this situation, it's held down on one side, reinforces the other. B gets mollied, and everything is calm for Pain. आके स्मोक करो। यहाँ से कौन से स्मोक होता? जंगल स्मोक कर रहे हैं। In that moment as well, right? Fully exposed. How many times you see a CT get caught by a terrorist who has that easy? डीप जंगल स्मोक। ओह लॉल। So given a gift, couple bullets. Demka desperate, allowing the pistols to cross. This is armored, upgraded pistols as well. So टॉप काउंटर डीप जंगल स्मोक। Krasnal मोंटे जीते इजी ब्रिज, मेरे को मोंटे लिक्विड दोनों चाहिए। तेरे को दोनों चाहिए, मेरे को एक चाहिए। ला dry on him. So sure enough, तुषार भाई मेरे को एक चाहिए। a CT side looking solid. As they 4J भी launch रखी थी क्या? this A hit. Yeah, I think it's very favorable. 4J भी रखी थी तो रेस्ट इन पीस ब्रो। Their protocols, this is the best way for them to prove that they can counter. I think it gives them tons of confidence coming out of the last map. And like Biguzera playing like this is the big match player that we know from the ये past year. fast From this team outside of jungle the smoke. stories in Zevi and इंस्टा जंगल, इंस्टा नेस्ट, personally, आई मीन quite often, we just see फ्लैश में जंप कर लेते हैं भाई। Very quickly back in with another. Boros looking for a trade No. frag, but nothing. One way. 2 kills from Biguzera in the same spot. Just tucked his head. Trying to transition this into the straight. भाई 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 4J भी रह गया। हाँ यार क्या स्टार्ट करा भाई ने 5-0। It's a 5-round start from Pain CT side. that's big. नहीं नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। About 𝙎𝙃𝘼𝙈 is not the guy that you expect to be there in terms of pure output on this roster regularly at the bottom. ये क्या देख रहे हो भाई? Even though he makes good plays. Now this is the कितनी Furio one-way कितनी मस्त smoke देख है। that Biguzera used, and it's beautiful. It's actually a स्टिकर भी ठीक लग रहा है कृष्णाल का। into this, thinking that Biguzera fell off his position. Of course, Boros never strays from
try to continue into it, but I don't think he even sees 𝙎𝙆𝙈 in that moment. Fluid movement from him to get up perched on Cat, and they end the round right there. फास्टर्स कैमरा ऑन कर देता हूँ Move from the IGL of Pain. भाई। तुम्हारी टीम तो हारती भी दिख रही है तुषार भाई। मेरे को भी फिर लिक्विड चाहिए होगी। ऑल होप्स ऑन लिक्विड हो जाएंगे फिर, अगर मॉन्टी हार गई तो यहाँ पे। नहीं हारनी चाहिए वैसे तो। And 5-0 quick on fire instantly into Monty with क्या कर रहे हैं वो लोग? ओह नाइस मॉली। round where they लाइनअप देने भाई जैवी भाई, फिर से वही कर रहे हैं स्प्लिट। work with still, but Pain will grow with confidence every time they stop these fast attacks. वनडी पड़े भाई ऑपर को, मजा आएगा मजा। फिर से टॉप कौन दे रखे? नहीं जंगल स्मोक है तो Massive statement, honestly. Either team winning at टेढ़ा कूदा तो जंगल स्मोक है। हाँ ये जंगल स्मोक है। just because of Monty's stature, the teams that they played against. Well, from this point on, this आई मीन make the rest जंगल स्मोक क्या बोल रहा हूँ? नए स्मोक भाई, स्मोक ही गलत बोल रहा हूँ मैं नाम। 12-0 to start, 5 rounds into it. unreal. जंगल मतलब नए स्मोक करा ताकि उनको दो जने मिड देखने पड़े। अभी कौन 1 और 3 प्लेयर मिड देख रहे हैं? 1 और 3 कौन है? Taking over the in-game leadership for the Skulls first time in his career with और बिगुजेरा। and all of a sudden अच्छा ये मेन पे तो ऑफ लगी है ना। in 2023. Yeah, they suffered losing Safe into losing Nithon into reimagining ये themselves टॉप कौन सा है? to make all their pieces the entire time. Missed shot though. Zevi, he's not able to put one up, so Woro's scout connects to the head of Skulls. ओ भाई 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 कृष्णल Sarah, and again! Spamming with the tech to give them a chance भाई to भाई down. They've got no business winning. Straight up pistols, walk out A. What is this from ये राउंड निकाल गई। Just had a failing. Insane, There's भाई। semblance of a player behind this smoke. Maybe they're in jungle at this moment. And Pain worked so quick to shoot back. भाई He started the fight, and he ended up getting 2 with the Tech 9. That's so ridiculous. 𝙎𝙆𝙈 didn't move. 𝙎𝙆𝙈 didn't shoot. Yeah. He waited for tracers to come in his direction first. Krasnal क्या exposed मारा भाई। himself. कृष्णा अल्लाह भाई दो छोरे क्या मारे भाई, मजा आ गया। Line entry, not to mention Woro's scout shot. ऐसे राउंड चाहिए होते हैं मैच में कॉन्फिडेंस लाके स्टार्ट करने के लिए। Series with a नाइस यार, नाइस राउंड। blast on Zevi's underperformance. You cannot be ecos. This might not be the first eco win that we see from Monty on Mirage. You know, if there's a map that they're going to do it on, it'll probably be this one. So great shot here to start things off for Woro. Answer back, and then Krasnal just letting it ring off through the smoke. I mean, you know the jungle rotator's going to be there, but भाई सबने ये ऑड कॉम्बो क्यों लगा रखा है ब्लू और पेड का? Zevi offers nothing on a hold. What a way for Monty to crack this defense. First one's on the board. The first one could be many. नहीं बे Strong start out of Pain and a strong one here. Straight to it. Off as well. शॉट है, And Zevi. नाइस शॉट यार। No answer. Zevi misses again. लमा And on a crossback where 𝙇𝙄𝙆𝙀 just नाइस यार, नाइस। open. 4v3 want to cross back, बोरो नहीं मरता तो ये तो get out. इजी राउंड हो जाता बहुत। अभी भी ये लोग जीत सकते हैं 4v3 पेन वाले। Falters. And you brought it up. We talked बी एग्जैक्ट करने का ट्राई करेंगे। after losing मिड फेक तो करना पड़ेगा लेकिन इनको two oppers. That was the कुछ तो फेक करना पड़ेगा। getting wrong जीरो कौन है? team. And then when we had 10 है ना, डैम क्यों खड़ा है टी बेस पे। this is a player who टॉप मिड कौन खड़ा हुआ है? to this team and 6 instantly dominate with an कृष्णाल खड़ा हुआ है, बाकी बॉमर दोनों आ गए। transition. अच्छा ऑप ने इधर लगा लिया, रीटेक खेल रहे हैं बी। Terrible to Skull. सही है। True growth in the op presence from Pain for the first time. Not a natural star, but someone who showed an improvement. Well, all of a sudden, we see उसने उसको मार दिया भाई। spam out a big era. It's hard ओ to शॉट भाई, actually hitting harder. And 𝙇𝙄𝙆𝙀 with क्या हो गया भाई? shots yet again, playing so far डैम क्यों भाई मार रहा। here in Paris. सम डिकवाई ने भी अच्छा मारा, नाइस। He's over on the other side of the map, confirmed for the last two. चलो बढ़िया है। अगर ये सेव नहीं करा ना He's got the kit and the smoke and a hope. तो इको है उनका पेन गेमिंग का। 𝙤𝙆𝙀 in a 1v2. Yeah, and he laces आई up. थिंक ऑफ सेव करेगा। Gonna try this. What kind of utility are we working with? There is ट्राई कर रहा भाई। these are the best, pieces that he could have, but will he be able to find this double Spot हो गया। setup? They're letting him cross.
He's already getting close to sight. There won't be a free defuse even if he smokes this. Smoke in a good way. Taps it once, gets the spray out. He's gonna jump some guy up. He saw the second in the background. Just can't भागो। manage. SDY slides through smoke. Coverage is there from the second. ओए And we've got Manny with 2 on the board. बच क्या भाई, Beginning and end of भगवान का 11 रुपए के पश्चात taking one चढ़ा देना आप मोंटे के लिए। Xavi missed 11 रुपए में कुछ नहीं होता भाई आजकल। getting nervous. 𝙇𝙄𝙆𝙀, one between the eyes. He can't even escape. Insane. एक वो आ गया ना, He heads over to B to do more damage. सोलो M4 है उसके पास, कई बूस्ट वूस्ट देंगे शायद उसको बी एप्स वगैरह में, Pain are on one. या वो ए रैंप लगा के रखेगा। बूस्ट ले रहा है वो, Glorious 5-0 start comes to an abrupt halt. And you still नाइस बूस्ट लिया भी गुजरा the ना। impact of Boros. 1 and 7. लैडर चला This series has not been about भाई, ये वाला बूस्ट भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को। the challenger stage. सबसे मेन जो मिराज के एरिया है ना वो है ये मिड, ये वाला जो एरिया है ये मिड। Of Monty being actualized बेगो जेरा ही मर गया। when it absolutely Lama. matters. 2-2 game, chewing through Big Uzera. That's the one gun down. Boros will be given a chance to get it. Demka doesn't pick them all up himself. Creating the space in middle to allow for the exit on A. They know now there's a second towards ticket. Both of these CTs spotted, and if we can get Monty with a third round win and 5 players up, then this सही है भाई। is formula starting to come to fruition. Oh, yeah. अब तो सही लग रहा है राउंड हाफ, मतलब 5-6 राउंड भी लेने ना ये लोग, और बोरोस थोड़ा सा मारने लगे तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद हो जाएंगी। क्योंकि भाई अभी क्या होगा, इसने मार लिया, ये मार रहा है अभी, और वॉर के मार रहे हैं, इसके तो पता नहीं कहाँ से किला है क्रिजनाल के। इसने भी शायद एक आध, हाँ वो जो एक राउंड निकाला इसने, जो मेन राउंड निकाला, हाँ ये भी अभी एक आध राउंड निकाल दिया इसने। लेकिन ये और ये 3 चाहिए मारने के लिए, वॉर 2 के 𝙇𝙄𝙆 और बोरोस। और ये अच्छी बात है कि 𝙇𝙄𝙆 मार रहा है, वरना ये लेट जाता है ना जिस मैप में, तो लेट ही जाता है। बिगो ज़ेरा मार रहा है इनकी टीम से, मारता ये कह रही था स्टार्ट करें भाई, सीधा बाहर निकलना भाई। फिर भी 25-25 किल होते हैं इसके हर मैप में बोरोस। भाई फोर्स बैक करा उन्होंने, फोर्स बैक एचडी बाय मिड देख रहा भाई, टॉप मिड पुश देख रहा, तोड़ दिया उसने। 3 2B नो कॉन्स नो बी शॉट, ठीक है। नहीं नो बी शॉट नो जंगल। अब आज जंगल आ गया, जंगल वाला भी बीच चला गया। बी स्प्लिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लोग, पेन वाले। ये देखने, ये कह रहा हूँ ना, ये वाली पोजीशन है ना जो जंगल वाली होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे बंदा बैठा दो, कौन से एम इन पुश करो, और फिर उसके बाद जैसे जंगल वाले बंदे का कॉन्स पे या फिर पैलेस पे ध्यान होगा, उसको तो इंस्टेंट विंडो पे चढ़ के मारेगा। हाँ ये बहुत तगड़ी पोजी होती है, लेट्स कोई क्लियर कर ले। देखो उसने नहीं क्लियर कर पाया बेगो ज़ेरा, लेकिन वो स्पॉट हो गया। ये देख एग्जैक्टली ये कह रहा था। उसके दूसरी टीममेट्स ने हक दिया यार, बोरोस की दूसरी टीम वालों ने कोई किले निकाल पाए, ए रैंप वाले भी नहीं निकाल पाए, ना पैलेस वाले निकाल पाए। वरना बहुत अच्छी स्ट्रेट है, बहुत सिंपल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी स्ट्रेट है। मिड कंट्रोल लो, एक बंदे को विंडो के बाहर बिठाओ, कनेक्टर एक जो जिसने विंडो के बाहर बिठाया वो बंदा कनेक्टर जाएगा, 3 बंदे ए रैंप या ए रैंप पैलेस पुश करेंगे, तो उनका ध्यान सबका जंगल वाले को उस पे जाएगा। तुम जंगल निकलो, बंदे को मारो, जंगल कनेक्टर तुम्हारा। आजा कनेक्टर, पिक कर ले भाई, पिक कर ले बिगो ज़ेरा। कितने इजीली बूस्ट ले लेते भाई ये लोग।
consistent. Right now, 𝙎𝙆𝙈𝙈𝙀𝙉 is the biggest star in this server. That performance on Anubis, the start here on Mirage, 2 maps that he can stamp his name on so far. इन लोग के पास ना पहले से है Boros tucks in and एवन में डीप बंदा बैठा हुआ है work with कनेक्टर फेक कर रहे हैं क्या लोग ओ एक एचपी छोड़ी Ooh, connector belongs to Boros, and ramp, as I said, has because domain. Oh, he catches skulls on the floor. They actually let their guard down. Sure enough, 𝙎𝙆𝙈𝙈 comes off default. Close. क्रॉसफायर तो है Oh. Opera stuck in jungle. No scope out of 𝙎𝙃, and look at the way that just suddenly solves. अभी ठीक है It's a full commit. It's a burst of players bombarding towards the ये लोग कर रहे हैं बी रश भाई बोरोस भाई He's got no support. Boros over गुस्से में है cracks 2 heads wide open, and all of a sudden the CT is so far gone. This game is electric, and it's back and forth again. Wow. 𝙎𝙆𝙈𝙈𝙀𝙉 puts himself into such a great spot to make a sequence happen after some attention is drawn off of Cat, the nade and spam from his teammate playing off of 𝙎𝙆𝙈, and after the first kill, jumps up but Boros just whips it, knowing that 𝙎𝙈𝙈 was in the vicinity somewhere and hits that immediate spray transfer. क्या ट्रांसफर किया भाई स्पेशल ट्रीट That's insane. इनकम टुमारो तो Look at this. Just saw a glimpse of it when Smoke's on cycle. Something there. Heard some bullets coming in that direction. That's all he needs. Shoot first. That's first win. Monty closed that gap to 1. Crazy. Monty साला एक राउंड छूट गया पॉकेट में मेरा their way, and Payne's still in the lead by 1 round. And that's because the best player so far on Mirage has been 𝙎𝙆𝙈𝙈, but much like Nuke, we're getting all of Monty's members. Yeah. Every single person 15 किल है भाई moment of glory so far. देखो चेहरे का Maybe 𝙎𝙆𝙈𝙈 just buying time for his teammates I to mean, get involved. Waters, that's what he's been doing this entire event Yeah. so far. I mean, just look at the infrequency of positions. He's floating across sites, inside of middle. He's been everywhere. Extremely pervasive. That's how he's put the mark on this game. He sat here waiting. ये लर्क स्मोक है 7 point in Paris will get that op dominance from 𝙎𝙃. We've seen the glimpse of skulls. लर्क in स्मोक series है at least. बी साइड में 𝙎𝙃 had picked up some slack, but you shouldn't have to be leaning on 𝙎𝙈𝙈𝙀 as much as you are in this moment. 𝙎𝙆𝙈𝙀 cannot do this on his own. At least that's how it feels. We'll see and let him decide how this one unfolds. 𝙎𝙆 ready for the mid fight. He's got players right behind him. Bombs with it. 20 प्लेट है Got some good map. लेकिन उनका रोटेशन ए पे गया ओह Puts the game around. Oh my God! What? What chance? Not even time to click here for 𝙎𝙆𝙈. They're gonna take this and run with it. 𝙎𝙆𝙈, he's out for blood. And it's just an MP9. I mean, we've seen 𝙎𝙈𝙈 3 जने आगे भाई but with this weaponry, round cat split, Shadow advantage था यार at least Neck is clear of smoke from the front sight. And they decide they still want to press the issue. Boros goes through it. We've got a player back sight. Just wait. ये राउंड तो निकालो यार इतनी अच्छी पोजीशन है Unnerving positions, though. They can't scale Cat. There's Double one up back. in apartments still that can catch the CTs. Floating. Oh, wow. तो जाना ही पड़ेगा Such a good job. उनका अच्छा राउंड निकाला भाई पेड़ ने Skulls his chance. Setting back by Ticket. A quick sprint from 𝙎𝙆𝙈𝙈 to look and come and join him. We've got a flash on Skulls. That's it. These CTs still lingering अरे on B. बोरो टू के नाइस है अरे बोरो उसको मार दियो Dominance. 𝙎𝙈𝙈𝙈 is coming through the murder hole with an answer that should never be. And instead of playing it back, 𝙎𝙆 gets aggressive. Active decision making, active angle holding, and he just awaits this. The one flash comes out. And it forces Demka from ramp has been such a burden, but now Nekiz with the trade frag forces 𝙎𝙆 to another clutch. The bait. नहीं First shot's a miss, and so with नाइस ट्राई यार इतना अच्छा राउंड था यार इनका I like that. 𝙎𝙆 tries to go for it in this spot. बी शॉट वाले फास्ट नहीं है बी शॉट वाले फास्ट आते हैं ना Only get one, and that's 'cause तो वो लोग वहाँ पे सारे ट्रेड ले लेते हैं man, that situation in the प्लस एक मार्केट स्मोक चाहिए था better teams have lost to the amount of control the T's had right
right here for Hmm. Payne to section off these fights. Exactly. Favorable engagements and still stay safe from सही the बोला other ये। opponents. So It's many so teams have lost manageable. Have इतना to give it up to मैप कंट्रोल के बाद। 𝙎𝙃𝙆𝙈𝙈𝙀 doing a fantastic job of staying भी शॉट जल्दी आना था उनको carry. और Cresno मार्केट स्मोक tried to चाहिए। instill fear in him, ये ना looking ठीक out, है। but didn't want to Nice get any try. farther than that one angle, and Neck has finally found him. जब उन्हें पकड़ लिया था ना फिर भी 3v4 में अच्छा कन्वर्ट कर लिया था ऑलमोस्ट मॉन्टी ने। अगर एक किल और ले लेता वो कनेक्टर वाला। वो शॉट रहे यार। फास्ट ए आउट भाई, ये हर बार इसको जंगल में मार देना। It's 𝙎𝙃𝙆𝙈 picking up that slack and giving him a chance here at the retake. Payne are gonna play for it. Nowhere to hide. Waiting for this one to unfold, and 𝙎𝙃𝙆𝙈 gets himself another op kill. 9-6 होने वाला लग रहा है। अरे 𝙎𝙃𝙆𝙈 over the top, denied by some 𝙎𝙃𝙆𝙈, and the ticket presence is so that they're ready, but they're getting stuck. This has gone down. नाइस राउंड यार कृष्णा। Clean from Krasnal, and it's a lively one from Monty. 8-7 हो गया ना। 9 राउंड चाहिए थे यार पेन को एटलीस्ट। चलो अपने लिए तो बढ़िया है, अपन ने तो मॉन्टी डाल रखी। पिस्टल जीत गया तो खत्म है भाई ये राउंड। पिस्टल और कन्वर्ट कर दिया तो मॉन्टी ने पूरा खींच जाएगी पक्की बात। अगर पिस्टल पेन जीती तो 11-12 राउंड मिनिमम जाएंगे। अरे एक तो ये भौंकने लगते हैं, वॉइस अनेबल 0। अगर पिस्टल जीत गई ना मॉन्टी तो आराम से जीत जाएगी मॉन्टी। अगर इनने पिस्टल दे दिया और 2 राउंड दे दिए, उनके 10 हो गए जल्दी, तो 12 राउंड तक तो इजीली चल जाएगी पेन गेमिंग। सबके नाइफ देखता हूँ। ये कौन सा नाइफ है? फेस 4 पेड पेड नाइफ निकाल रहे भोसमी के रूबी। भाई ब्राजील वालों के पास हमेशा तगड़ी स्किन होती है, कभी भी देखना सबके पास। हाई कॉम्बो देख रहे हो ये? उफ, इस मैच में सबसे बेस्ट कॉम्बो यही लगा मेरे को अभी तक। फेड भाई, सब फेड क्यों चला रहे हैं? ज्यादा फेड के दीवाने क्यों? फेड के ज्यादा दीवाने लोग हैं। फेड ही फेड चला जाता है। मेरे फोन की बैटरी क्यों मर गई यार? स्टार्ट करो भाई मैच। गया नहीं रे तू लेने वो हीरो? वो हीरो गया नहीं लेने। दो बंदे खेल रहे हैं उनकी टीम से। ज़ैबी भाई को छील दिया जा रहा है, इनकी टीम से सब लोग खेल रहे हैं। आई थिंक स्टार्ट होने वाला है। अभी भी ये बाहर की आवाज आ रही है। स्टार्ट हुआ। And had that 5-round start. All of a sudden, things in question. Back and forth towards the tail end.
Ooh, it's a sketchy one, I gotta say. Yeah, Feels like obviously 𝙇𝙄𝙆𝙈 putting up numbers early helped, but How's your picking going bro? भाई एक बचा हुआ है मेरा, मोंटी और लिक्विड में से कोई भी क्वालिफाई हो जाएगी तो हो जाएगा। for a few more rounds on the CT side, of course. ये राउंड जीत गई मोंटी तो प्रोबेबली मैच जीत जाएगी। A little assistance there, but देखा कैसे निकला वो बंदा पहला वाला, सर नीचे करके। Some of his pistoling prowess, 𝘾𝙊𝙈, that's more like it. One tap into Nekka's Woro is just going to stay tucked back. He could become a problem. क्या मस्त, in the retake if he just क्या मस्त पोजीशन है Boros on the Woro की। anyways. And if 𝙎𝙈𝙈 doesn't go and clear this tight corner, then at what point Oh. will Woro decide to make his move? But one of the other flanks gets shut down. Boros doesn't have it. Woro भी मर गया यार। Woro cleared out. We got two CTs stranded in the middle of this. नाइस ट्राई हो गई। Earlier, and this time 12 राउंड हो जाएंगे अब इनकी। it is Pain with both pistols on Mirage. yeah, maybe they need some assistance to be able to close this out on T side. Both teams are better on CT in their macro statistics, and for Monty that probably means a little bit more considering the teams that they play. But Pain, 2 pistols, that's a good start, man. And on top of that, we saw lots of great rounds. It was an absolute war, you know, in that first half. They had to earn it every step of the way. Great to see on both sides. CL's carrying across the series. SDY and Zero for the show right now. फास्ट बूस्ट समडाइंग है लैडर में। Performances from 𝙎𝙈𝙈 in the recent बोरस के पास क्या है गन? डीगल है। This would be the map to bring it all together. Yeah, he was doing the op. Pain for me, good luck. Oh, सही है भाई। That CT side. His moves were extraordinary. They did a great job supporting him as well. ऑलमोस्ट रे वोरो सिटी चला गया होगा। Zevi still in his own गया ना वोरो सिटी, nuke debacle, my opinion. लाइन है ना वोरो। Some of the सिटी pace चला गया we ना। get out of Monty smashing him over towards apartments. Anytime he just managed to get footing inside of jungle, it is instant headshots on him. Some of the nicest shots out of Monty in that first half versus Zevi. Absolutely. It looked like he didn't even shoot on most of those frags. Incident wide swing. Trust me, AKs like you would an op. Speaking of ops, ए स्प्लिट है कॉन्स के साथ। going to have कौन सा भी है स्प्लिट? right now. Of course, he's actually only on the scout. ओह बहुत डैमेज दी। ओह इजी भाई, इजी From Monty, unless इजी भाई। to his left gets killed back by Boros. It's a cleanup in connector. Boros' position, one that we didn't God ही हो see गया। dominate T side. Yeah, he didn't even go for it that often. And yet on the defense, 2 rounds in, we've got it here already. Yeah. Just like back on Nuke. Or no, excuse me, Anubis. We had 5 rounds at the start of the first map, back and forth. कौन से एक के साथ काफी हार्ड रहता है भाई। इनके पास कितनी एक थी? एक दो तीन, तीन तो थी, तीन थी, एक उठा नहीं पाए। एक ही कहाँ है? अच्छा बोरोस के पास है, मतलब 3 से 4 राइफल थी इनके पास। And this is a good time to ice the kicker here for Monty. They win one early, deny the conversions. So all that. यहाँ पे लीड ले ले भाई 5-6 राउंड की। The free round Easy that you win. get to start off your T side. And now there's going to be a lump in Payne's throat. It's going to be the hardest वो round. उनका भी 4th बाय भाई, 4th बाय वॉर चल रही है भाई यहाँ पे। They're going up against. They're not देखते gonna कौन play जीतता है safe, 4th बाय वॉर। but are they going to be focused enough? क्या स्ट्रैट ले रही है पेन गेमिंग? पेन गेमिंग ले रही है मिड बी शॉट या बी शॉट फास्ट। Boros and Woro holding middle. I mean, I feel bad for Pain. Distribution so consistently. A lot of people thought that his individual level would be under question. His new role as primary in-game leader. No longer just the secondary caller, the whole entire burden on his shoulders, and it hasn't slowed him down. When his stint on Na'Vi came to a close, we asked ourselves, where would he end up? What's next for someone who spent nearly his entire career on Spirit, finally gets a call-up only to be considered, even despite a trophy lift at his first event with said team. Here he is leading
Boros, Waro, and all of Monty. चलो बढ़िया कन्वर्ट करना। 𝙇𝙄𝙆𝙀 shuts down Skulls. This one goes swimmingly for the mid setup. Very content and tethering off of one another for the mid play. You can see the confidence starting to boil here for Monty. This game is all tied up, 9 each. देखा तुमने इसने क्या करा, ये डायरेक्ट उस कॉर्नर पे देखता हुआ नहीं गया, क्योंकि उसको पता है अगर कोई अंदर वहाँ छुपा हुआ होगा तो उसको इजीली क्लियर कर सकता है। इसके पास राइट आई पीक भी है, प्लस अगर कोई सामने से पिक कर गया तो इसको इजीली मार देगा। तो ये डायरेक्ट लेफ्ट में पिक करने के लिए सामने पिक करते हो गया और फिर एंड में जैसे क्लोज है लेफ्ट में पिक करो। फूड प्रेजेंस है, प्रोफेशनल प्लेयर उसको तो पता हो ये चीज। Pistols up once again for Pain as they look to do some damage. Try to get anything they can. Watch Boros push top mid and kill them all. It's just crazy, yeah. Spray transfer right up. Both teams here need 7 rounds to get into Legends. They know on their best day that they could do it. They both know that. They both know they're capable of insane halves here. We saw what Pain did to 𝙊𝙀 on Mirage. Of course, it's a step up. पेन की स्टिकर भी काफी अच्छे हैं जो ग्लॉक में इससे लगा रखे हैं। It's a map they both love. हाँ गया भाई। They have so much experience on as well. We talk about, as again, just the sheer amount of ये वाली strike that Monty Hard has zone. underneath their belt. Yeah, you can look to basically any map in their pool right now, and it's like, worst case, it's like 22 maps played, 57% win rate. Really not scared to take it. Nice and easy. There we go. Delaying the inevitable with just the pistols. Full house in mid. Just the amount of hours spent inside of the server, outside of the server, in preparation with that online, on LAN. Versus teams considered less and better than you. And Monty have some of the more notable victories when it comes to European teams, right? Again, the only European teams Pain have beaten in the last 3 months from Europe are Big and OG, who aren't even here at this stage. Monty with a best of 1 win over Cloud9 kind of piqued everybody's interest on their run to Paris. What else do they have? And that map wasn't even close. And that map 16-6 रहा था, 16-6 16-8 रहा था। Here they are yet again, the bread and butter. 𝙇𝙄𝙆𝙀 looking to exchange some fire towards ramp. We saw इनकी यूटिल क्या है सिटी वालों को? many times he was able to draw attention. सारी यूटिल यूज कर ली सिटी वालों ने। I wonder if they Nice should smoke. here on the ramp, and that's why they're starting to pull back. But नहीं करा। dominance inside of middle. Rotations should be a dream here for Monty. ए स्प्लिट ही तो है भाई, Playing, I think, yeah, they are playing off of cat. वापस से नहीं जा रहे लोग, पहले कनेक्टर जा रहे थे। Starting to reorganize in this direction. The smoke will come down to उनकी पोजीशन देखो, ये देखो मिड पे पोजीशन देखो इन लोगों की। staying up here. But for Monty. काफी हार्ड पोजीशन थी क्लियर करने की। With 𝙊𝙀𝙆𝙀 coming out of connector. ये वाला कभी नहीं मरता भाई, A missed shot that's पहले से भगते भगते आ जाता है। Man on A right चांस है अब इनके पास। but they're still stuck, crowded inside of connector. Can't get past. now they can. But Boros is going to challenge and get within a little pocket of safety here. 2 smokes for him to play. It's him. It's sometimes the answer. Double kill from him. They just eviscerate all the T's inside the site. And 𝙤𝙆𝙀, who's been under question, 15 seconds नाइस राउंड है inside a bomb site. It is भाई Monty with मोंटी, another. जीत रही, मजा आ गया। Easily got ugly. वही Scramble back for that जीतनी A-site चाहिए भाई, smoke in front of them as well. The fact that Boros dies, we don't get to see जीतनी it, भी but चाहिए थी somehow भाई। he puts up a अच्छी double टीम है, kill from पेन से तो ज्यादा अच्छी टीम। Losing Cradle just steps ahead of him. He pulls Skulls off Palace. इंडिविजुअल लेवल ज्यादा अच्छा है। And the first kill means 2. And Waro comes through with the close. That's just beautiful. इंडिविजुअल में सबसे ऊपर आते हैं इनके बोरस, फिर वॉरो 2 के 𝙇𝙄𝙆𝙀, SDY एंड क्रिमिनल के मेरे को कोई आइडिया नहीं। Guys that quickly, all the smokes go down. And they potentially lose a lot of composure. Monty on 11, half buy in. ये कनेक्टर पे एक करेगा, वो लोग बीरेज करेंगे, या फिर एक कनेक्टर से फ्लैंक करेगा, वो लोग बीरेज करेंगे। There's no
doubt Payne's palms are sweating at this moment, and it's डेड families कनेक्टर that are वाला, starting to lose grip on their जैसे own डेड कनेक्टर उनको पता उनका फ्लैंक डेड, तो उनको पता है कि क्या आने वाला है, no तो वो लोग फास्ट निकल गए। frag department. नाइस। No movement from that bomb. It is slaughter yet again to the favor of Monty. Denied. लास्ट किल तो दिखाता ही नहीं है भाई, लास्ट किल तो दिखाता ही नहीं है। This CT side looks stellar, and we do not have a response yet from Payne. Silence from Zeb. अगर ये फर्स्ट राउंड ने जीती होती तो ये 13-8 चल रहा होता, जो मैंने बोला था। पेन अगर फर्स्ट राउंड ने जीती थी। And that eco has been a flawless CT run ever since, with not even a bomb plant out of Payne. 5 rounds straight, no openings. The closest was that attempt into the A site when they're managing to kill the solo A player, and once they got there, it still gets cleared out by some individuals. He will, however, throw Boros down to the bottom of Con, and we've got what looks like a more electric अच्छी स्टार्ट करी है इन्होंने। समडाइंग मार रहा भाई बहुत नाइस। ये बेगोजेरा भी बहुत मारा भाई, गंदा मारता है बोरोस, बहुत गंदा मारता है। थोड़ा ना मैंने थोड़ा तो करेगी, 10-12 राउंड तो आ ही जाएंगे अगर मैंने बोला था ये लोग पिस्टल जीतते हैं तो। पेन गेमिंग वाले 12-10 हो गए अभी, देखना 12-16-12 खत्म हो जाएगा मैच। 16 ऑफ कोर्स मॉन्टी के, अनलेस वो लोग ये वाला राउंड हारते हैं और इसका अगला भी हारते हैं। कितना लॉस बोनस है? 1900 लॉस बोनस है। 1900 प्लस इनका फुल बाय कर लिया, अगला भी बाय आएगा भाई। 12-12 करा इनने पेन गेमिंग ने, तो 13-12 कर सकती है पेन गेमिंग। 13-12 कर दिया और 14-12 जब कर सकती है पेन गेमिंग, अगर वो लोग एक और गन राउंड हार जाए मॉन्टी। लेकिन अगर यहाँ पे मॉन्टी ने हरा दिया इनको, तब भी इनके पास भी एक और बाय है। इनके पास कितना है लॉस बोनस है? 3 लॉस बोनस है, मतलब इनका रहेगा बाय बहुत टाइम तक। अगर ये एक राउंड और जीते तो, अगर नहीं जीते तो 3 राउंड तक रहेगा बाय इनके पास, पेन के पास, या एटलीस्ट 3rd राउंड में हाफ बाय तो रहेगा इस राउंड से। 3rd राउंड काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। गलत पहले क्यों देख रहा है? पहले तो इसका बंदा है। साउंड दिया उसने, बोरोस ने साउंड दिया। अबे 20 split, let's go। नेक्स्ट वाला बंदा मार दे एचडीवाई निकल गया ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, सिटी वाला बंदा देख लेगा अब जंगल। पिक कर ले एचडीवाई, एक नंबर। चलो नाइस, एक नंबर हो। अब एचडीवाई देख रहा होगा एप्स और बी शॉट क्रेज ना। एक नंबर भाई। फिर भी उसने ज़ेबी ने एक किल मारा उस पे भी। क्या राउंड जीता भाई, एक नंबर, मजा आ गया। हमने देखा सिटी साइड में, सिटी में क्या क्या यहाँ से समडाइंग देख रहा था जंगल मर्डर होल। जैसे समडाइंग यहाँ पहुंचा और उनको लगा बी हो रहा है, तो यहाँ से सिटी वाला जो था बोरो यहाँ आ गया ये देखने ऑफ से एक मर्डर होल, ताकि वो बी फ्लैंक नहीं कर पाए। और समडाइंग ने आके इस बंदे को पीक कर लिया और राउंड आ गया। समडाइंग वहाँ मर जाता तो खत्म था राउंड। पूरा राउंड समडाइंग पे था और टी साइड वालों के लिए मर्डर होल वाले प्लेयर। बी वालों पे भी था, अगर वो फास्ट एग्जैक्ट करते तो। ये रहे बाहर आ गए, ये आ गया इसने। ओ लॉल, खत्म है गेम भाई, खत्म गेम खत्म।
Corsair leaves it to his other troops, but it ये हारते 15 हो गए, ये हार गई, इनके 15 हो गए मॉन्टी के। नेक्स्ट इको है क्योंकि उनका ये ले पैसा देखो उनके पास। अगर फोर्स बैक करे पेन गेमिंग और कोई इनसेन स्ट्रेटजी निकाल दे और राउंड खींचे तो उनका कॉन्फिडेंस आएगा। और इनके पास पैसे कितने हैं? इनके पास 1400 लॉस बोनस होगा। यस 1400 लॉस बोनस है, लेकिन पैसा है इनके पास, तब भी एक राउंड आएगा, एक या दो राउंड आएंगे यार भाई। अब तो सिटी साइड वाले काफ़ी देर तक बाय कर सकते हैं, एटलीस्ट 3 राउंड तक तो कर ही सकते हैं। इसके बाद ये राउंड हारने के बाद 14 तक बाय कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक 13-14 तक ही बाय करेंगे अगर पेन गेमिंग जीती तो। फोर्स बाय कर रहे हैं भाई। यस फोर्स बाय 80। कुछ नई स्ट्रैट आएगी देखने को, लेट्स सी। कुछ इनसेन स्ट्रैट इनकमिंग। वही लॉस बोनस काफी अच्छा था उनका पेन गेमिंग का। Unfortunately on the tech line, but outside of that, it's a full. They just try to play top mid, it works. At least to stop. ये गैस है अभी भी। But where you find Oros, you get Woro, and his double kill is felt. Gonna put man advantage in the back pocket of Monty. नहीं रे, ओवर पीक लोमड़ी के। बेस्ट चांस है पेन के पास ये वाला राउंड लेने का, लेकिन इसने बी क्लियर कर लिया। अरे वॉच कर रहा। That's true. Bit of revitalization here, and we haven't even crossed a minute mark. गया राउंड ये वाला, In here for the T side with mid control. अनलेस वो लोग बी आए वापस। वैसे बी शॉट है तो सही इनके पास। Now they can't बी आ रहे भाई। balls in any kind of situation here, but they'll come and re-clear middle. What the fuck? This still could come down to SDY. He's done a fantastic job. बी आ रहे भाई, बी आ रहे, चांस है। And 𝙇𝙄𝙆𝙀, it depends. If he gets a kill, makes some damage. Mohan, they're here. This draws some attention. Yeah. अगर जैसे अगर बी गुजिरा ने पहले पीक करा तो उनको पता पड़ जाएगा। नहीं नहीं पता पड़ा लमा, नहीं पता पड़ा, नहीं पता पड़ा। जी 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 एक नंबर है। नाइस रन एड किया, मस्त मिड राउंड खेला भाई, इनसेन मिड राउंड। क्या कॉल थी भाई सम टाइम की, मजा आया। Stats, we've seen him in the first half with just instant first bullet kills. Into here being so reliable once again. तो भी क्या आ रही है उनके पास? एक ही नहीं आ रही, गली ला रही है। Just surging to new heights. And when we had some young question, भाई IGL बन के अलग ही उसको वो आ रहा है कॉन्फिडेंस। 25 किल भाई सम टाइम के। 25 किल है भाई। The burden falls on Zebi. Come on, come on. 38 ADR in a career-defining moment. Yes, career-defining moment. It'll be felt. Unfortunately, his lack of presence has been. Zebi भाई। No AWP here for Pain. It's another pieced together by. आगे डिलीट करा भाई पूरा गेम Zebi भाई को, ऐसी बात नहीं है। फिर से पहुंच गए मिड पे भोसमी के। अरे 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 क्या हो गया गाइस? अब स्लो कर देगी पेन। अरे अरे मिल रहे इसको किल मिल। फिर इसमें देख भाई यही होता है, जैसे तुम्हारे पास मैन डिसएडवांटेज है ना, तुम है ना एरिया लेने स्टार्ट करते हो। देख उसने ए साइड छोड़ी और ए में लेने चला गया डैम क्यों। ठीक है, और ये भी यहाँ पुश कर रहा है। ओ भाई इनसे, ताकि अगर ये SDY भी यहाँ मरेगा ना तो उनको लगेगा बी क्लियर है, तो लोग फास्ट भी जाएंगे और बी पे एक और बंदा खड़ा हुआ होगा। और
Even though ठीक है it's रख दे। 3v4, look at the positions of the CT side. Molly to block 𝙎𝙆𝙈𝙈𝙀 peak. अरे क्या हुई? Deep ramp position still वोरो ने एक किल लिया। just dropping one with it. डैम क्यों एक 𝙇𝙄𝙆𝙈𝙈, नंबर। the demon on ramp has just tucked down beneath. He's going to Oh. catch the second off guard. Pong is still able to cross. आहा 2v1 ओ जीजी 3v5 कन्वर्ट कर। Flanks all the way. छी ब्रो छी छी। A moment of glory for Monty as they will. जी भाई जी blast.tv within you guys when it came to nuke. They got ब्लास्ट वाला मैं राउंड देखना। Electric mid hit coming out of pain. We've got नहीं नहीं 20 इतनी पीछे नहीं। That's a beautiful down to. I think with frags and 𝙇𝙄𝙆𝙀 again as one of the lowest fraggers overall in the past. The CT. Why would you burden someone? ये वाला Mirage is still ये वाला वापस से देखते हैं। very much, but we've already seen what Monty can do in these mid-round Man, moments, and the don't- call is great again. Yeah, look, the double stack into B. We can see all the T's on the map looking towards B. SDY actually I love pushing that. upper as हो well. गया I फिक्स love हो गया that he इजी drops his मॉन्टी भाई nades, and he यस। goes for info. Oh my god, they just have so much information. And now Aro with shutter खेल SDY's push, they don't have to overcommit on the ramp. They know Pain are in middle at this point. Even though it's 3v4, look at the कनेक्टर जाना बहुत chaotic हो जाता है अगर तुम्हारा बंदा और कहीं नहीं आ रहा है। But that deep ramp position, still 𝙎𝙆𝙈 decides to go, just dropping one with him. 𝙇𝙄𝙆𝙀, the demon on ramp. मैं तो प्लेयर्स has रिएक्शन just देखना। tucked down भाई beneath. He's gonna catch the किस second टाइम पे off नीचे guard. झुका भाई वो? Pong is still able to cross. जैसे उन्हें रैम Here क्लियर it करने के लिए आ गया है। Soldier of sacrifice, some 𝙤𝙆𝙆𝙀 flanks all the way and calls a glorious game versus Pain. इनसे A moment हो गया भाई पिकिम हो गया भाई पिकिम इज डन। मोटा भाई जीत गई यस मोटा भाई जीत। आ जाओ खेलने आ जाओ। हो गया शटर पिकिम शिकिम और शटर 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 बंदी लीड करी। 4J ने तो टट्टी करी पोटी। मॉन्टे ने तो निकाल लिया, अब लिक्विड निकाल लेगा। माउंटे पे तो था भरोसा मेरे को। भाई फर्स्ट मैप देखा था तूने? फर्स्ट मैप तो उसके बाद भी था भरोसा। फिर उसके बाद तो बहुत बुरा मारा। बहुत बुरा मारा भाई बहुत बुरा। फिर थर्ड का तो तू नहीं देखा होगा, मैं था नहीं। क्या करना है मैम? आ जाओ एक गेम आ जाओ। कारतूस क्या खेल रहा है? कारतूस वैलोरेंट खेल रहे क्या? बीस्ट का है? बीस्ट आ रहे क्या? बीस्ट क्यों नहीं दिख रहा इधर? ओ बीस्ट कारतूस वैलोरेंट खेल रहे क्या? कारतूस कारतूस तो दिख नहीं रहे। सन्नी कुछ भी नहीं कर रहे। सन्नी तो आ जाओ फिर यार। चलो हो तो गया। पिकिम तो कंप्लीट हो गए। अब मैं फेस को डाल दूंगा उसमें 3-0 में। नहीं 3-0 में नहीं डालूंगा इसमें। फेस को डालूंगा नीचे। वाह मैं एक्साइटेड। बच गया भाई, बस बच गया।
अच्छा ठीक है, समझ गया। अंडा भिंडी बन जाती। अंडे भिंडी। अंडा भिंडी बन जाती। होके ये क्या होके आ रहा है क्या? अंडा भिंडी। हाँ बता दो इधर इधर। आ जाओ आ जाओ। उनतीस फ्रेम ठीक है। अब ठीक है। पेरे पेरे। पीएस स्टाइल्स इसको बुला लेता हूँ। कौन है रे? जा समझदार है बीच तू। मेहनती समझदार। मजा आएगा। हमें नहीं आएगा। ए हेलो ईवान भाई क्या हाल है? इससे अच्छा तो वही बैग को बुला लो खेल लो। इसी को लेके चलता। क्या शटर? ओ शटर 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 शटर। हर 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 चट 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 चट। अब ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ये लोग देख लो। कैरी नहीं किया ना बीच तूने, तेरे को एंड में किक कर देंगे ठीक है ना? देख रहे अब तू तेरे हिसाब से। हर 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 हर। शादी के कार्ड नहीं आ रहे यार। मम्मी शादी के कार्ड नहीं आ रहे क्या? शादी में खाना खाना है। बहुत दिन हो गए पेट खराब नहीं हो। कौन है? डिस्कॉर्ड पे कौन है? हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई। ओ हो भानु ये क्या हाल है? भाई बढ़िया से। तबीयत कैसी सी आपकी? ठीक ठाक। 19-20 20 की 19 19 अरे यार मेरे वो ओवर चली गई। एक तो बहुत ड्रीम से नेट में ड्रॉप हो रहे हैं। कितने रुपए का ड्रीम से नेट में? 200 किया था ना, 100 आ गया क्या? 99 गया था। 116 आ गया। फिर 51 भी गया था वापस। अबे किसको बुलाया था? मैं चले ही गया। हाँ उसने देखा ना डेस्टू नहीं लगा हुआ इसलिए चला गया। ते पड़ोसी को बुला ले किसी को, मलेशिया वाला। मलेशिया वाले को ही बुला लो। अरे कारतूस ऑनलाइन थे यार यहाँ पे। कारतूस पता नहीं कहाँ चले गए। कोई अच्छे बंदे को बुला दो।
वो कर दे तो रैंडम आ जाएगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है। बीच में कोई आ जाए तो आ जाए। 16-8 ओसामा बिन लैगिंग 16-7 35-20 क्या किल्स है भाई मेरे, इंसेन ही हो गया मैं तो। कब हो रहा है T2 भाई? अभी तक T2 का CS2 कब आ रहा है? PS2 भैया मेजर के बाद आ रहा है, जिस मेजर खत्म होगा ना जिस दिन, उस दिन रिलीज हो जाएगा शायद, या तो उसका ओपन बीटा रिलीज हो जाएगा या सीधा स्टेबल वर्जन रिलीज हो जाएगा। अब खत्म होगा 23 तारीख के आसपास हो रहा है शायद, 13 से 23 है। यही वाले 23? हाँ आई थिंक, हम तो अगले महीने तक आ जाएगा। हाँ यूँ मान लो। जून 22 को बोल रहे हैं रोहन भाई कि जून 22 को आ रहा है। व्हाट इज योर सोर्स प्रूफ? कौन है रोहन? इनसाइडर है क्या? पता नहीं, गेमन का छोटा चाचा लग रहा है। बताओ तो सही रोहन भाई, कहाँ से सुन के आए आप? ये मैच भी नहीं मिलता साला 4 मिनट से पहले, ये अलग ही शटर। कोई और खेल रहा था। मिंग्स बैठी तो ऑनलाइन, लेकिन मिंग्स के FPS नहीं आते कैश में, और डस्ट 2 आप खेलते नहीं। 5-5 कॉम्प में मिंग्स, अच्छा तो बरोबर। मिराज हाई FPS इसमें आती है ना भाई। ये मैप क्यों नहीं मिल रहा भाई? मैप मिल जाए भाई, एक मैच खेलना है फिर हम लिक्विड का देखेंगे मैप, लिक्विड की लीड देखेंगे फिर। लिक्विड टीम HLTV.org। इक्कीस 21 कितना होता है? अभी स्टार्ट हो रहा है क्या? ठीक है, ये मिल रहा भाई। डस्ट 2 भी डाल दो, तो 5 मिनट 10 सेकंड बाद डालूंगा मैं डस्ट 2। 4 मिनट 20 सेकंड में यूजुअली कैश मिलता है, तो वी विल वेट फॉर 4 मिनट 20 सेकंड। भाई बक्सी खोल दो क्या? क्लच केस, गामा केस कितने का हो रहा? गामा केस 182, 182 रुपए का ही है। 15 अप्रैल को 270 रुपए का था। उड़ी बाप रे, वापस ऊपर जाएगा लगता है, वापस ऊपर जाएगा। खोल दो। ओ हनी नो मनी। क्रिश भाई लगा, बोला था ना मैंने, 4-5 मिनट के बीच में मिलता है हमेशा कैश। मिलेगा इतना खेल लिया कि वेटिंग टाइम ही पता पड़ जाता है।
ये अपडेट आएगा सीएसगो में, अलग लग रहा है तो अलग लग रहा है? क्या अलग लग रहा है? यूआई चेंज हुई है। नहीं तो कॉर्नर आ रहा है, मतलब कॉर्नर राउंड कॉर्नर हो गया। सब में स्टीम भी चेंज हो गया, खुलना। वो तो करवाया है ना मैंने, वो तो बीटा अपडेट है तो विम्टिकल से बोल के मैंने ऑन करवाया था। सबके लिए नहीं आया? सब के लिए नहीं आया, जिसने बीटा पार्टिसिपेशन कर रखा उनके लिए। बग्स हैं इसमें दो चार। क्या रैंक आई भाई, क्या रैंक आई बानू भैया? इसमें तो 30 किल दिला दो यार आप। 30 किल नहीं भाई, 30 का आराम से टीम के। मैंने 500 प्रिज्मा लेके रखे थे, 30 रुपए के बेच दिए कि पड़े हुए कितने के प्रिमजा के सभी देखे। अरे क्लैन टैग किधर में? प्रिमजा केस 30 किल मार दो मानो भैया, मेरी तरफ से पार्टी है। पहले रैंक बता। बहुत कम रैंक है, बहुत कम। प्रिमजा केस 52 रुपए के चल रहे भाई भाई, वो भी 70-80 के पहुंच गए होंगे। 70 थे, 75 तब बेच देते भाई। 500 इंटू 70 रुपए का फायदा हो जाता तुम्हारे। 50 ही मान लो एटलीस्ट, 15% कट के। निकलने नहीं दे रहे बाहर भाई। 500 इंटू 50, 25,000 रुपए का फायदा हो जाता भाई। सही है भाई, अभी 25 को। चलो मानो भैया, गोल्ड लो आए सारे, गोल्ड लो आ, ठीक है। 30 किल मारो इनके बीच में, नाम पढ़ो ना उनके। अरे आप घूमो, आपकी मर्जी है। 100 के हो गए थे। अच्छा बेचे कि नहीं बेचे फिर, कि लालच में नहीं बेचे रोहन भाई? चुप रहे मत बोल। कौन बोल रहा है? अरे मैं चुप, कोई बोले, उसकी आवाज ही नहीं आ रही यार अपने बंदे की। भानुविया का पीओ ला, भानुविया कमान, आपका ही चांस है। 1v4 नहीं बेचे, सैड। लालच बुरी वाला रोन भाई के बाद नहीं, CS2 लॉन्च पे भेज देना। वन वे टू भानुविया क्लच इजी, एक लो है उसके सर के ऊपर क्यों मार। नाइस भानुविया, गोल्ड लूंगा भानुविया। देखो ना प्लांट, देखो कौन सा प्लांट करके कहाँ घूम रहे। कोई नहीं, फोर्स पे करो। दिन बाद खेला। आप बताओ आपको गन कौन सी चाहिए? टीगर लिया मैंने। कोई गन वन चाहिए तो मांग लेना। वाला टैग मिड वाला 83 टैग। ये साइड पर आगे 73 टैग है मैंने। 73 शटर 73। एक 83 एक 73। हाँ राउंड निकाला, ये लो वन वे की, चलो ये लो। अरे होश में ये ओपन नहीं आ रही मेरे पास, आर्मर गलत बैग ले छोटा वाला। 550 रुपए का, 350 रुपए का आर्मर बैग। वो नहीं, ये वाले गन चलाऊंगा मैं। ऑरेंज हेलो, रैंक अप है ऑरेंज का आपने। नहीं नहीं, ऑरेंज की भी अच्छी रैंक है। ऑरेंज भाई क्या हाल है?
बढ़िया होनी चाहिए भाई। कैसे हो? मस्त वेदांत भाई, आप बताओ। पूरा गेम में इससे खेलता हूँ। कौन सी गन है? MP7 से खेलूंगा पूरा गेम। देखते कितने किल ले पाता हूँ। ओए इस पे मार की जाइए यूपी, ठीक है? मेरे मुंह पे आनी चाहिए गन। अबे तू बाहर जाके वो भी लिया था, कौन के पैकेट? मैं बाहर जाऊंगा तो ले आऊंगा ना, बाहर नहीं जाता ना मैं। हेलो ड्रैगन भाई, बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया भाई। मैं तो, आप बताओ। मार दे यार बीस्ट। भानु भैया ये दोनों है गन। एक तो अच्छी रही यार बन। हजार्ड एक ही लाए थे के क्या? हाँ एक ही लाए थे। एक वाले ने एक टैग नहीं दिया, वो मैं ऊपर में बैठा था उसके सामने, उसने स्पॉट भी कर लिया। वाइट स्विंग करा, लेफ्ट स्विंग करा, राइट गया, लेफ्ट गया। बूस्ट वाले को मारा ना तूने? हाँ दो दो बंदे मारे वहीं पे। कौन जीतेगा टीम मेजर में? G2 वाइटलिटी या हीरोइक? हीरोइक नहीं जीतनी चाहिए। सम्राट भी बूझ दो ना सम्राट भी। रुको रुको रुको, फ्लेम से फिर दबा के बूस्ट लेते हैं हमेशा, और ऐसे मिस भी नहीं करते। खुद ही नहीं ऊंचा कर पड़ा तू। सम्राट भैया की पर्ची कट गई है। 45 ओए 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 ओए, तो किसने टैग दिया? टीबेस क्या कर रहा भाई? इवेंट्स आ गया। एक टीबेस दिखा मेरे को। ये देख, एक चेकर है। 45 टैग है। मेरे पास बॉम्ब है। उनसे बोलो बॉम्ब भूल के बोलो। 45 टैग है। अंडर है। चुप रहे ना भाई। भाई रिपोर्ट कर दे इनको टॉक्सिसिटी के लिए। भाई अपोनेंट टॉक्सिक हो ना और तुम्हारे सर दर्द कर रहे हो तो CL म्यूट एनिमी टीम 01, ठीक है? और अगर तुम्हें सर दुखाना है उनका तो तुम्हें ना सेम यही चीज करो, CL म्यूट टीम 1। और हर राउंड जीतने के बाद या हर राउंड हारने के बाद इजी, नूब, टट्टी के पैकेट कुछ भी लिखते रहो, बस लिखते रहो। वो जो भी कुछ चीज लिख रहे हैं ना, इग्नोर एवरीथिंग, इग्नोर। उन्हें लिखा तू नूब है, इग्नोर। तू बैन का लोड़ा, इग्नोर। एक एलीट बिल्ड ले ले, कुछ खास नहीं है। और एक 3 से 400 की रेंज में स्लेट ही है भाई। सही कह रहा है, स्लेट पे स्टिकर चिपकाने पड़ेंगे। चिपकी भी स्लेट पे चिपके हुए स्टिकर लो ना। ये कराम्बिट है, लो एक काम करो, कराम्बिट का प्राइस ड्रॉप होते जा रहा है। हेड का लो, 75,000 का हो गया बहन चो, 90,000 का था। फिर आ जाओ वापस। ओ भानु भैया बूस्ट, कहाँ आ रहे हो? इवेंट साउंड है कि
Orange one guy B1. खड़े होना पड़ता है भानु भैया, बड़ी जल्दी नहीं हो गए, खड़ा हो। आ रही है किसके माइक से आ रही है, कौन क्या कर रही है? MP7 से खेले सन बेक्ड। अच्छा ये तो अनुबिस कलेक्शन वाली है, मेरे को लगा डिफॉल्ट पड़ी हुई मेरे पास। चोर साले, सबको टैग दे रहा हूँ मैं। पिछारे आगे पिछारे। तुम लोगों को क्या लगता है कौन जीते? क्या ला के रख लोगे? बीमन 5 जने, पांचों बीमन। ओ भाई छी, भाई फ्लो में चलाते ना, बस तो करने लग गए। अरे मेरे को लगा मर गया भाई वो। नंदू में क्या कर रहा है? कुछ तो कर रहे वानु, क्या कर रहे वानु? वंडी वंडी सनरूम था ना, हम तो दूर ही होता। साउंड भी है। MP7 ही चलाऊंगा इस पूरे गेम। नीचे ऑफ भाई, ओनली दिस। उनको बॉम्ब डिफ्यूज की साउंड नहीं आया भाई। चेस्टनट्स बाय ब्रेस्ट नट बाय गोल्ड नोवा विद गोल्ड नोवा नेम। नहीं यार, इस गन से नहीं होगा, बहुत दूर है। SPD क्लैन का भाई वो, SPD इमरजेंसी। पावर रेंजर सब है SPD इमरजेंसी। क्या कर रहे हैं आप? क्या हो रहा है ये? कौन सामने वाले? बहुत लो है। वो किल हिम ब्रो। अरे बॉम्ब ये रहा भैया, बॉम्ब ये रहा भाई जाके मार दे उनको, नूब है स्कूकी के सामने। अपना बंदा स्कूटी देख रहा है, मैं ऐसे मर रहा हूँ। क्या करें मानोगे? रिपोर्ट दर्ज करा दो। ऑफ ही चला रहा मैं, वो सड़ी गन तो नहीं चल रही मेरे, पड़ ही नहीं रही उससे एम महज की आंख। वो पुलिस CS2 आने पे ऐसे गोल्ड लूंगा तो नहीं मिलेंगे। ट्रक पे खड़ा भाई, इतना तो पीक ले ही सकता हूँ। इतना तो पीक ले ही सकता हूँ यार। तो पीक ले ही सकते हैं। क्या बीच में रश क्यों नहीं कर रहा तू? मैं सिखाता हूँ तेरे को।
मेरे पीछे खड़ा रहियो, मारियो मत जब तक मैं बोलूँ नहीं, ठीक है? ओ बीस्ट। ठीक है ठीक है। अबे भाई उलझ गया दीवार, बी प्लांट हो रहा है। 90 टैग है एक बंदा। क्या कर रहा है यार, क्या नूब। ये डर को पकड़ लिया। 87 टैग है, 1v3 क्लच। न्यूरो ब्लास्टर 87 है, चेक कर। नाइस। मैंने दिया। हाँ तो एक बंदा थोड़े बचा भाई, न्यूरो ब्लास्टर नाम भी तो बताया मैंने आपको। आपको तो म्यूट कर दिया शटर को। अबे इतना तेज आ गया, भक्के आगे। भाई 90 टैग था वो टोपे। अरे तू इतना तेज आ गया हमसे भक्के। तो मैं भक्के पीछे कहीं के लिए आया? मैं मच्छर से थोड़ी डर गया। ये देख बानू भी डर गया आपसे। अरे क्या खेल दो बानू को। अरे इंसेन ही हो गया। हो रहा। अरे गैराज बानू भी है, गैराज बीमेन बानू है। एक बोल्ट बानू है, एक बोल्ट भाई है। उचक ले तू, ऐसे उचक ले। ये कर लो पहले। गया क्या मारता रहेगा क्या देखो। क्लच ऑफ द ईयर बानू भी है। एमिन प्लान कर रहा होगा, जाके मार दे। यही गलत कर दिया तूने। तो 6 फुट का है, 7 फुट का नहीं है। कह रहा हूँ भाई, 7 फुट के हिसाब से लगा रखा तूने। मर गया। एक बार टैप करो और ए में लगा लो। टैप करना पड़ेगा आपको। नाइस ट्राई बोलना चाहूंगा बानो भैया मैं आपको। ऑफ देना 20। मैं भी कह ही रहा था। 20 टॉप दिया। 20 ड्रॉप दिया। 20 टॉप दे। ऑरेंज भाई ऑफ दे। ऑरेंज ऑफ दियो भाई। ऑफ ऑरेंज ऑफ। बढ़ गया ऑरेंज तो नहीं सुनना मैं। शटर 2-3 जने देखा मेरे पास। 48 है टैग। 3-4 मारनी थी तो मालूम है आपको। बॉम्ब उठा ले साइड से, एक फोरक्लिफ्ट साइड लेफ्ट साइड। छी यार ऑफ द बीच टेक। अबे ये क्या भाई होगी हैंड की भोसड़ी भाई। ये पड़ी है पीछे।
चूतिया चक्के आता है एक भैया, चेक कर देना आप। अब वो चक्के नहीं आया था। Useless है भाई। हाँ बॉम्ब है मेरे पे। दूसरे अल्लाह चाहिए आप क्या हो गए सर पे कि मिस तो मार दे। प्लीज मारो ना। मार दिया ना तेज पूरी टीम ने, ज्यादा ही मार दिया। मैं छोड़ दिया। ऐसे जब टॉक्सिक है तो उनको गाली बकते रहो। तो फ्लैशिंग भी क्या है आ क्यों नहीं रही। छुपा छुपी खेल। नाइस सेट है। टाइमिंग हो गई, मैं बूस्ट देखा 1% और वो आ गया। 1% ही देगा आपने। 1% कैसे देखते हैं? एक एयर भाई आया कोई नहीं आ रहा और तू भी कह रहे कौन सा ट्रायल चल रहा है। साइट है एक भी बॉम्ब नहीं है भाई इधर आ गया। नेवर माइंड साइड पे बॉम्ब ने प्लांट कर दिया। अरे नहीं हेडशॉट है। और बचिया एक बचिया एक तो बचिया मजा आ रहा है भाई मेरे को। भाई स्टार्ट उसने किया था नहीं पूछा करके। एस्केलेट मैंने कर दिया।
पे पे पी पिरी पिरी पिरी। बी मैन है। कम ऑन पीस। डबल डिजिट तो हो यार, ऐसे क्या कर रहा हूँ? ऑरेंज कहाँ कहाँ खड़ा हुआ है? फ्लैशिंग मिड बूस्ट पे खड़ा हुआ है भी। मिड ऑरेंज। ए मैंने ए साइड हो सकते भाई। मार वनडी, इसको नाइफ कर दे, मजा आ जाएगा ब्रो, नाइफ कर दे। लूडो की डॉट को वाइपर भी कर दिया भाई। मस्त भाई, मस्त भाई, मजा आ गया भाई एक नंबर। भाई उसने टॉक्सिक होने स्टार्ट किया था, उसको मिल गया जो मिलना। पेरे पेरे पेरस करते हैं जो। ए शटर रहा हो ना, पीछे का है, रह जाते बे। चेकर हो सकता है, चेकर एक साइट, एक साइट, साइट एक शटर, साइट एक साइट, साइट एवन एक बीच आया बीच। चेक ये क्लोज क्लोज दोनों क्लोज। सी बीस्ट इसका सिल्वर प्लांट है। बीच का एडमिरल था। अच्छा भानु भी आते क्या? मेरे को लगा बीस्ट है। कौन बीस्ट? सिटी लास्ट। सी भाई, सिटी सिटी लेफ्ट साइड हाफ एचपी। नाइस ट्राई। लूडो किंग डॉट कॉम सेम गेम खेलेंगे, लॉबी बना लो भाई। न्यू की इन्फर्नो कुछ खेलो भाई, फिलहाल तो उनका मैच देखेंगे यार। अबे हाँ बे, भाई वैलो आईडी मांग रहा है भाई। हेलो आईडी क्यों दे लेना हो? लूडो किंग लाइव डॉट कॉम। अबे मैं बंद होगी भाई, नहीं चल रही इस पे। एक सैंडबैग्स है। दे बैंड से कौन सा बट चिकन। नाइस यार सर। एक और बटर चिकन। बिग ब्रदर ब्रदर अल ब्रदर। दो सिटी। ओ उड़ गया। हेवन लास्ट। क्या पड़ा भाई उसके सीटी वाले के? लास्ट भाई कितनी गंदी रैंक से भाई तुम्हारी।
खुद फोकट तंग करते रहो भाई दूसरों को। कर गया है। तो चेकर डालो ना। क्या फेंक रहे हो? वो जल गया वो। 7 आए। सिटी 7। Come on, which one, Dick? ठीक है। लेफ्ट साइड बैठा है क्या नैपकिन में? पेटी में। रुकियो। I don't think बैठा। कहाँ गए भाई? ओ भाई ए साइड ट्रक। ट्रक पे भाई ट्रक पे। दूसरे किधर? ट्रक पे जाना मारना। ट्रक पे ला। कहाँ था? ट्रक ही था? हेवन में था तो। हेवन क्या कर रहा चलती? चलो खेल के खत्म करे यार, जल्दी खत्म कर यार, 2 राउंड बचे। बीच तो मारना, छोड़ इसको, मार उनको, खत्म कर। अपन वो मैच देखना भाई, इम्पोर्टेंट मैच आ रहा है। यार गंदा स्प्रे ट्रांसफर, एक भी बुलेट नहीं पड़ी उसके, एक भी बुलेट नहीं पड़ी। कमान मानो भैया, 30 किल, ओनली 29 लेफ्ट। 19 आई मीन 1 टैप आने में। अरे मारो मारो यार, आपके साथ शार्प शूटर बस स्मोक के लेफ्ट में दिख रहा है आपको। ट्रक गया, ओ वहीं पे था। 1v2 इन द क्लच। भानु भैया, क्या भानु भैया कर पाएंगे? 1v1 यहाँ पे। ओह माय गॉड, इनसेन रिएक्शन। भानु भैया क्या खेल तो यार। हो गए जीत गए भानु भैया, हो गए 30 की। एक सॉफ्टी मेरी तरफ से, एक डेयरी मिल्क मेरी तरफ से। डेयरी मिल्क तो खा सकते हो ना भानु भैया? हम जाके 30 रुपए वाली भी मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ। सब खा लेते हो? चिकन मटन खा लेता हूँ, बाकी पसंद नहीं है। खा लेता हूँ लेकिन पसंद नहीं है। ठीक है, बंद कर रहा हूँ। कौन है? बहुत ही क्लोज बैठा, फिर एक को नाइफ जाके काट। क्या करता है? चलो खत्म। चलो भाई उसके सामने बैठ के काट रहा था। क्या रिपोर्ट करेंगे। करना भी पड़े, इतना मारा है बेचारों को फोकट। चाहे गोल्ड माते उनकी गलती नहीं है, लेकिन वो बच गया ना। जब उसने बोला था ना, क्या बोला था उसने, नहीं पूछा लौड़े, तो मैंने कि थोड़े मजे ले इनके फिर। ओह माय गॉड, GN4 ये 17 किल पे 21 किल से ऊपर क्यों है? कौन सा ये किल आया ना चौथे स्थान पर। चलो शाबाश, अब हम देखेंगे इन्फर्नो। Anubis competitive. Pressure, like just instantly dropping Molotovs, worrying that they're going to get flushed out and pushed. So this is where Greyhound. Yeah, अब ठीक है। Sees it's not occupied and actually elopes back out of it. It's not part of his play just yet. तो जा रहा हूँ मैं तो। Bye bye. They
took a lot of resistance over towards the B site, getting blocked, a lot of nades. हाई before उनका है force by It's not a 2-1-2. There's a chance here to exploit middle, and they will. 3B पे लोग rotate कर रहे हैं, सही है. Good calling from Liquid. Fast कर लो Liquid. अबे Z. अरे यार. Hard to clear, and Liaz and VACEIT will combine on the A defense. अरे एक नंबर एलिश. अरे यार almost. Alistair silences him, but it was a magnificent double. Nice second. 2-2. 2-on-2. Ins, he knows he's still got the bomb. Nitro disadvantaged on the ऊपर नहीं चढ़ सकता क्या? to the head could certainly finish Alistair's day. चढ़ तो सकता है. Ykinda the healthiest of the two. 20 seconds pressure on them to clear this out. Alistair the bait. That's one. Ykinda to clutch. 16 सेकंड है. Alistair, he's going to be way behind. सही है भाई. Find a rifle. Yes, he does. Equipped with a kit, but not the health. He has managed to find an AK at least. गंदा एंगल यार. ये एंगल नहीं बैठता यार. Glorious corner, we call it Goblin. अच्छा ये वाला. ये तो बहुत बहचोद का एंगल ये वाला. A good read, and it's likely a headshot. Alistair jiggle. गॉड यार. He just walks out straight to the head. Ykinda secures it. And he is such a safe pair of hands for Liquid. Finds himself his 9th. Nice round. Talk about even kill अबे फिर भी पैसे देख. इनके पास देख. कितनी साइड वालों के पास पैसे देख भाई. Lagging behind of Ykinda, so 8 from him. It's just the eyes of Naf, who usually comes more online on that CT side. Almost यार. For Liquid, this is going swimmingly. यार उनका भी को आ गया. बी जा सकते हैं लोग. Unless बी स्टैक कर ले. वो बी स्टैक नहीं कर रहे. अच्छा चांस है. इंस्टा मिड स्मोक करा. ए के बाहर. ओ देख लिया. अरे नहीं देखा. व्हाट द फक. वाह बे. यही था बस कि यही नहीं होना चाहिए था. नाइस ना. एक नंबर. अरे उनका भी फोर्स था क्या? एक ही मत लेन दो लियाज को भाई. फ्लैश. नाइस फ्लैश. ऑलमोस्ट एलिश. And so this advantage again for Greyhound, can they convert? Alistair started with a bang. दोनों वहीं पे. But Naf no stranger to a clutch, especially when he gets the time and the space to work it out on his यार ये तो अच्छा दिमाग लगाया इसने. हाई ग्राउंड में लगे इसको अगर मिड से गया तो. अरे यार ये देख रहा है. अरे एक नंबर. देख तो सही रही है. Recovers himself a rifle. No armor on that. Has to be the first to pull the trigger in this one. Sound cue required here from Naf. अरे राउंड निकाला यार. राउंड निकाला. Another clutch for Liquid, and Greyhound in one half alone have just been kicked down in the. कितने क्लच कर रहे हैं? 3 क्लच कर दिए क्या? 2 तो मैंने देख लिए 2 राउंड में भाई. You can see it coming though, can't you? In a lot of these rounds, of just how they're going to fall apart. Like In's just searching, feeling like he has to do absolutely everything in the round. Like in a lot of these scenarios, it's either too quick or too disjointed. It's the inexperience of Greyhound showing time and time again in the class of Liquid. And some smiles on the faces. I'm sure they cannot believe just how many clutch situations they are getting to rob away from the Aussies here. कौन खेल रहे हैं इनकी टीम में? अच्छा. And this is the इनकी टीम में भी सब ठीक खेल रहे हैं अभी तो. भाई ये सबके इवन खेले यार. 7-9-6. यहाँ पे भी 7-5. नाप के 7 किलो है भी. 3 किल लेना नाप ने इस राउंड में. एंट्री मारी भाई. कितने पेज है भाई. सेमीफाइनलिस्ट फेसिट लंदन. क्वार्टर फाइनलिस्ट बर्लिन. क्वार्टर फाइनलिस्ट कैटोविस. ये वाला राउंड जीत जाती ना ग्राउंड तो उनके पास इकोनॉमी अच्छी आ जाती ग्राउंड के पास, क्योंकि उनके इको था आ गया था. और दूसरा इनकी इकोनॉमी डाउन हो जाती तो इनका लिक्विड का इको होता है ये वाला राउंड. अबे डिफॉल्ट स्मोक तो कर लो. मॉली तो कर लो ये पोजीशन.
This little crawl of Elysian Yakinda, it is deadly. These two, absolute aimers, absolute gamers. He just looked away, and upon the repeat, VACEIT with him at least to combine. Not for long. Tries to get the incendiary Has to down. play ahead of They it. will start to try and channel them. And actually, wow, that's a forward position. VACEIT, he only gets the one. Loses his life off. एलिस के पास भी गया Command advantage for Liquid, albeit by a little Nat's wing, 5 HP or an AF. All on Liaz. Rotation's too far away. Yes, he does deliver on the first. Yes, He's down 2, that's the bomb, that's the double. To give रोटेट नहीं कर सकता just to put the fourth on the board. Nitro and Naf. Mostly Nitro in this one. Naf's just going to be static, hoping Nitro can give him a little bit of room. उठा लिया बाव Bomb's been stolen here. I'm not sure if they're even aware of this because Elias will be able to creep in. 5 HP में what the fuck That's naughty, and another for Sicko. Caught out as he goes for the trade. What can Inns do now? A 1 versus 2. He knows they're both towards the site. Uncertainty grows. और नीचे वाली पोजीशन कॉफी हार्ड क्लियर करने का जो नाफ खेल रहा है Nitro likely first contact. स्पॉट हो गया ओ 1v1 गलत नेट Oh, it's a bit shy on the money. Could have been miraculous. Now wide, and that's the end of that. 9 in the bank for Liquid. अभी करते हैं यार One that you could probably chalk up to Greyhound feeling a little bit well played यार pressured. Liquid इको आ गया फिर से उनका not afraid of Greyhound, right? This is one of the factors. नहीं फिर भी तुम इकोनॉमी देखो हर बार है ना उनके कितने लास्ट 3 राउंड से एक बंदा और 2 बंदे बचे हैं तो उनकी इकोनॉमी देखो ओसी के पास 3400 रुपए थे सिर्फ उसको ड्रॉप मिला है ओसी का है किसकी एके मिली है निकाल एके निकाल ओसी एके निकाल टोपे निकाल नहीं रहा and some heavy hitters, and they are on the comeback trail right here and about to run into what is, well, essentially an empty site unless Liaz has something to say. Yeah, that nade's alright. Doesn't do much. 3 members of the squad. They just bulldoze their way in. एलिस तो गुस्से में है आज भाई And the fact that Yakinda, just because of finances, fancied himself just a P250 in this one. He knew they were going quick. अच्छा इसने बाय ही नहीं करा एक अंदर कौन सी ओसी के पास है नाफ की एक है क्या स्प्रे करता है एलिस लास्ट वाला किल दिखाता ही नहीं ऊपर and it's the ifs and buts and what could have been of this first half of play in what is a pressure match for both teams. Yeah, 3 rounds have come down to those 1v1s and every single one going Liquid's way so far. Of course, there is that one we just witnessed as well, where 2 were left standing for Liquid. All of these close, up for debate rounds going Liquid's way, whether that's experience prevailing, whether that's nerves consuming. Greyhound, it just depends on how you want to frame it. They haven't even been struggling that bad in the opening kill department. They've been able to get a total of 4 so far. I know that's not great, but this CT side is very difficult here. So 4, not too shabby. There's still grounds for that 5. That changes, of course. But right now, best opportunity to find another. You got your AWP in action. Alistair's been top mid smoke. Yeah, with some assist. Dealing smoke. Get out. भाई कैसे निकल गया आगे पता ही नहीं पड़ा I'd say surely. We know how these are going. Naf's got the first here as part of this 2-on-5 situation. Just 4 more now, and well, apparently Greyhound players are only worth half. Come on. That bomb. But look at it again. They all rotate. Bomb नहीं देखे इनने. Right, so they've given up full map control. On the clock. They don't know what territory they've lost, which means they're going to be even more worried about it than traditionally because they've been rerouted on so many times. I don't know if Liaz. How aware is he? Does he know the bomb is right in front of him? OC. As long as his barrel's not spotted, I guess OC could just retrieve it and walk away. Yeah, and this isn't the first time they've done that. Oh. And this is just a freebie. So now the map is completely open. 35 seconds left. The bomb's gone, so they're hoping if they cut noise now, with the bomb gone, eventually, upon a jiggle, Liaz will be missing. They're going to call that clear, which will... it's going to open up the rotation. Yeah, and they're hearing all of this. You can see how it's going to go wrong, can't you? Oh, no. It's just Liaz on the site. Has to be playing this very smart. A headshot compulsory from Liaz.
अरे निकाल Should be the round. It is the round. No time, no hope for 𝙈𝙈𝙈. Finish him off if you dare. अरे 3000 रुपए मिले इसके शिट ऐसे ही नहीं मिले एक भी एक को आ गया लास्ट राउंड फोर्स बैक करना पड़ेगा लेकिन लास्ट राउंड You can see what I'm talking about, right? And there was even theory behind what they were doing to flash to set to clear, but they don't know what lies on the other side. So ऑलमोस्ट हारे गए थे लोग ग्राउंड करके रहे कि बाकी टी साइडेड मैप है किसका पिक है ये भी नहीं पता प्रोबेबली लिक्विड का ही होगा क्योंकि टी साइड खेल रही है So this was going to be a difficult one. Aggression on mid, a whole lot more pace to this. Yeah, felt good. नेट दिख तो अच्छा रहा था गया का नेट लियाज ने रुपएगा 11th round. Oh, you see, look, dump of the util. Gets it out ahead of the Akon molly. That's smoke. There's no way Liaz knows how good or bad that is. And yeah, check this out. Yakinna's going to try and one way on that ledge over the top of it. Yeah. फिर भी मार गए Drawn to it and gets a big one. A shot from Alistair back. 4 on 4. Hold on. Hold your horses. Look at this pull. They're picking up. The bomb's going B. Looks like save him. It's a अरे lovely Sicko, but into B. Oh, he nearly caught them both. So much damage dealt. Maybe Sicko could get the side. The setup was there. From that MP9, the spray just shy. And bomb's going down. Alistair doesn't have the weapon or the position for this round. भाई तीसरा बंदा कहाँ पे So low. Less than 70 between them all. If you could just get through. तीसरा बंदा किधर है इनका वो सिटी में नाइस राउंड यार ये वाला राउंड भी कन्वर्ट कर दिया भाई इनने इतना अच्छा किसका मैप तो देख ले HTV यार एक तो ये वॉइस स्किल वॉइस एनेबल 0 ओके लिक्विड अनुबिस ग्राउंड पिक इन्फर्नो एंशिएंट लेफ्ट ओवर ठीक है अच्छी मैचेस ठीक है चलेगा कौन कौन नहीं खेल पा रहे इनकी साइड में सब खेल रहे हैं सब मार रहे हैं आयनस अच्छा खेल रहा है सब ठीक खेल रहे हैं राउंड से होंगे भाई ये कौन सा है सेमीफाइनलिस्ट अच्छा लियाज तो 100 थीव्स में था ना पहले एजर वगैरह के साथ एजर जेकम ग्रेटिस्फैक्शन नहीं ग्रेटिस्फैक्शन की जगह आया था लियाज है ना JKS और एक और था यार 100 थीव्स में एजर JKS JKM कौन था भाई ग्रेटिस्फैक्शन से पहले कौन था वो था ना क्या नाम था निफ्टी था निफ्टी तो ठीक है निफ्टी तो रेनिगेट्स के टाइम पे था निफ्टी लेकिन निफ्टी भी ऑपर था इनकी टीम में एक और कौन राइफलर था किसका नाम बोल रहा हूँ 100 टीम सोल्ड रोस्टर लेकिन 100 अरे यार एक ही बार में क्लिक होते नहीं गूगल ले 100 years old JKM अच्छा लियाज और ग्रेटिस्फैक्शन एक साथ थे ओके लेकिन लियाज से पहले भी तो कोई था रेनिगेट्स का बता दो भाई रेनिगेट्स था एजर जेके जेकम थोड़े लियाज के साथ ही था एजर जेके जेकम लियाज ग्रेटिस्फैक्शन ये वाला था लियाज और ग्रेटिस्फैक्शन साथ में थे 100 थीव्स के टाइम 19 30 30 18 2015 से थे एजर और जेके भाई
JKS तो G2 में है। स्टार्ट करोगे मैच? बहुत लेट स्टार्ट करते हैं बहन के लोड़। यूटिल किधर है इनकी? टी साइड वालों की यूटिल किधर है? इनके पास कौन कौन से नाम है देखो। स्टार्ट एलीज नाइफ कब से खेलने लगे? वो डिफॉल्ट नाइफ से खेलने लग गया आजकल। मैच पोस्ट क्या बात के लिए? नॉट येट मेट। Yeah, one of the big backbreakers that started off. गुड लक नहीं लगता कोई भी। We are on the first map now. This is Liquid's pick, and this is the last game of the Challenger stage. Greyhound versus Liquid for one single spot. I'm Machine, and I'm joined by Sponge. And yeah, पहले skeleton knife से खेला था। to watch for Greyhound fans, I imagine they got up extra early for this one, or haven't been to bed yet. I don't think they've gone to sleep yet. Yeah, we're right now. The odds favouring Liquid in a massive way, and that's a great way to open up the account here for 𝙈𝙀. The P250 takes down the import 𝘾𝙊𝙈𝙈 in the grave for now. A number of damage, and as we all just saw, maybe not enough. Is 𝙈𝙀 with another? They're still trying to fight. Oh, that's nice. In this mid fight, could be another for 𝙈𝙀. They're jiggling him out. Stunning. He's ready for another one. Check this out. He's actually ready. He knows one might slip through. Corsair, perfect. Bomb आ गया। He's quick to the draw on that USP. Lays him to rest, but the damage is done. How's another 2-on-5 going to feel? Don't call me Shirley. It's not happening. Sicko. Chill your beans. Coming round. Containing an illusion. Manages a long-range Glock tap. Onto OC's shoulders, and he's made mincemeat by FACEIT. So quick, clean P250 on 𝙈𝙀. Now, round. Greyhound had, and this is what we're going to be doing, is just highlighting issues of this team. Yesterday against NIP was their inability to convert second rounds. Yeah, oh god. They were winning pistols, but they were having a hard time converting those second rounds. फोर्स बैक कर रहे हैं ये लोग। इको कर फोर्स बैक कर रहे हैं। Demos at all that they should be force buying. They know they're going into a round like this, that regardless of those 𝘾𝙆𝙈s, they have just as much chance as Greyhound do of winning this round. And this is the round where they're either going to overthink it, they play into it too quickly, or they'll lose the clutch of some variety. So these are the type of rounds that in the upper echelons of Counter-Strike you need to be able to convert. Let's see if Greyhound have this one here. Very direct over towards A. Liquid is stacking A. You can already see how this one can go wrong. Tier 1 team, like to G2 lose second rounds. इवन कंट्रोल एक अंदर के पास है। मिड कंट्रोल कोई नहीं देख रहा, बस एक ये देख रहा है। वन खड़ा है 0 वाला प्लेयर 10 एलीज देख रहा है। एलीज जिगल कर रहा है मिड पे। बाकी तीनों ए साइड पे। That's pretty good. Yeah, I think that's pretty good. That sounds about right from the eye test of how many times we've casted those. बाकी इसने मिड क्लियर कर लिया बैक से। Well, here's one for you now. Biggest issue is going to be time right now. Greyhound boys here, so FACEIT trying to apply a little bit of. ये कैंडर के पास एक और स्मोक है, holy shit. They watched the demo Greyhound of Liquid against Complexity. They actually did a setup where they stacked 4 towards B and 1 towards A. Remember, it was a Liege mid with the Deagle and the other 4 stacking B. So right now, Greyhound's prep is going to lure them into the trap. It's a big one. Are they really walking into the Lion's Den? They have to with 40 seconds. I don't know if there's going to be a reroute. OC distraction. And Nitro as well. चल kills निकाल ली। So that's the mission accomplished. Now this is the test being passed right now with flying colors. So second पहला बंदा कौन था? OC एक किल मारा था ना? I know the scoreline doesn't tell this story, but Greyhound are actually playing pretty good for their standard, all things considered, because a lot of these rounds they put themselves in positions to win. They've started them well, they've had some good ideas, they've hit some good shots. It's the unable to convert and the class of Liquid dismantling them here. एकदम सही कहा चैट ने भाई। He got the taste of the Deagle in the first half, wants to show them how it's done. A tidy one there onto 𝙈𝙀. Yeah, I mean, using that NIP best of 3 as an example, both of their halves, the first really competitive. They got 60 rounds on Inferno, they got, 7 CT rounds on their defensive Mirage. Like, they were having good starts. Should. He might have lost it. He's going to grab it. And that's
that's a great little upgrade for them to take here, because it will be that Deagle drop some pistol upgrades, and he has head armor with the 𝘾𝙆. So Yikinda's going to make a nuisance of himself here, and just staying with Liquid. You look at their run here, if they do win this series here today. I think mid forward जाएंगे या फिर है ना B shot forward जाएगा ये के अंदर ये लेके mid की तरफ feeling जो भी बोलता हूँ उसको बताने मैच mid forward जा रहे हैं. Yep. Yeah, that is a pretty juicy run. Of course, not एक मौली भी आते हैं यहाँ पे पहुंच चुकी है क्या नहीं. Coming into Yikinda here, the flash at the ready. That's the only. Want to take it out of his hands, but they nearly lost ins. दोनों लो हैं. Panic भाग गए भाई. drops. This is the pixel gap I was talking about. You can see a reactive smoke thrown out. I think Nitro's got that one a little. कर गया Nitro. Yeah, there you go. That's one back at least. But the low HP of 𝘎𝙆 and Inns is still a massive issue, considering Yikinda is still lurking. अगर ये Nitro मर गए वो लोग सारे rotate कर देंगे. Be responsible for Dark, and he's not going to be pushing the limits with his USP. We need to turn to 𝘎𝙆 here a lot in a pressure series like this. The desk highlighted it. He's the only player in this team that. भाई ये वाला एंगल भी बहुत insane है के अंदर का जो इसने ले रखा है. ये एंगल देखो तो. ये वाला एंगल. Oh, 𝘎𝙆 who have already made it to that legend stage. 𝘎𝙆 would love to join. And the man on your I think B rotate कर रहा है. अरे of 𝘎𝙆. He even said to him in an interview after a match, he said, B rotate कर. why aren't you taking more space? Why aren't you doing more? You're the most. अब वो लोग ये आएंगे और ये लोग सेव करेंगे. Oh, that's a big shot. That is a big shot from Inns on low HP. It has at least forced this rotation of Liquid to stay with their call over towards B. So 𝘾𝙆 will find this conversion. This is a likely a dead ends, depending on how aware he is. ये मार क्यों नहीं रहा? मार दिया. Low HP. We'll put a rifle into 𝘎𝙆's hands. Oh, hold up! Don't overcook the pooch. वही बोलो. Chill your beans, 𝘎𝙆. Unable to. ले गए दो राइफल ले गए. Yeah, they'll take a round. The 𝘾𝙆s are nice to have next round, right? Comparable with some M4s, I would say. So handy little saves here for Yikinda and. वो दो किल ले लेता ना उसी टाइम पे. और INS ने कैसे किल मार लिया नाइट्रो पे मेरे तो समझ नहीं आ रहा. नाइट्रो था उसी था. I think वो उसी था. उसी पे किसी किल मार लिया वो तो 10 HP था. एक बोल्ट मार देता भाई. उसी भाई. OC first frag was coming from. Yeah, they were calling that pillar Yikinda. I suppose. Was that what they were calling? Pillar, I guess, because Yikinda on a lot of his. We'll see now as we move into the gun rounds. He likes to play around that dark pillar a lot, and we saw that it was actually trying to be abused from complexity yesterday. You saw when Grim got across that left side of B main, I call it pull. Yes. That they were trying to, force him to jiggle that pillar, and they were harassing him there with nades. So, an apt name, I would say, considering. Most definitely. We get to see the guns are out now for Liquid's defense. Let's see if they can get this defense rolling quickly. खेल तो अच्छा रहेगी यार, no doubt. They want to try and do something a little bit more explosive or aggressive with it. Over towards. ये डार्क पिलर के लिए नेड है. He's on the opposite side this time round, ready to push on through. He wants to punish. Yeah. 4 नेड मारो. All right, and that's the layers of this game. This game indeed, as Yikinda steps up, 𝘎𝙆 goes. 4 नेड भाई. The heaviest hitter on the Liquid roster on the first gun round. Can respect it. But he lays some disrespect down. Finds the perfect spray with that 𝘾𝙆 into 𝘎𝙆. इनको पता ही है कि अंदर उस पिलर पे खेलता. But all the same, the advantage has been seized, and now that Mac-10 on 𝘎𝙆 does feel even more compelled to frag. There was a couple of missing helmets, Nitro and OC. On the A side of the map, 𝘎𝙆 would have to be kicking open that door for them. This is a smoke to try and keep that B defense feet planted. Pillar smoke again. Oh, shot. Oh my, that is one back. 𝘎𝙆 gouges Nitro out of the round. But that's a huge kill because they were. Yes, I think lurk smoke. Lurk smoke. They don't exactly know what's going on here, so that's actually a big kill. The biggest issue for 𝘾𝙆 is the bomb is still down up towards T stairs. 40 seconds on the clock, and they need to start making a decision. Ability to call out and execute, and more harassment towards B has actually made Yikinda rotate the long way around beach. If they isolate OC on A and he misses a shot, they can be in. एक शॉट मिस करते मार खा गए. By virtue of the missing helmet as well, single bullet and 𝘎𝙆 onto Inns. बॉम्ब दिख गया. अब तो जीत गए Liquid. Rotation coming, Sicko and 𝘎𝙆. This is going to be quite a helpless finish. Oh, actually, the flash. They need to get in. That's the frag. अरे? What the fuck? They are. A 2 versus 4, now 3.
𝘎𝙃𝙆𝙈 low. 2 जने लो हैं Engagements, 𝘎𝙆 as well, barely hanging on to the threads of life. भाई नाफले बहुत जल्दी आता भाई फ्लैंक पे, कल भी बहुत जल्दी फ्लैंक पे आ रहा था, इंस्टेंट राउंड स्टार्ट होता है, राउंड स्टार्ट होता है और ये फ्लैंक पे आ जाता है नाफले लॉन्ग पे हमेशा। Opportunities are plenty, but hands are empty after round 19. ऑलमोस्ट निकाल लिया था इनने, So well, when you reflect on those type of rounds, नाफले को मार देते हैं ना लॉन्ग पे राउंड खत्म तो। poorly, whereas Liquid played that one perfectly. Really well done here. 𝘎𝙃𝙆𝙈 with the opener onto 𝘎𝑒𝑥𝑖TE to kick the round off after they try and target him. 𝘎𝑒 cheeky with the one-way on the fade. And the spacing here is the problem. The util's being thrown and 𝘎𝑒𝑙istair is trying to take the space, and they're probably not expecting another player close after they've already dealt with Nitro. So OC did great there. A really good job from him. But it can be another buy from Greyhounds here. Draw this back to a 5-round lead to Liquid. See how far they get with this one. Orbs out for both sides. Is OC wanting to pick this? 𝘎𝑒𝑖TE has the bomb, so if he just continues to peer around this corner, 𝘎𝑒𝑖TE's also not in a position to get away if he gets flashed. He's going to be in no man's land for a bit of hang time there. Yeah, nav to flash for them. Oh, they are going to push. 𝘎𝑒𝑖TE has support of ins at least. Here they come. Okay, well the orb's been spotted. Oh, they got to get 𝘎𝑒𝑖TE out of this corner. For trouble and मेरे को लगा नहीं सुना, big frag onto a big सुन लिया था एक अंदर कुछ साल है। You've taken down 𝘎𝑒𝑖TE. Liquid walking wonky. मिड हैवी नहीं खेल रहे आजकल टीम, जितने भी मैंने देखा ना, सबसे पहले जो एनुबिस में मैट आया था ना, ये लोग क्या करते थे, सारे लोग ये कहाँ गए, ये वाला टॉप मिड लेते थे सीटी वाले, ताकि वो लोग फटाफट से फ्लैंक कर सके, लेकिन अब नहीं ले पा रहे क्योंकि टी साइड मिड हैवी खेलते हैं, और ये लोग यहाँ से सिर्फ ए स्पॉट खेलते हैं, बी हैवी खेलते हैं और ए रीटेक खेलते हैं मोस्टली। Has found his head. Elysian response. Side upon the fade. Liaz reverts his gaze and 𝘎𝑒𝑖TE. ये देख फिर पहुंच गया ना नाफले पीछे, Yeah, he's not ready for this one. 𝘎𝑒𝑖TE. Yeah, you can मैंने बोला ना नाफले स्टार्ट होते पहुंच जाते। ड्रीम सीरीज की टीम you choose any player from past to making quick work of the second half. 𝘎𝑒𝑖TE कॉलिंग किसकी अच्छी लगती है मेरे को, एपेक्स ठीक है, एपेक्स या बूमिच में से दोनों में से एजीएल ठीक है, बिट ठीक है, सिंपल सिंपल ऑप करेगा, ज़ैबू रैफल करेगा ठीक है, और एक लर्क निको लर्क सिंपल ऑप आईजीएल एपेक्स और बूमिच बिट होल्डिंग और ज़ैबू एंट्री, ज़ैबू एंड बिट एंट्री, समझ गए? Examples of them trying to take that information back, and we often talk about it. All in shove here from Greyhound. Okay. Thought it might have been a partial into a full next round, but okay. Well, this is the map right here, ladies and gentlemen, for Liquid's pick. Yeah, backside some heavy flak hit. Down to 50 from the nades. 𝘎𝑒𝑖TE a little spray. Notice how they're not pressuring mid in the same way, so Liquid can play 3B and then a 1-1. It's not ड्रॉप्स इंस्टेड ऑफ निको, हाँ चल सकता है बिल्कुल, क्योंकि मेरे को अपने लर्कर से ज़्यादा कॉल चाहिए नहीं, या एंकर से ज़्यादा कॉल चाहिए नहीं, तो चलेगा, रॉब भी चलेगा। He's racking him up on the AWP. Some combat AWPing from the North American. दिख रहा है? Spotted another. 𝘎𝑒𝑖TE knows there's two here. पीछे हो जा साले 𝘎𝑒𝑖TE। Does 𝘎𝑒𝑖TE go? They know one tempo. अरे And he does win the duel. It's a race now. Away. 𝘎𝑒𝑖TE and 𝘎ELISH having a dance on B. Catches the chance. Doesn't finish his meal. Trying to sell it. Keeping 𝘎ELISH's feet planted. The bomb will be going down.
The lead is Hey. investigating now. Oh, and taking time on the plant right here. Those extra seconds might cost them. 𝙎𝙃 needs to rotate, and now ज़ैबू और सिंपल कौन सा अच्छा है? Currently ज़ैबू. On B still. Oh, Alistair does need to not give up this He's extended heard him. He's early. heard him. Yeah, should be able to play this smart. 𝙎𝙃 can slow it down. It's somewhat planted for 𝙎𝙃 as well here. Smoke नहीं है लीज के पास. 𝙎𝙃 perhaps to first investigate. Alistair managed to confirm he's off the bomb. An 8th round, a must-win round, a compulsory Greyhound 8th, and it's theirs. Elijah puts तेरे his hands up and sets the feed. देखने से थोड़ी जीतेगी. आजा फिर अरे नहीं यार. Each, and he should be able to get his knife out and get away. बिल्कुल गंदा है मोर का. To bring it all through. Okay. Keeps hold of his right. वैसे मेरे तो हो गए पिकिंग भाई. मैं चिल कर रहा हूँ. To fight. That run of 2 from Liquid. ज़ैबू सिंपल मोनेसी केडी नोसी रैंक दिस 5 वापस. हाँ मोनेसी भी ले सकते हैं सिंपल की जगह. ठीक है. लेकिन अभी सिंपल ज्यादा ओवर पिक करके खेलता है मोनेसी से, तो वो लेकिन मोनेसी ज्यादा कंसिस्टेंट है सिंपल से, तो इसलिए दोनों को ऑपर में सबसे ऊपर आएगा मोनेसी, सिंपल, केडियन, ज़ैबू, ओसी फ्रॉम टॉप टू बॉटम. केडियन की फॉर्म अभी अच्छी चल रही है, प्लस क्लच अच्छे करता है केडियन ऑफ से. अब भाई क्या दिखते ही उड़ा देते भाई भेजी. हम तो भाई पूरी छाती दिखा के पीक करते हैं, ये लोग भाई इतना से कंधा दिखाते हैं और शट है खोपड़े गायब. बोल ले आगे भाग. Could they be caught out by the drop? Liaz going to be starting to maneuver back. So he has canals covered. Yeah, and you can see our obs team. भाई फिर देख फिर पीछे पहुंच गया भाई. पर सिंपल जब फॉर्म में होता है तो वन साइडेड हो जाता है. वो नहीं चाहिए ना भाई अपन को. टीम अच्छी चाहिए, एक सिंगल प्लेयर अच्छा चाहिए. वो चीज तो ज़ैबू भी करता है भाई. वो चीज कभी कभी निको भी करता है, कभी कभी मोनेसी भी करता है. इसलिए और आज के टाइम पे ज़ैबू ज्यादा करता है. मोनेसी, ज़ैबू, रॉब्स, एपेक्स, बिट, 14. हाँ ये भी अच्छी है. मैंने मोनेसी की जगह किसको सिंपल को रखा था और रॉब्स की जगह निको को रखा था. हाँ सही है, वो भी सही है, दोनों सही है, दोनों अच्छी टीम है. अगर ऑब्वियसली सब लोग सेम लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो तो भाई इनसे नहीं हो जाए भाई. सबसे ज्यादा इसमें वही होता है लैंग्वेज का. क्या होता है ना, तुम छोटी छोटी कॉल नहीं दे पाते. जैसे अपन हिंदी बोल देते ना, ओ तेरे पीछे राइट लेफ्ट, अच्छा तेरे पीछे दाएं बाएं मुड़, ऐसे वैसे वाले. उधर से आ रहा है, उधर से नहीं आ रहा है, इधर आएगा, वो वाले कॉल. आई थिंक फ्लैश कर रहे हैं. फ्लैश किया. But that could still be the collateral. They know he's baited. Shot. OC1. देखा क्या? And more on the side for sure. Flash comes in from a lead. They do repel the invaders. Yakinda waiting around the. एक अंदर रॉब उठा ले. पोस्ट में क्या? 5-7 into action. A lot of room for them to maneuver around in this final 60 seconds. Yeah, guns to retrieve. Yakinda has grabbed that AWP. Remember, he picked up the kit in the previous round, so the 5-second defuse is still available here as the reroute. उठा लिया एक अंदर. Through. Yakinda investigates mid. It is Naf, who's just used a smoke to block right now over towards the dark position. So exactly what they're walking behind. Do they try and brave it and walk through? I could understand this decision, but Naf seems ready for it.
Yeah, instead. अरे गॉड है, अरे गॉड है क्या भाई? Way too easy. All body shots. Just couldn't quite get the info. Insane, man. Couldn't find that trade. He repositioned nicely. Their expectation was he smoked it. He's not watching it, and they all just walk out into the blender. What a masterclass from Nafia. उनके पास पैसे कितने हैं? ले को आ गया, ले 15 दोगे। That's what क्या एंगल था भाई, क्या एंगल था? Now, I've been फुल saying यूटिल थी लेकिन ग्राउंड के a पास little bit of body language. उनको यूटिल यूज करनी चाहिए थी। one of it. Oh, okay. He was happy with that one. Yeah, he definitely. बाकी उनका ये सोचना था कि भाई was getting it loud for उसी के पास ऑफ थी, नाइट्रो के पास 5-7 थी, TV. ये के अंदर को इनने स्पॉट किया था, शायद डीगल पे स्पॉट किया था, तो इनने सोचा कि बाकी सब सिर्फ इसके पास अकेले के पास ऑफ होगी, लेकिन उसके पास भी नाव के पास फार्मास थी, Yeah, what's the opposite of a तो इनने सोचा कि अपन है ना ड्राई पीक करके निकलते हैं, उसके पास स्मोक और 5-7 होगी, अपन एक सीधा ट्रेड कर लेंगे, फिर पोस्ट प्लांट काफी अच्छी पोज ही ले लेंगे, Having a tough लेकिन उसके पास फार्मास निकली। So, if there was any time for him to rock up, it would be right here. अगर उनको पता होता ना उसके पास फार्मास है तो वो लोग नहीं जाते ऐसे। So good to see OC 100%. feeling himself for these kind of maneuvers time after time. Admittedly, he's coming in feeling better than every single of his opponents. I'm sure that's not always a guarantee, especially when he's up against that top 16. Should he get there? A bit of a different kettle of fish. सब्सक्राइब, लाइक, शेयर बिल्कुल भाई, नॉक्सी भाई The Shiros of the world Hold on, he's not there. करो भाई, in spirit. In spirit for sure. ये रश कर रहे हैं भाई, Maybe after the roster shuffle. ये रश कॉल है भाई। Right. Now we're theory crafting. रेड दिस IGL Apex Kerrigan And the response time of Liquid Boomich, towards the Glaive, side Gideon, has been pretty top damn में good. Gate Used to Glaive reline up. You anytime, can see the way that Nitro's approaching this defensively. क्योंकि So play with another slither gap and just उसने drop जो the करा था ना, Clearly this is ये just देख रहे one हो, time and उसने it's शायद really 69 पे खेल रहा है नाइट्रो, क्योंकि मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेफ्ट साइड में गैप है इधर, It's just no map presence at all. And there it is. 69 पे खेल रहा है प्रोबेबली। ओह Have to. Oh god, the nade. 90 down, make it 100. To help. Nitro. Sicko trying to get through. Try and take space. Try and WB play. A great spray from Elite. उसको स्मोक से भी मार दिया ओसी ने, स्मोक से निकलने वाले को जो ऊपर कंट्रोल ले रहे। Already forced into awkward fight. The smoke perhaps for Inns to play around. He's hiding on plain sight. शुरू में चैट में भी प्रेजेंट तो सही है भाई, That's basically the nail in the coffin वो right तो मेरे को पता ही है। Yeah, Alistair's kind of responsible for that, but you know Liquid are played as well. There's going to be just tempered approach. Playing together. Nice. I mean, it's even but yeah, as you discussed, that flank comes through. Hold on, he's done damage to OC. You know it's coming. You can. ओह उसकी Felt like Inns Yeah. actually got a little bit of something to say about that one. सबसे टॉप पे ग्लेव, क्योंकि भाई उसने जिस टाइम तक 2017 में उसने जो कर रहा था ना, 2017-18 में भाई क्या आईजीएल करता था, लोग बाग है ना 4-5 राउंड निकाल पाते थे उनके ऑस्ट्रेलिस के अगेंस्ट में। अगर तुमने 11 राउंड निकाल लिया ऑस्ट्रेलिस के अगेंस्ट में, मतलब तुम बहुत ज्यादा अच्छा खेले हो, ठीक है। बाकी 4 सेकंड पे कैरिगन, That's Greyhound up to 10, and that is a confidence booster for the in-game leader. फिर सारे ऐसे ही हैं यार, सारे बराबर के हैं, Instead, we find ourselves कैरिगन को छोड़ के, कैरिगन फर्स्ट ग्लेव, सेकंड कैरिगन, फिर बूमिच ग्लेव, बूमिच एपेक्स और केडियन, theory craft. You can see that, of course, no coaching सब and सेम ही लगते हैं मेरे को। grateful for the opportunity. बूमिच एपेक्स सेम तरीके से आईजीएलिंग करते हैं, It's not particularly hunky-dory in the mathematical department. The economic एपेक्स थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव था, either. No, not at all. लेकिन दोनों बहुत ज्यादा वो करते थे, इन्फो वाला खेलते थे। They're going to struggle to put anything केडियन on Mac 10 इज मोर लाइक again. स्टार प्लेयर ऑपर, Possible if they really would like on a few. केडियन इज मोर लाइक फॉलन, समझ रहे हो? Comes at the sacrifice of the utility, so you can see the balancing act that they have to pull off here. Inns has named his bayonet Karambit Ruby. And OC, That's a fake. it is indeed. Let's see if the boys from Greyhound fancy something similar. A lot of their players are very together and telegraphed. They've allowed these rotations for Liquid to be together, and they had to stall it out. The timing of Liquid. बाकी केडियन को उनसे ऊपर ही रखूंगा, क्योंकि आईजीएल के साथ वो फ्रैगिंग भी ज्यादा करता है एपेक्स और उससे क्या नाम है बूमिच से। Liquid's expectation subverted, right? Like प्लस केडियन की जो टीम है ना, वो टीम गेम प्ले ज्यादा रखती है, इंस्टेड उनको वाइटलिटी और नावी से कंपेयर करेगा तो बूमिच नावी में था जब, और वाइटलिटी एपेक्स की, क्योंकि फायर पावर ज्यादा है नावी और वाइटलिटी में हीरोइक से।
बहुत ही ज़्यादा इंसेंट प्लेयर है। उनमें भी ये हीरोइक में नो डाउट, लेकिन उनके बहुत ज़्यादा ये राउंड भी गया क्या? Damage inflicted. 𝙎𝙃𝘼𝙆𝙈 hanging on by a thread as 𝘎𝑘𝙗𝑆 coming in to put 𝙎𝑃𝑔 and VACEIT to an early bedtime. बोल ले खत्म गेम। जी 𝙎𝑃𝑔's head rounding the corner, popped like a cherry tomato. भाई 1 HP में मार दिया भाई एली ने। Only VACEIT stands. बैक साइड में ये अंदर मार दिया इतनी पीछे लॉर। I think we all feel the same here. VACEIT. Don't worry, Blast. Don't worry, Blast. It happens to us all. Happens to us all at some point. Yeah, it happened a little bit early, but this one here, VACEIT, 20 seconds left, and you're right, this is going to be it. He's just going to run the corner, go on down. 𝙈𝙆𝙆 with the final kill on that 1 point of health, and there 𝙈𝙆𝙆 जिंदा हो गया भाई। the North Americans, जीत one गए। more map, 16 rounds away from locking themselves in from the legend stage. 0-2 down from the best of ones. नाइस यार, नाइस। जीत गए भाई। एक और मैप बचा भाई, एक और मैप देखते हैं। अपन क्या करेंगे? 10:30 बज गए। फेसिट में क्या है? फेसिट में शायद लेवल 9 बन गया। हाँ लेवल 9 बन गया। 25 इसकी मिली थी, कोई स्मर्फ बैन हो गया था। बैंड फॉर स्मर्फ। लेवल 10 भी बन जाएंगे भाई, थोड़े दिन बचे हैं। और अभी तो लाइव होगा। और अब बैंड कौन कौन कर रहा है? इज ओले लास्ट 2 प्लेयर कौन है? ट्रिजी। अच्छा दो प्लेयर रैंडम है। अच्छा इसे नहीं कि इसे की प्रोफाइल लग रही थी। ठीक है, इसे की प्रोफाइल लग रही थी और दो रैंडम है उसको। सही है। 1 सेकंड में क्या पूछ रहे हो? चलो गुड नाइट भाई, गुड नाइट सार्थक भाई। हाउ टू इम्प्रूव माई गेम प्ले ब्रो? 1 सेकंड रुको, मैं आया 1 सेकंड रुको। I want to break down today is OC's 1v3, obviously a big round initially on that Chi side. So I want to break down the thought process of how he was able to convert this 1v3 clutch. So first we'll watch it back and see what it looked like once again, where he's able to find these 2 kills and then the third one onto Temple. So let's break down initially what led to this clutch and how he actually ended up in this situation to pull it off. So initially, Link would go for an A hit, it kind of goes wrong, 2v3 situation,
And something to pay attention to here is that OC, he already starts falling back even before Naf dies. This is pretty important because when Naf dies here, when he dies, what OC has done is he's actually given himself a head start towards the B side, because if you look at all the CTs here, they're all focused in on A still because they think that OC could still be coming here. By getting this head start, it allows him to get to the B bomb site quickly. By the time he gets here, he realizes that because the rotations are leaning towards A, at most there can only be one here. So he Molotov's the most common rotation route, the temple position, and that allows him to get the bomb. Now right here, he actually has a pretty key decision to make. After he plants the bomb, he could either go back towards B main, or he could go towards Dark. He's going to take the decision to go towards Dark. That's because when you're in a clutch situation like this, where you're in a man disadvantage, you have to find out where these CTs are coming from, where they are exactly coming from, so that you can try to punish them and try to even up the numbers. So when OC comes back here towards Canals, take a look at how carefully he clears the Canals position. He peeks every single angle he can think of. And as soon as it's clear, he realizes that now everybody's coming from CT. And the reason why is, if we pull up the map, when you come in, or if you're towards this A side, there's two main routes. It's either through Canals or through CT. As soon as OC clears this out, he knows that everybody is coming from that CT side. So when he makes it back towards the site area, he doesn't stay in Dark. Instead, he uses a different position. He actually reroutes himself towards the pillar. Now this is a great position because the pillar, what it does is it allows you to peek in between both sides. You can peek on the left or right sides, and as well, you can also just hide. It's a great position to be able to aggress the CTs while being more vulnerable, or rather being more maneuverable in order to catch them. This allows OC to take this sliver angle onto CSGO first on the right side, and then swing on the left side to catch both of them. And as soon as he sees those two kills, he knows this last player is coming from CT, or he knows he has to be coming from this area. And as soon as he sees that there's nobody in this long range angle, it means he has to be coming from Temple. So he takes a more aggressive angle, posts it on the angle, and that allows him to get the kill. So great job here from OC, where he's able to convert this clutch off a couple key decisions to make it all possible. My favorite part about that was I tried to get Danny involved in our joke, and he would not even entertain it. He was like, I'm not dealing with the degenerates on the desk. I'm just going to do this. Let's talk about OC, Prof. Like, what did you think of his performance on Anubis? I think when you go into this challenger stage and you're trying to analyze which team is going to go through, which isn't, there's so many teams, so many different players on them. My kind of breakdown is, okay, let's look who has the most experience, who has the best players on their teams. And obviously Liquid, for OC, you could see he's the fourth best player on the team, and he can deliver this kind of a clutch. And this is why you have the confidence that Liquid will make the bounce back. Yeah, I think what this clutch also shows, very great breakdown by Danny as well, is the difference between Liquid and Greyhound in the awareness of the map that you can take and the timing that you risks. I think Liquid were much better than Greyhound and knowing when they can eat the map control away and grab that information. We can run to round 20 rather. That's a good example for how Liquid were able to deal with that. We see the situation. It's a 5v4 that's being given, but elijah punishes the flank, which is too fast for my liking, and then the punching in the side is too timid, is too shy, because it gives time for Naf. It's actually coming in from the back. 20 seconds left, the bomb hasn't even been started to be planted, but Naf knew he could push, so while the chaos is happening, he sneaks in from behind, grabs OC, and he just leaves CSGO alone. This is the difference. This is why Greyhound isn't able to turn around 2v3s and 2v4s the way Liquid did it, is because when Liquid is allowed it, they are aware of how much timing and map control they can eat away, and they will constrict you into the clutch, which I don't think Greyhound did against Liquid. What is Greyhound going to do now? I mean, it's their map pick, but this is something we spoke about. Liquid knows how they're going to play this. They've seen enough of it. Is Greyhound able to bring something to the table that maybe Liquid isn't going to be coming? The thing is, Liquid, obviously, as we spoke about a few days ago, they changed a lot of their CT positions. So even if Greyhound wanted to super in-depth repair for Inferno, they really can't. They played one map with all of the positions swapped, right? I think it's going to be another tough map here. Banana control, obviously very, very important. I think they struggled against NIP because they couldn't get that area, and they tried to like punish towards pit, and that got locked down as well. So I really can't find a winning condition almost. I mean, if anything, the only
area of the map that went Greyhound's way against NIP was Banana. I mean, they did Brolan absolutely dirty. He had an absolute despair of a game. Now, I do not believe that they can replicate that kind of success versus Yekin. I think it's going to be a little bit different here, and if they don't, it'll be complicated. I do not believe they have what's in the tank to push us to 3. I'll happily be wrong down the line, but as far as I'm concerned, Liquid have done enough to propose themselves towards Legend Stage. How much pressure is sitting on the shoulders of Captain America himself, Nitro, Elite, knowing that they are so close? They've never not made the Legend Stage. Do you think that that pressure is there right now, or are they feeling pretty confident? I think there is no pressure yet because they haven't been put under pressure, right? They haven't been in a position in this match so far where they needed to claw back, or where they really felt like they're going to lose the game, that the other opposition was beating them in any way. So I think they're pretty confident, pretty calm, and they're just looking to close it out. Our analysts are feeling very confident. They believe that this is going to be a 2-0 victory to Liquid, but we believed this last time as well, and they went down 0-2. So maybe Greyhound has some... who am I kidding? It looks like Liquid has this in the bag, but we do have to go to Inferno. We're going to take a quick break, and when we return, that's exactly what we're going to do. It wasn't an arena, but remember the 1v1 I had against Nav? Okay, it was like the all-Canadian round. Yeah, okay. Yeah, that one was actually all funny. right. Yeah, rewatching that, I laughed for sure. This is Canada versus Canada. Oh nothing can go wrong here. I've never been so apathetic to an outcome in my life. Right. I'm going to apologize no matter what happens. I'm already smiling. I'm happy for whoever wins it and sorry for whoever loses. Sorry. Oh, he's just bleeding time off the clock. He's playing twist like a fiddle. Canadians are so smart. No kit either. It's done. And in Canadian fashion, it's full pacifist. No one shoots each other. Sorry I had to blow up your site, eh? Yeah. Oh, no problem. It's just your job. That's wonderful. Yeah, the most pacifist clutch ever. You both survived and walked away. It was No just, damage taken from either opponent. Okay.
Chef. They can't reply. It's okay. No, one I heard know. I had a sentence though. No sound has been. Oh well, there has been some. Okay, so smoke to be lined up. Alistair's going to be throwing that one out for the final flourish. It's a classic waterfall. Here. Yeah, this Everyone's is here. so problematic. 𝙆𝙆 has a smoke. OC has Molotov. Think they did their homework. Liquid probably have the pistol. Smoke down. 𝙆𝙆 can play around. And NAF not been cleared once. Oh no! Greyhound destroyed upon entry. All of those jewels going their way. It's a great one back from Alistair as he tries to get the bomb and loses his life in the process. Same could be said for Inns. Been to the future. Not much has changed, but they live underwater. And Inns doesn't win this round. 𝙆𝙆 confirms our suspicions. Gets himself a double. And NAF and 𝙆𝙆 gonna be, yeah. यार ये पहले बताना था 9 आवाज वाला इतना सब कुछ बोल दिया मैंने यहाँ पे Shaken off as they look to secure themselves a legend spot they already feel they are capable of wielding. Yeah, look, this should be theirs to putt in. I think I used the word pedestrian in the last map, and that's probably. I think खेलूंगा मैं FACEIT इसके बाद. My biggest worry right here. Stream पे खेलूं नहीं खेलूं पता नहीं. लेकिन I will play FACEIT. I think they're susceptible to losses like this. They had a 16-1 loss to Bad News Eagles on home soil against Challenger Melbourne long ago. I remember watching an MIBR game that they had where they were playing on Vertigo, same kind of thing. They just absolutely capitulate. And this, right now, at least for their honor, you would hope it doesn't happen, but they're the type of team that it definitely can spiral out of control. Yeah, and Yakinda's kind of also, understandably and justifiably, been throwing caution to the wind a little bit. As NAF will join him on that aggress. ये वाला मेरे को लग रहा है 16-5 16-6 ऐसे खत्म होगा अनलेस वो लोग है ना टी साइड में 6 राउंड के ऊपर निकाल टी साइड ठीक है लिक्विड की इस वाले मैप में दूसरों से गंदी है लेकिन ग्राउंड के अगेंस्ट में तो ठीक ही है नाइस एलिस भाई नाइस They don't even need to worry about doing things too tricky. Of course, respect your opponent, but we've highlighted this in the first. We'll highlight it again right now. Individually speaking, I think Liquid would think pound for pound, they're better players across the board here. Greyhound's job is to earn that respect, and by losing all the number advantage situations, you start to lose some of that respect that they could have garnered. Yeah, and Liquid setups are going to be chopping and changing religiously. Allowed step from VACEIT going to be relayed. I love this mid hold, like where playing top mid. So a lot of teams when they lose banana, what they'll do is they'll just go into getting top mid control, which normally exists of a long smoke and a porch molly. But the waterfall, our apps, could be aptly timed here. Honey, here they come. 𝙆𝙆 smoked around himself. Good info. Yeah, this is the duel. This is the duel. Inns and VACEIT successful. 𝙆𝙆 and OC Array. and in VACEIT. A triple into the A site. BACEIT भाई साले राउंड हार जाता BACEIT. To the plate and knock Liquid down a peg. That VACEIT second actually third must have been an absolute barn burner right there. A bit of a specky as NAF will be holding on to this one for the save. As soon as they get that smoke on the porch side, they know that it's a heavy mid setup, right? That there's at least 1 to 2 players locking down that mid control. So actually a really good round there. I'm just saying how much I like the Liquid setup. Well, finding the path of least resistance there was Greyhound. So getting on the board early, not letting it get too out of hand. शॉट वाला इसमें काफी अच्छा था जो अंडर हेड था तो उससे के साइड में जाने के लिए इजी होता है जो इन्होंने किया था ना शॉट वाला स्मोक टी साइड वालों ने बहुत अच्छा था being able to deal with the broken Liquid, right? The team that's going to have a couple of saved guns, which we saw was also a trouble. Remember that NAF 3K from the Ivy position on Leon and Ubis, right? So if rounds like that happen, they're in a whole lot of strife. Yeah, and the way I kind of characterize rounds like that, it's like tripping over your own shoelaces. Like, you knew it was possible. You said you'd tie him up in a second. Here we go. Check this one out. Oh, he looks back into it. Nice shot from VACEIT there. OC's going to... शॉट मारा भाई क्या शॉट शॉट देखो तुम लोग तो बस ऐसे खेलता था पहले मैं फिर मैंने लूडो किंग खेलना स्टार्ट किया भाई ये वाला हेडफोन्स एक नंबर है भाई ये लोग तो खैर नॉइज कैंसिलेशन के लिए यूज कर रहे हैं सिर्फ लेकिन काफी
banana control the jump spot. Yikinda will see the site banana laden with flames. They're not even close to that. And know that they likely have it under their remit here. So Naf and Yikinda happy to loiter top banana behind the smoke, and Greyhound haven't earned any respect. चिकन खाने का मन कर रहा है. चिकन मंगाऊं आज, क्या थर्सडे वेडनेसडे ट्यूसडे. मैं वॉच पार्टी कर रहा हूँ यार. नींद क्यों आ रही है मेरे को? मैं 12 बजे सोया था. 7 बजे तो उठाऊं 6:30 बजे. पता नहीं भाई. ऑफिशियल मैच कितने हर्ट्ज में होता है? 240. मतलब जो भी मॉनिटर होते हैं ज्यादातर के पास 240 होते हैं, ज्यादातर बड़े टूर्नामेंट. किसी बहुत छोटे में 144 भी होते हैं, लेकिन आजकल तो नहीं आते. आजकल 240 हर्ट्ज सबके पास ही होने लगे सारे टूर्नामेंट वाले में. जिनके पास नहीं होते वो बोरो कर लेते हैं ऐसे की गेम्स के लिए. So they level the odds and they're going on this. There's 3 here from Liquid, make it 2 as FACEIT, he builds a double out of that. Finally now pushing the smoke, pushing the issue. They know Nitro's there. अरे नाइट्रो टैक्टिक है FACEIT. Yikinda, he's coming for this one. Good idea as to where Alistair has planted. Lee has round the world to worry about short. Alistair doesn't need to do too much, doesn't need to overcook it. He's alive somehow. सुन लिया नहीं सुनना. नहीं ऊपर नहीं चढ़ना था ब्रो. तेरे पास 35 HP और उसको पहले खत्म कर देता जब वो 96 टैग किया और इतनी देर से कोई पीक नहीं कर रहा. Type of rounds that Greyhound need to be winning if they want to have any track. And FACEIT again, I mentioned he's not a cerebral type player like a JKS or a Liaz that you might be familiar with from the region. He's a little aim star there, so 2 big ones on the way in and a good finish there from nice clutch. This will break Liquid. Don't invite yaar, कौन invite कर. 5-7 and a smoke here, but this is a must-win round for Greyhound. You can't be losing this one. Defensive smoke top banana means ये थोड़ी हारेंगे भाई. dealing with, but they will grab this banana control quite quickly. और पिस्टल है भाई. 5 पिस्टल है भाई. इनमें से एक टीगल, एक स्मोक और एक 5-7. ये वाला एंगल भी अच्छा लगता है मेरे को, ये के अंदर वाला जो ये लेके बैठा हुआ. बाकी उनके समझ में आ गया. Because Yikinda has been able to stay in the window for so long, it's forced this rotation, looking to set up the boost, so in towards the stack. But remember, this type of buy, Greyhound still should walk over it regardless of the bodies on the site here. Yeah, pushing smokes against what is unknown. Shouldn't go wrong and hasn't. Greyhound. They handle the formality well. Not too much sweat on the palms, not too much stress on the brain. You got yourself that third, and you've done so cleanly. So mission accomplished in that respect. I wonder if the Fluxo game has filled Greyhound with a little bit of confidence coming into this one here. Remember that Liquid matchup? It's went all the way. We thought we could have been losing Liquid to the Brazilians. I'll just remind everybody how that series went down. It was a nuke pick from Fluxo. They won that 16-11. And then they moved on to Inferno, where they actually were in a pretty good position to try and claw the game back, but ended up losing 16-14. Went to the third where Liquid eventually took care of business 16-13 on Ancient, and that was just to keep himself alive as Yikinda. Well, I don't think he will be exactly that. Sick will finish him off, and all 5 staying alive. A perfect one right there. And Liaz with a couple of kills on the way in. So good to see him getting more impact, even if it is just those eco frags. क्या के अंदर भाई क्या मॉनिटर है भाई. कितनी पास बैठा है वो, इतनी पास. इतनी पास. यार मॉनिटर, यार पांच. भैया के अंदर को देख और इसको देख. एलिश को 200 किलोमीटर दूर बैठा है एलिश मॉनिटर के. So it is a gun round, but it's not an idyllic one for Liquid. So we have enough to work with here, and that's probably where 𝙄𝙆𝙀 wanted to lead off with the conversation. How do we want to present this defense? Do we want to keep with the 2-3 split of Yikinda and Naf over towards B, or do we want to add a third man to that conversation to try and get this full banana control out the gates? सच में कुछ मैच के बीच में नींद नहीं आ जाए भाई. Doesn't look like it, so you can see how happy they are just starting with the most standard setup. It's go time. It's 3 for the
aggression towards Banana. Nice nade here. Just a full barrage of every nade in the book, and yeah, more mollies on the way. That trajectory forces a decision. You either get trapped or you concede. I like some of the details there, though. They're aware of Ykindr's hyper-aggression. Banana trying to punish him. We saw the same thing on Anubis on their T side. Deal with him over towards the dark position. And I think they feel that that is enough for them to have bought space in Banana here. It's not confirmed, but you can see the rotation is forced from OC. This passive setup from Elysian Nitro. And traditionally on the CT side, this is one of the worst places you find yourself in, completely in the dark. No Banana info, no top mid info. Without either, it means that they're going to have to hope that their individuals can multi-frag. But it returns to the fact that they are the favorites here and better individuals. And that's kind of the difference. You can play this style of Counter-Strike. And they do get that. ये flash देखो half wall flash. Hoping Naf summons OC. He is starting to maneuver towards B. Double pit setup. The two of them. And there's two-man pit setup. You know it's Elise, you know it's Nitro. Spots one. Nitro. Need the trade. So much pressure on his shoulders. And he will still deliver. Where is that trade? 𝙎𝙃. No, he's got he couldn't finish the job. Somehow Nitro is still alive. And Greyhound a fumble. ये वाला राउंड जीतती तो insane हो जाता. Trying to get in, and it's one The fuck? important shot. They need to get that bomb, and look how easy it should be. Nitro's still alive. He's won the round for Liquid. A quad kill from the pit position in the absence of a lead. Nice around it. Taking a note off that round right there. Good call, bad execution. Yeah, that's the individual. Good call, bad execution. The fact that there's no trade, the fact that Nitro gets 4 kills in that round, that should never be happening here. So they've been able to sneak out and get that initial kill. No trade. They've been giving him so much time here, knowing it's a double pit setup. And if they believed that the B fake was going to work, then they should have had faith that it was just that one player in the pit. That can't be happening, but it has. And oh, look what it's done to them. It's left them in. पैसे ही नहीं बचेंगे. भाई ये वाला नेट बहुत सेक्सी लगता है मेरे को. भाई 48 का टैग दिया. Nitro forced into a defensive corner, forces the utility out of Liquid early. Look at this, the cavalry's coming. The whole squad galloping over towards the A site after kicking up such a fuss at the fact that he's caught short in the first 20 seconds. It's forced Liquid into a little bit of uncertainty for a moment. They left B wide open. Naf's been demanded to go and regain control. No one there. And OC's clearing brackets right now. So the question is, well, where have they gotten off to? This means that Naf will feel like he's under a bit of scrutiny. He does have a smoke and a molly, and I didn't just drop it off of that info. I thought maybe he'd lob it out immediately as Alistair's gone back to spawn and grabbed them an extra smoke. They've actually done banana retake util, so Liquid are handling this very well. Yeah, they definitely seem switched on today. We've seen North American teams in major history go 0-2 and then go on to do the impossible. Into the orb. Boston मेजर की बात कर रहा है. 0-2 थी Cloud9. Knocked out होने वाली थी, वहां से मेजर जीत गई. Nitro's FAMAS gets 3. Could be another 4K. He's pulled it out again. Liaz not brave enough with a 4 HP. Ins covered. Oh, adjusts. Does get traded, and Liaz doesn't have the health for this. Heard, spotted, and executed. Nitro does do it again. I need to stop doubting him. That's twice now they've come to his position, and in 2 rounds he's up to 8 kills. Takes great. 4 round 4 kill निकाले तो. It's difficult to get excited when you feel like it's going to happen. That's the problem. Like, it's a good opener from Liaz. Like the way that they were able to isolate the AWP over towards Moto. भाई FAMAS से मारे 4 किलो से. That's really good. But after that, they all just line up, and it shouldn't be slim pickings like that for Nitro to be able to just pull them apart in 2 rounds. 2, 3. Yeah, right. And obviously the call of the round has something to do with the weapons that are available, the fights that are coming their way. But the fact that Nitro has been able to do that in back-to-back rounds right now is very concerning. As through the flash, 𝘎𝙃 will take down 𝘎𝙃. That was the AK. Yeah. Thank you very much, he says. Wow, 𝘎𝙃 was full blind on that as well. So a little bit of an intervention from a higher power. Look at what they're getting away with, right? You can just see how scrappy and discombobulated this is from Greyhound. There's more dinks, but 𝘎𝙃 will lose his life. But OC and Naf are here to mop this one up, and 1 to 5 behind the half. No scope. 5 to 3.
was quick. Was efficient. And yeah, 𝘾𝙊𝙈, he's definitely been given a little bit of a gift there. Great placement of his Corsair, of course. There's always a little bit of luck involved when your screen is completely white. 𝘾𝙊𝙈 gave it a go. ग्रेहाउंड से जीती एक, लिक्विड एक पेन से जीती और एक फ्लक्सो से जीती। लामो तीनों नॉर्थ अमेरिकन टीम से जीती। नॉर्थ अमेरिका आरएमआर चल रहा है भाई। Yeah, you definitely have to be poppy in some regards, but you're right. In terms of being the only thing to go to, we need to see some more well put together pieces, and that has actually burnt OC down significantly. Now, unconfirmed damage, but look at this setup right now over towards second mid. You can see this up in towards boiler room. You've also got the two players waiting for 𝙎𝙃𝘼𝙍𝙀 on the crawl. So there's a lot of info, right? They're not jumping up boiler, they're not taking mid control. We don't hear any steps, and that can put the banana players on high alert. So FACEIT might have company soon, and 𝙎𝙃𝘼𝙍 as well. FACEIT's been hit with a warning shot. Nade. Oh, boy. But 𝙎𝙃𝘼𝙍 catches 𝛼𝑖tro's aggression. Feels like a worthy trade, especially considering OC getting burnt down and 𝘾𝙊𝙈 quite low here. But how much do 𝘾𝙊𝙈 know about that, as 𝘎𝑃𝑠hot will ring out, so confirmation of position, and 𝛼𝑖tro, the player that's plagued them in the pit, in a grave of his एलिस और 𝘾𝙊𝙈 दोनों लो है ना? नहीं, एलिस लो नहीं। This is a big if. एलिस को 2 किल निकालने पड़ेंगे एटलीस्ट। Considering he still has a smoke and a molly available here to block them. अरे अरे नहीं नहीं नहीं, 𝘾𝙊𝙈 कहाँ जा रहा है? It's Inferno. He's pendulum swinging back and forth between the sides, so that long smoke hits the deck. बोले देख नाफ्लाई की गाड़ी चल जाती ना, भागता रहता भाई नाफ्लाई। Always aware. And 𝘾𝙊𝙈 distracts. Come on, trade onto 𝘎𝙗𝑃. He still gets the dog. ओह, बोला मैंने, यही चाहिए था। Hanging on short by 12 HP, but a quad kill every time from that pit position. In the absence of 𝛼𝑖tro, 𝘖𝙗𝑃 will एटलीस्ट डबल किल चाहिए। They can't get through him. It's multi-kill mayhem right now. उसको देखता नाफ्लाई को कैसे भगता भगता निकल के आया भाई गाड़ी की तरह। Trade potential needs to be there. He gets away with a freebie, it gets calmed out, he drops towards the pit, the second player takes the fight. तीसरा तो इंसेन ही शॉट था। So easy for 𝘖𝙗𝑃 to take those fights. He thinks he's playing a little bit of crossfire right there, promoting his products. But it is, I mean, 𝘾𝙊𝙗𝙀, they do almost look, you know, like a team that you can bait with those sound cues. They will react to the call instantaneously, and all of them. 𝘾𝙊𝙗, that's not too bad for the MP9 at range. Yeah, I think 𝘾𝙗𝙗 might have to put trading on the top of the list here for something that needs to be worked. ये वाला एंगल पे मारना इजी भी है और बहुत हार्ड भी है। Not even that. ऑफ से मारना तो इजी है उस वाले एंगल पे, टी साइड वालों को। Much more efficient than what we're seeing here. An opportunity flashed into it. Oh, and blind. There you go. Another multi. Nice, yeah. Just starting to farm now, and I'm sure that confidence building because 12-3 जाएगा तो खत्म है, फिर 16-6 के आसपास। Inferno has transitioned the same way. Maybe you're an older viewer and used to CT sides being a shutout. That's not the case anymore. So 𝘾𝙊𝙗 staring down the barrel here of 𝘾𝙗𝙗 already winning out the half in just one more round of play. If they don't get started soon, they won't get started at all. Yeah, and 𝘾𝙊𝙗's feeling himself as well with all the additional funds they have from this run. Yeah, well, ये राउंड तो निकालना चाहिए ग्राउंड को अगर जीतना है तो। No, I think that's a decision he's made purely because it feels like it's going a little too well. OC does brave the flames and the nade, and yeah, significant damage dealt to the 𝘎𝑃𝑠h𝑘. Maybe 𝘖𝙗𝑃 can finish off what that utility did start. That shot from 𝘖𝙗𝑃 all the way down towards Alistair's position. He's got him low, and yeah, 𝘖𝙗𝑃's not ready for OC. ये के अंदर ऑफ क्यों कर रहे हैं? नाइट्रो को ऑफ देना। अच्छा, नाइट्रो पिट प्लेयर है। More nades to be scooped up and delay this banana crawl, and there is a distinct feeling in the air around this map. It does feel like it's already slipping through the fingers of 𝘾𝙊𝙗 Gaming. The problem is as well, right? When you do start in matches like this, something that you would love to be able to do as an underdog team is अभी भी कोई भी प्रेजेंस नहीं है भाई। you can use those patterns to call throughout, but that's not really how top tier Counter-Strike is played. A good flash. Good util. Yeah, that's actually forced OC. हीरोइक नावी को देखेगा तो उनके पास टॉप बनाना रहेगा ही रहेगा, या ब्रैकेट कंट्रोल रहेगा। Respect the flames, 𝘾𝙗𝑃 hungry. They just want to frag. They just want to kill. And OC, he's dancing with them. 20 HP पे 20 HP पे 3 छोरे मार के भाई। Alistair jumping through the smoke. They call that one the Greyhound.
But look how all in it is as well. Every time. Right? It's so all in. There's a molly. Go, go, This go. time wasn't an issue. In other rounds, that may be a conversation, but I can't make an excuse for this. No. They obviously wanted to try and take CT spawn space, right? But once you get denied, you have to be able to change in the moment. The round can't be running through a smoke into an orb and an AK-47 in CT spawn with the bomb. That can't be the play. It really can't be. Because players like OC, players, you know, in the higher echelons are going to take that and run with it. Well, things are going as everybody expected, I think. We're not getting the surprise upset that I think a lot of people, especially the Australians and New Zealanders staying awake at home, were hoping for here. I know that a lot of these guys have their parents very big supporters. Sure, they'll be watching right now, and more of the same story, which is just unfortunate for the boys. But there's just the a boys. stark contrast between these two teams, night and day. Yeah, every single member of Liquid has had a multi-kill now already. That was OC. Having some fun with that one. Well, I think it goes without saying, but max loss bonus in play here. Saved AK, VACEIT will upgrade into an AK. Banana top pressure. Nice find. Nice find. There is an opener. Inns provides, and that's his second opening kill. Can they make it into their fourth round? It's their fourth opening kill overall. Actually, they get their fifth opening kill on this T side, so that's actually not too bad. यार टाइम खेलना चाहिए था इनका. Is trading and get the opening kill. Liquid so quick to rectify, and that one. भाई ये लेफ्ट आई पीक में क्राउच करके क्यों पीक ले रहा है कि बहुत सारे के उसको जिगल करने देता उसके बंदे को, फिर क्लोज जाके वाइट स्विंग करता ओसी को. क्या बे. It's a round where you have primarily pistols, and you want to use the light investment of VACEIT, which is now down, but he went first. Seconds on the clock. Bomb top mid. Long pressure. Ali shooting gallery once more. Not gonna be too easy here. Tap, tap, tap away, I reckon. Probably not ready for that. Boosted AK, I tell a lie. More than prepared. मिड राउंड कितना गंदा है इनका. चारों साइड से पकड़ रहे भाई इनको, चारों साइड. Lias needs to push in and die, or save this M4. One of the two. Make the decision quickly, boys. You got 14 seconds left. That's the 10. And does find death. Yeah, Naf eats kids like this for breakfast, unfortunately. He even used to play with कितने हो गए? 9 हो गए, 8 हो गए. the guys on the other side of the server, but I think 9 या 10 हो गए. JKSs of the world here. Yeah, and now they've got, well, हाँ. Nafly essentially walking vending machines for कौन सा anything गेट? they desire for the rest of this half. The North American fans, though, they're going to be loving कहाँ घूमता रहता है. I mean, I think North American fans probably biting through their fingernails after coming after the two best of ones and then watching that Fluxo game. You know, I can understand why doubt was rife. This is the course correction they were hoping for, indeed. Probably one of the few full gun rounds we'll see for Greyhound in the remainder of this second half here. Hello, Kinder. You're really taking the mickey now. He was going for the Aggie push with a white screen. Sika will put him in his place. Okay, a number advantage. Said that one before. Liquid's getting excited about this one, aren't they? They know exactly how this one's going to be fumbled. As the push comes through, here he comes, Naf with the AWP Overwatch, and, well, simple. No trade possible, as OC will be the one to double up off the back of it and looking for more. FACEIT, next victim. Good util. Too many bodies on this site. Never a favorable exchange for the Greyhound boys, looking for 4. Into the site now. FACEIT looking to make space, dancing around the pillar as a double spray with backs turned. It all falls into place for Liquid as a wry smile. भाई तो बहुत ही बार बजा रहे हैं. Almost feel it. That legend stage could be locked in at the end of Inferno. Increasingly likely as Greyhound's T side looks to fall flat. And we do have 15 of our 16 legends क्या दिक्कत है YouTube को? raring and ready to go. The teams that qualified from their respective RMRs into that initial top 8 was Na'Vi, Fnatic into the breach. Bad News Eagles, Heroic, 9, Vitality, and Furia. And now they're getting met by like G2, ENCE, FaZe, Apex, NIP, Popcorn के Monty, and 5 continue in this direction. 12 फ्लेवर आते हैं.
Let's go. 2 more rounds on 12 the play. side, and yeah, not ये कौन से क्लासिक सॉल्टेड मैजिक बटर investment opportunities. गोल्डन सीजल, ये वाला बहुत गंदा बताते हैं, गोल्डन सीजल वाला। हाँ ये निक्को बता रहा था मैं। 12 फ्लेवर थे आते, इसमें 4 ही हैं। किसके पास? कौन सी वाली? कहाँ पे? कुमानपुर में। अच्छा Legion versus Fours was actually 2 close maps, 16-12, 16-13, and this here might be the biggest blowout series of the day. But I think on paper it was also the biggest disparity between the top and the bottom. तुम दिखा है पूरे 12? Nice nade, FACEIT cops a lick of damage there. So many bodies here, 4 again in the right place. 35 रुपए का एक आता है साला, इससे थोड़ा सा बड़ा था, देखा? कोई फायदा नहीं साले को लेने। उससे पूछा कि इसके छोटे भी आते कि उनके से बड़े ही आते। अगर छोटे आते होंगे तो ऑनलाइन मंगा लो ना। और क्या, जियो मार्ट भी आ गया ना अपने यहाँ पे, जियो मार्ट में देखते हैं। अरे अरे Maybe it's late. It is. 𝘎𝑘िंडर tries to hold them at bay, but the bullets do the talking. Nav, 𝘎𝑘िंडर बहुत बुरा मार कर खत्म हो जाएगा भाई। 16-6, 16-5। Everyone contributes. It will be 𝘎𝑘िंडर to find the final frag for 11. And in terms of team contributions, it's everyone pulling their weight. 14 for Nav for the Liege, 13 for 𝘎𝑘िंडर. खत्म हो जाएगा भाई, जल्दी खत्म हो जाएगा। Everyone's there, and don't forget, Nitro got all of his frags in 2 rounds. फैन किसने लगाई थी? तूफान ने लगाई थी? किसने लगाई थी? Every time you tune into those comms, you can just kind of hear the yeah, and understandably so. You know, you can dismiss Anubis. It was a close one with some really तूफान ने लगाई थी पेन। थर्ड भाई तूफान ने पेन क्यों लगाई अब? Hasn't felt close at all. No, and I don't think they've earned themselves anywhere near a big enough buffer. 11-4, all that's available. Consolation going into that halftime break. You've noticed as well, like Nitro's been doing a lot of util early in the apartments. We first saw that nade incendiary combo bedroom. Now he gets that deep smoke. But look at that! Look at Banana. There's full info on Banana, right? 𝘎𝑘inder, thank you very much, Chef. You're doing a fantastic job. As always, there's absolutely no reason not to be blocking A, because it physically can't be beat. So you would use everything you have to block them at A for as long as you can. And then you've got someone like Inns who's probably tasked with taking a little bit of a containment towards that banana push. But the info's there. They've been read like a book this entire half. You can just see the rotations on point here. Liquid have no issues. I'm sure they'll have no issues. सारे के सारे यहीं पे देख, 4 जने। ये देख फ्लैश से पहले कूद गया। क्या स्प्रे करता है यार एलिश, इंसेन ही हो गया। Sad. 12 is plenty, and they'll be finishing it off in the next half of play. I think GG's है, GG's से याद है। So I have 5 rounds, and if I nail someone in the first shot, I'm gonna walk out today. Flush is the first guy I'm gonna get. No, it was not flushing. Let's start with simple. That's the first guess. Let's try. Okay, let's start Monacy, okay? Let's start with him. I heard he's a really good player. Okay. So he's from Europe. And he's young, it seems like. Let's try. I'm gonna go further down south. I'm going to say Kenny S, because I'm gonna try and see if I can hit an Alba. I guess I can go for Saibu, since that fits. So he's from G2 and it's an Alba, so I'm kind of close. ये देख। G2 and it's an Alba. He played less. टोपरी को देख। Monacy, alright? I just have to go for Manesi here, I think. But Manesi is Russian. Wait, what? Well done. What? Is Russia part of Europe? Wow, I'm actually insane. I told you before that I'm a really good player. वो पूछते हैं रशिया पार्ट ऑफ यूरोप। क्वेश्चन सही नहीं है भाई। प्लेस ऑर्डर, ओटीपी आएगा, सीवीवी नहीं आएगा, ठीक है।
Come on, bro. CVV, OTP, 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 OPT, OPT है. क्या OPT? हो गया और अफगान चिकन. Thank you. More info नहीं चाहिए. More info. मोस्टली के YouTube खोल दे फोन. अब चाहिए. स्टार्ट करो यार. सेकेंड हाफ क्या है इनका. सीजगो एम्पायर पर ये 6th और 11th प्लेस बची है. ग्रेहाउंड ने वैसे कमबैक किया था 3-12 से उनके खिलाफ, फोर्जा के खिलाफ. आई थिंक फर्स्ट मैप में अगर उससे कमबैक कर लिया ग्रेहाउंड ने, मतलब ये वाला 16-14 जीती थी, 12-3 से जीत रही थी फोर्जे, फिर 2 राउंड जीतने दिए और जीत गई 16-14. अगर ऐसे अगर जीत गई तो फिर कुछ नेक्स्ट लेवल ही हो जाएगा. खैर फोर्जे जैसी टीम नहीं है लिक्विड. Table of the Legends stage. This is Counter-Strike Global Offensive's final major. CS2 waiting in the wings, the only major of this year. And Liquid were right up for debate. They were brought down 0-2. They were in a corner and have fought their way to this position. On the other side of things, Australia's hopes and dreams, it's Greyhound, and have not been able to keep up with the individuals of Liquid. This is their map pick. I'm just going to go out. They're so noisy. Look at the odds. Peace or 1.0 के. A headshot from Liaz would be nice, but look at the movement. Great shot. Does combine with VACEIT as he taps another head. It's 2 dead. Nitro back and fighting as they Nice around there. 16-14 incoming, guys. A double from Liaz, a double from VACEIT. And they just need to do that for the rest of this half. All right, well, haven't completely given up hope just yet, have they? It was a little bit messy on the way out. Good movement there from OC on the entry. Liaz course corrects VACEIT as well. A couple of pot shots at opponents not. 16-14 आ रहा है. So they do take care of business. And at least keeping the spirits high here. You gotta. Yeah, I think being in a situation like this, it's never fun. Never fun at all. But at least, and I don't want to speak too soon, they should get this conversion. There was no plant, which means Liquid aren't going to buy in. The box, they're pesky, and a triple nade from 𝘎𝑃𝑔. Okay, that's not too bad, is it? I don't know how many of those we've seen. That's the first for me. Triple nade. 𝘎𝑃𝑔. 16-14 हो जाए भाई, मजा आ जाएगा. Duking right there, giving him a अब नहीं चाहिए मेरे को. क्या नाम से लिक्विड. लिक्विड हार भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा. और ग्रेहाउंड बढ़िया रहेगी 0-3 के लिए वहाँ पे. Get off of that story right now. Let's just watch it. Let's just simply observe. It's Liquid's first gun round. Hello now. I'm not sure. He's just a little horn dog. We're happy to give away some gifts here, is he? I'm sure. हेलो भाई मोसी भाई, क्या हाल है? भाई बॉम्ब तो छोड़ गए. यहाँ कौन बॉम्ब छोड़ते साला? यहाँ छोड़ो एटलीस्ट. Make sure with that second wave, Ins can contain some banana control. I guess they're happy to let Ins just jump for info and he'll summon. It's still early, right? So कैसे भाई बस बढ़िया भाई, मेजर मैच देख रहे हैं. They can keep forward towards A. So this is where we go through the standard flow of a map like Inferno. Teams battling for key pieces of map control. So Liquid will now take the top mid, but think about how easy Liquid red Greyhound. Let's see if the same situation manifests here. Nope. That's brutal. Oh, good damage. Maybe a liege. Flash.
FACEIT jumps straight past him. He doesn't know Nitro's on the other side of the smoke, and now with his back turned, he's eliminated. Advantage for Liquid. अबे स्मोक के उससे नहीं इंडिविजुअली भयंकर है इनके. You know how bad that is for Alistar? So in that situation, you get the 𝙎𝙃 from Pit, I believe it was, from Liquid, and then Alistar was picking off the back of that, but picked while the black smoke was still up, so when he went behind it, he didn't even see the player. That is tough. बिल्कुल exactly वही कह रहा था मैं. 4 players on A. They did. They were having. I mean, the first death, that's 𝙎𝙃𝘼𝙈, I believe, tucked in on that corner. You can see that that's all part of the strategy. They want him to be hearing that flashbang, turning into that corner as Yakinda's rounding ante. It's, yeah, it was exactly what they wanted. So that's it, right? They parred 2 players perfectly through the smoke on that understanding. And sure, there's a chance they might get doubled up or it might work against them here, but it was an idea that panned out. So OC and Yakinda, even though they were the walking wounded. और प्लस अगर बैकसाइड नहीं मरता ना और वो उसको स्मोक वाले को मार देता या स्मोक में कोई बंदा नहीं होता मोटो वाले, तो ये लोग खड़े रहते वहाँ पे साइड पे और वो शॉट पुश नहीं करता और मरता नहीं एलिस्टर. ये वाला बंदा नहीं मरता तो. मोटो जीत गई, लिक्विड भी जीत ही जाएगी. जीत गया मैं पिकअप से. अभी तो पहला है भाई, अभी तो चैलेंजर स्टेज है. लिक्विड हार जाए तो 16-13 16-14 ओवर टाइम में. लग तो नहीं रहा वैसे. 20 के odds है भाई, 20 के. Extinguished to his advantage and will connect onto Yakinda for the follow-up. So at least something there for Alistar to work with. Yeah, I can understand his stubbornness, you know, considering how. जैसे तुरंत ये लोग लेते हैं जगह, वहाँ जैसे बंदा मारा, उनने स्पॉट करा ऊपर, यहाँ पे इन्हें ले ली जगह ये वाली. करूँगा लेजेंड्स में पिक हिम. पिंप ने तो चुदवा दिया. लाल कुछ नहीं भाई, कोई का भी किसी के भी कभी भी रॉन्ग हो सकता है. मेरा तो 7 out of 9 होना चाहिए था सही, लेकिन 4J ने गलत हारी आज. माउस का तो खैर डिजर्विंग था और ग्रे हाउंड पता नहीं क्यों तुम ज्यादातर लोगों ने फ्लक्सो डाली थी ग्रे हाउंड की जगह. पिंप ने भी ग्रे हाउंड डाली थी, आई थिंक मैंने भी ग्रे हाउंड डाली थी. ग्रे हाउंड ज्यादा अच्छा खेल गई. As I said, it's not going to bait anything. The bomb's being picked up and they will head back towards A. And Naf has been, in this position the entire time as FACEIT walks in for info. Now the double nail. Thank you very much. Liaz chunked on down. Pretty good idea he's here. Oh, they know where ends it too. Locked and loaded. Liquid running towards 14. 4J में एक्सपेक्ट कर पक्का. लास्ट में जो थ्रो हुआ वो जीता, वो 13-14 वाला. The 1v3 लिया Isaac ने. Conversation we had on Anubis with similar scenarios when they had these rounds where it should have been shoe-ins or they should have at least been in favorable positions to try and convert. This was the stubbornness of Alistar. Great to manufacture that, but with the time, FACEIT wanting some info. I'm pretty sure Naf had already heard Liaz jumping around on the bike in the pit at some point in that round as well. So they had a very good idea that the A was going to be there and the frustrations just continued to mount here. As any belief or any hope that was left, I think it's just a thin veil to the reality that is a Liquid 2-0. ज़्यादा पैसे थोड़ी मिलते हैं इनफैक्ट मैच फिक्सिंग पे. Has been a hard-fought battle. I don't think anybody's going to be too impressed. 2-3 मिलियन मिल रहे होते तो उनको समझ में भी आते, लेकिन 2-3 मिलियन कोई देगा नहीं. And Nitro did say it wasn't going to be a slow start for them here. I'm sure they can forget about the challenger stage and set their sights on the next round of play. We will have one day off tomorrow between stages. I've seen some of the legend teams starting to appear in the hotel. I think I saw some of the Into the Breach boys there today. Cypher was playing a little bit of table soccer. Yes, table soccer or foosball, as we affectionately know it. So we're getting everybody. Well, I saw Harry and Dinko playing table tennis. Whiff-waff. Whiff-waff are the official name. फटाफट मारो यार, खत्म करो. An hour and a half straight last night. It took the Ents boys to come along and kick them off the table before they would. Yeah, I'm not surprised. Nertz and Madden coming for a little go around.
Yeah, and those guys are gamers at the ping pongs. But yeah, if on the day off you're looking for some stuff to do, you can over to blast.tv, check out the Launders show. You know, you've also got some other goodies over there. Exclusively Counter Strickle is on there. They've got all the articles and stuff if people are looking to keep up with all the news around the Blast TV Paris Major. And here we go, one of the last ditch attempts. Just 2 more rounds for Liquid now. Not a whole lot of hype on this one, not a whole lot of sauce on the hot dog, but North American fans can be sighing a sigh of relief right now as 𝙎𝙃𝘆 will get a double in banana, sure, but what does that really mean? Well, Chad, after everything you've been saying, let's see how they can make this uncomfortable for themselves. A 2-man advantage. Win probability through the roof as that spam does actually tickle the toes of 𝙎𝙆 up on Robs. Great angle, great setup. Gap long side, of course, held now as 𝙎𝙃𝘆 extends his 3rd frag. And we push through banana to confirm bomb stairs. Now, that's a dead AWP. It's a nasty one to concede, but an immediate trade. So 𝙎𝙆 with a full 60 seconds and 4 opponents. 𝙎𝙆, ऑप उठा बाहर फेंक दे। मैं करता तो ऑप उठाता उसकी और बाहर जाके फेंक देता सेकंड मिड में। Just got to that. It was hard to find tucked in on Bracket's position, but as you mentioned, it has been scooped up. It's enough money for Liquid to get out another purchase here. Nitro into a Mac 10. The rest are going to have. तो यही करता है लीश की जगह, वो ऑप उठाता बाहर जाके फेंक देता सड़क के। A decent spawn, definitely not one of the better spawns. It's a leash towards the front of the pack here, but this was great from 𝙎𝙃𝘆. Good little double up. या ज़्यादा दूर नहीं जा सकता था तो उसके ऊपर ही फेंक देता हट के ऊपर। ये देखिए आप ढूंढ। Where's Wally with the AWP? Finds it in the final throws of that. Needed it. Let's see what he can do with it. 3 coming fast. या तो 3 बंदे मारे गए या 3 बंदे मर जाएंगे। मतलब या तो हाँ मतलब सेम ओ भाई हाफ HP हो गए। 3 बंदे मर जाएंगे। बैक साइड भाई गॉड। खत्म खत्म टाटा बाय बाय हो गया भाई। HG flash round over 15 secured and a 2v3 a retake. Dude, look at 𝙎𝙃𝘆. Watch this. He hits that, you reckon? Oh, he's the one tap special. Oh, okay, long range spam. Quite the opposite of a one tap. Equally as beautiful to watch. And 𝙎𝙃𝘆. Do whatever you want. Yeah, you should save, but do whatever you want. It doesn't really matter. ये चीज हो गया क्या ये तो? Kender's already trying to find him on that B site. Oh, Naf. I think he caught a whiff of him. Yeah, he did. He spotted him. He's a coming. Just looking to take everything away from Greyhound here. Naf will find him at least, but मैंने बोला 16-6 ही बोला था मैं एग्जैक्ट स्कोर लाइन 16-6 ही हुआ भाई। मतलब 16-6 होने वाला है। Like in their mind, you know, it's a very strong setup, and it is without your opponents knowing it's there. They just get the perfect counter. What do they say? Information is power. Yes, it is. I don't think the news gets down under, so Greyhound powerless here. On the warpath, looking to close. Will round 22 be the last Greyhound play here in Paris? Long way from home, but Liquid looking to send them back. Only 2 players on A here. Yeah, Naf looking to strike in unison with Nitro and 𝙆𝙆 from his long side. All that space in the world, hiding in the smoke is Alistair and Insta to support, but here they go. Distraction. Slinks through, uses the opportunity to get into the side, but now in the sights of now. साइड वाला मर गया जो मोटो था। Yes, good one on the dig. FACEIT stubborn with the M4 good trades. They get into the side with the advantage, and 𝙬𝙆 and 𝘎𝙃𝑆 still looking up for trouble. Look at Barrage. 𝙎𝙆 hits it. Thought 𝙬𝙆 had him. So did I. So the bomb.
Yakinda's fingertips now, and with 30 seconds left, it's like ये के अंदर निकाल दे 16-6 बोला था मैंने मैच अभी बोलेगा reporting that he is pegging it, charging straight to wall. Does that misinformation flow? It's good response. Yakinda, he gave it a good go, trying to exploit. But that's the 7th. बस खड़ा रहता साला ये के अंदर. They've humbled Liquid enough right here. I think with the 1900 lost into the next, they should probably opt for a force buy right now. It would also be a good time just to take a timeout, just to have the conversation about what you have and the best way to use it. You get out 2 AKs, 1 for Yakinda and Elijah, and they've just been purchased up here. The rest can get out Tech 9s, Mac 10s, something in between. Plenty of util as well. OC eventually buys into a P250 with some Kevlars. It's still a very dangerous round for Greyhound as they nice work on whatever they can here. A deep 𝙎𝙃𝘼 will soften up Yakinda. हमेशा एक अंदर खड़ा होकर यूटिल खाता रहता है. And with that smoke and flash combination, you'd think Banana's theirs, chipped away, finally put away. 𝘎𝑃𝑔 takes out Yakinda. More pressure mounting. Doesn't have to stay committed to this, but 𝘎𝑃𝑔 wants another fight. The flash too good. He's going to get run on down. Elijah doesn't choose to round the corner. देख ये लोग भी कोई स्मोक नहीं करते ज़्यादातर. Forces out a smoke, so in some sense, Liquid will be happy with that, but still. वेट करते पहले उनके जैसे फुल एग्जीक्यूट होता है ना पहले उनके स्मोक आएगा फिर स्मोक करेंगे. यहाँ पे गोल्ड नवाज क्या करते हैं शुरू में स्मोक फेंक देते हैं. साउंड से नहीं बनाना पे साउंड से नहीं येलो स्मोक टॉप में डीए टॉप बनाना. I think in his timer he thinks that they would have signaled that they're here, and they have with you two. 𝘎𝑃𝑔 steps out with an MP9, confirms information. Good flash as well, just to ensure gets that information safely. फ्लैश लेके उनको चेक करने चाहिए था टॉप बनाना ग्राउंड वालों को. Yeah, confirmation of presence long. Abs everywhere. Like a rash, Liquid start to enclose upon their prey. And off the flashes, FACEIT goes aggressive and does deliver, but still immediately no response. Nitro will round for the trade. Good from 𝘎𝑎z. And limited resources for the rest of them. What's Naf to do with this, the Mac 10? So Greyhound keeping 4 alive as well. अरे ग्राउंड हारे ने. 3 AK-47s. टाइम वेस्ट कर रहे थे. Alright, well they've achieved the goal of it not being a blowout, right? अबे ये क्या पहन रखा है एलिज में जर्सी के ऊपर. But this is all about it being too little too late. Yeah, I mean when 15 is just found so early into the half, you can't help but feel it's going to start feeling like a cosmetic comeback. I think it's all about which adage prevails. Better late than never, or the other one that I forgot. Better late than never. एक फ्लैश रखा है. मिड शक्ल दिखा के सारे बनाने जाएंगे आई थिंक एक साथ. Willfully hoping that. सारे बनाने जाएंगे एक साथ. I mean I do have a romantic bone in my body, but everyone loves the underdog story as well. हाँ भैया देखा. Suppose that could be Liquid in the next stage of play. As they go ये फॉलन देने के लिए खड़ा हुआ है ना एंटी फॉलन देने के लिए. Maybe they won't be the favorites in every single matchup they've played like it has been throughout this challenger stage. Yeah, that's true too. You look at their run, right? Yeah, can you reiterate? It was Fluxo, Cole. That's the best of threes. But they lost to Apex and they lost to Fours, and then oh, here we go. Will Liquid close this out? Have your say. Blast.tv. Thank you. Yeah, important. Let us know what you're thinking at home. बनाना पे स्मोक खत्म नहीं हो रही थी तो मिड चले गए. Okay, FACEIT. One, and it's a spray into the second as well. He did damage, and it should just set up 𝘎𝑎z for the silver platter finish. 1-2, and not quite number 3. 16 HP though, Alistair. He's got information that he hasn't advanced into the A site. 𝘎𝑃𝑔's got his back bracket, so the only blind spot is to whether or not he's slinked towards the B site through that arch. Hoping they give him a fight. Alistair on the jiggle. Next one should be successful, and there you have it. A 9th accrued. Alright, gets his hands मार ले भाई मार ले शाबाश. Lobbing one over there and pulling out his AWP weapon of choice here for the primary AWPer of Greyhound Gaming, Alistair. But on the other side, that same conversation not to be had for OC. It's going to be 5 AKs for Team Liquid as they get back into the buys and still trying to keep his voices, Alistair. Or trying to lose it. Well, into this buy round,
Do Liquid have any particular scenario of how they want to close, or they just want to default? 15-15 हो गया ना तो भाई तो ग्रे हाउंड ही जिता दो भाई फिर। Early lean B from the CT. Oh, Elijah had a gap he could have worked on. FACEIT throws out a nade and does chunk away at Nav. He's going to get a rude shock on this A side here. Look at this pathing. And just upon the fade as well, he's just left it. Now they'll smoke it. Are they going for a... Yeah, FACEIT's got to be careful around that smoke. He could have mollied Arch, he chose not to. He's hearing a lot of bodies here. The whole Liquid squad is here. On the other side of that smoke, a second layer of it upon the fade. FACEIT's going to be sitting duck. Seen this one before. We have. Oh, perfect. Elijah can't believe his luck. Right on the money with his crosshair placement. Yeah, the rest are rotating in. Can he have his moment in the sun, in the pit position? He's going to get run at. Now fly down, chasing him from every elevation, every angle. 𝙎𝙆 just needs one more. Nitro does not allow it. And now Greyhound. Surely this is where it all ends. Inns doesn't seem to think so. That bomb is going down. The presence from Alistair in that pit position gives a little hope. A little inkling of something. Smoke on Inns could perhaps draw attention. Alistair doesn't want to be the first one to make the move. That's the attraction towards Longside. And the flashes make it clear. That's the push. They need one now. 𝙬𝙀 does deny, and it's running out of time. Running out of everything. Greyhound eliminated. And Liquid, they do survive back to keep their head above water. They will advance to the legend stage. रो रो के मैंने भी यही बोला था 3-4 दिन में, रो रो के जीत जाएगी लिक्विड, लेकिन जीत जाएगी। वही जीती रो रो के। कौन बैट कर रेला। चलो भाई एक नंबर हो गया। अब कब तक है? 2 days में पहला मैच किसका है? ओके आगे क्या? नावी वर्सेस गेमर लीजेंड, ठीक है। 9 वर्सेस 7th स्टेज। चैलेंजर 7th प्लेस, चैलेंजर 7th प्लेस कौन है मैच की आंख? चैलेंजर 7th प्लेस इज और नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 7 मॉन्टी और गेमर लीजेंड। मॉन्टी 7th प्लेस पे, लिक्विड 6th प्लेस पे। मॉन्टी के साथ होगा 9 का। ये वाला मैच अच्छा होगा काफी। मेरे को लिंक शेयर करिए इसका। किसका किसका लिंक शेयर करें? फ्यूरिया वर्सेस 6th फैनेटिक NIP। अच्छा मैच होगा। हीरोइक फेज। अरे 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 सैटरडे को G2 वाइटैलिटी। अरे 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 G2 वाइटैलिटी भाई। वाइटैलिटी के लिए ऑड ज्यादा है। वाइटैलिटी पे लगाने का नोट है। बोलो बोलो बोलो। बैड म्यूजिकल एंड्स, ये ठीक मैचअप है। इसमें भी बहुत अवार्ड्स होंगे भाई। बैड म्यूजिकल के 2.5 के ऊपर के अवार्ड्स है। HLTV किस चीज के? HLTV पे जाना, HLTV.org। मेरी HLTV.org। सीधा जाओ HLTV.org पे। ये सारे यहाँ मैचअप्स आते रहते हैं। लेफ्ट में सारे इवेंट्स है। ये रहा मेजर जो होने वाला है। नावी के साथ किसका था? इंटी दो ब्रिज का किसके साथ मैचेस हैं? एपेक्स। अरे जो इनको फिर चांस मिल गई लौड़ों को। सुबह डालता हूँ मैं अपने लेजेंड्स वाले पिकम, लेजेंड स्टेज पिकम। अभी मैं करता हूँ स्ट्रीम बंद। कल आते हैं अपन, कल गेम खेलेंगे। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट। कल मिलते हैं। शब्बा खैर। शब्बा खैर। वाह द फक। अच्छा 2-2 जगह भी ला सकता हूँ माइक। वाह यार, ऐसे तो मैं 10-10 माइक ले आऊँ नीचे भी। सही है। बाय बाय बाय, गुड नाइट।